think the This presenter will meeting also is being present you recorded. the situation when non-linear conditions are generated and how to analyze them. देखिए, when we are talk about the dam safety, the safety comes in two parts. First is the structural safety, which we call fragility. Second, something goes wrong, then what is the safety for the downstream population, property, flora, fauna. So these two components consist safety. So right now in today's session, we will be learning about the fragility aspects of concrete dam, how safe they are. So FEM is I won't say it's a latest technique. Now it is in work for I think for last several decades. But in water sector, since the major issue is that at graduation level, we are not taught this FEM analysis. So usually it becomes part of our post-graduation analysis, especially in civil engineering domain. So I understand आज जो लोग participate कर रहे हैं, they all are participating out of their own motivation because it's a new skill set which we are learning, and any skill set which has not been taught at our alma mater, learning that during our professional career is always a tough task. So I congratulate to all of you, whosoever is participating in today's workshop. It is going to help you in long way in your own professional career. And I think even if you don't work in dam safety in future, even then this is going to help you in taking decisions how professionals work, because most of the times we are offletting these such studies to consultant. We totally depend on what consultant is doing, unaware about what is the system going behind that entire analysis. So this exposure will help you in learning those nuances. So I request all of you to kindly do it sincerely. Uh, Use your laptop and uploading this software, and use this time after 5 also uh, in learning what you have learned new, because it's a new skill set, and skill set will remain in your mind only uh, if you work on it continuously. If you work only for 2 days and then you don't take up this again, then it will not remain with you. Because whatever we learned during our early ages, like swimming, cycling, that remains with us forever. Since it is we are learning this new skill set at a very later age, so it requires more efforts, and you will learn it, you will enjoy it. So thank you very much. Thank you, sir, for your guiding words. Shall we have, sir, a round of introduction for all from all of you? So, starting from me, I am Mohammad Ishan, Deputy Director from NDSC. Good morning, everyone. I am Sajal Mittal, Deputy Director, currently in SCD and WS PwC. A very good morning to everyone. Myself, Vinod Kumar, Assistant Director from BCD NNW Directorate, CWC. Technical Wing NDSA. Thank you. Good morning, everyone. I am Sunny Yadav, Deputy Director, Technical NDSA. We met, I think. Huh? Please learn it wholeheartedly. It will be very useful for you. Huh? CMDD okay.
morning everyone. Myself Mohit Kumar Muna, Deputy Director, India. Good morning, everyone. Myself Kapil Kumar, Assistant Director from Madhya Pradesh WRD. Good morning, sir. I'm J.D. Pandey, Deputy Director from NWD. Good morning. I'm Samir Kumar Shukla, Member Technical in DSA. Good morning, everyone. I am Saurabh Agarwal, Member Administration and Finance, NDSA. Myself, Anil Jain, Chairman NDSA. Regulus. Good morning, everyone. My name is Ankit, and I am working as a young professional in NDSA. Good morning, everyone. Myself, Uma Shankar Vidyarthi, working as consultant technical in NDSA. Good morning, everyone. Myself Abhishek Chawla, young professional in NDSA. Good morning, all. Myself Bhuvan Pandey, Assistant Engineer from Uttarakhand Agriculture. Okay. Uttarakhand. Thank you so much, everyone. Now we can proceed with the agenda, and I request Vadan Sharma from MIDAS to take up the presentation. Hello. 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 Good morning, everyone. This is the two-day workshop, which is on static as well as dynamic analysis of concrete dam. And we will also try to incorporate, as Sir said, that the non-linearity part of the concrete dam also. In terms of the non-linearity in terms, like in both terms, one is the material non-linearity and the second is the geometric non-linearity. Okay, so in the first day, we will do the static part, in which we will do two kind of analysis. One is simple linear static analysis, and the second is the construction stage analysis, in which we apply the in situ conditions. Then we apply the then we will create the dam in the software. Then we will apply the different. Then we will apply the loading and boundary, different loadings and boundary conditions. And before that, we will also learn some basics of FEM and basic of this FENX software. I know this is a new software for you. Okay, so we'll start with the very basic. I will tell you what the software capabilities, what are the software capabilities, and what are the functions we have. Okay, and how you can use this function for your further, like, and for this workshop, as well as if you want to do your project in that software, how you can do that. I will try to tell you all these functions which is available in the software. So, like, just brief about MIDAS. MIDAS is a civil engineering software-based solution company. So we have 120 distributions over 120 countries. We have 15,000 number of clients, and we sold approx 150 lakh plus licenses worldwide. So these are our offices. Like, headquarter is in Korea, and we have 4 offices in India as well. So we are present locally for the support also. We are not just selling the software; we are also providing continuous support to our users. Okay, so we have 4 offices. One is in Gurgaon, the one is in Mumbai, one is in Chennai, and one is in Kolkata. So we have 4 offices. This is the product line. We have 4 segments, 4 verticals.
One is building engineering as well as the structure engineering, in which we have MIDAS Gen software, in which you can analyze buildings as well as the general structure. Then in the second vertical, we have bridge and civil engineering. For this, we have two products, MIDAS Civil and MIDAS FENX. Then the third vertical is geotechnical and hydropower tunnel engineering. So in this, our product is MIDAS FENX, which we are using for this 2-day workshop also. Okay. And then the fourth vertical is regarding the mechanical engineering, in which we have two software, MIDAS NFX as well as MIDAS FX Plus. So this is the client user list. So one of the prime user of this software is CWC. CWC is using this software for dam analysis for last, I think, 3-4 years. Okay, and and CWC is mostly using this software for dams, tunnels also, dams, tunnels, earthen dams, these kind of structures. And GSI, the Geological Survey of India, Kolkata, is using our software for especially for slope stabilities only. Then NIRAM, BARC, they are using for underground structures. Then some hydro PSUs are also there. THDC, SJVNL, UJVNL, they are using our software. Now comes to the private consultant, Tractable, SMEC, like AFRI, Rambol. So they are also using our software for different sectors. Okay. And we also onboarded most of the education institute like CSIR, CRRI, CSIR, CBRI, IIT Roorkee, IIT Delhi. So they are also using our software to publish their research papers. Now, MIDAS FENX. What is MIDAS FENX? So MIDAS FENX is a finite element platform in which you can solve all type of geotechnical as well as the structural applications. And you can also do in all three ways. Either you are doing axisymmetric analysis, or you are doing 2D modeling, or you are doing 3D modeling. So where the axisymmetric analysis works, let's say where you have a circular symmetry about one particular axis. Let's say if you are excavating some shaft. Okay, so shaft is a 3D problem, but you can model it as a axisymmetric problem in 2D because it has a circular symmetry about the vertical axis. So I am talking about the circular shaft only. If the shaft shape is elliptical and rectangular rectangular we don't make. If it is elliptical, then it is difficult to analyze in axisymmetric analysis, or you have to go for a over conservative, in which you have to take the bigger length of the elliptical circle as a complete circle. Okay. Then the second problem is 2D modeling. So in civil engineering, the famous 2D element is plane strain. In mechanical engineering, they generally use plane stress. Because why we are using plane strain? Because our most of the structure, either I am talking about dams, tunnels, the deformation, the strains in the third directions are negligible as compared to the in plane strain. Okay, and the direction, the length of the structure, the length of the structure is so high compared to the width and the height of the structure. So the plane strain for the first assumption is that assumption that your third dimension should be very much larger than the two other dimensions. Or in general way, we call it as third dimension should be infinite. There is nothing thing called infinite. The infinite meaning is this dimension is very much larger than compared to the height as well as the width of the structure. So you can model it as a plane strain element. There is different assumptions are also like we have to take for a plane strain, that your section is also not changing for the length. Your section is constant along the depth, along the or outside the plane. Okay. So these are 3-4 assumptions which we have to take when we are analyzing any dam or any tunnel in the 2D plane strain. Now comes to the 3D modeling. 3D modeling is a complete modeling. Either you, like if I talk about dam, okay, for example. So and I'm talking about the concrete dam only. So in the concrete dam, either you can model it as a one block, or you can model the complete dam also in the software. If you are modeling complete dam, then automatically, because you are modeling like 300-400 meter dam, so there is a chance that there is a high chance that the number of elements are more, and it will take more time to analyze, and it will require more computation time as well as the resources. Okay. So generally in India, they model 1 block, 2 block, 3 blocks.
If it is an arch dam, they model the complete dam because the force transfer mechanism of arch dam is different as compared to the concrete gravity dam. Concrete gravity dam applies like gravity dam mechanism is only on the self weight, while the arch dam is transferring this force on the abutment side. Okay, so the mechanism is different. If the arch dam is there, then you have to model it complete. You cannot take it as a single block or single layer. Okay. Then comes to the highlights of the software, the geometric highlights. So in this software, so many CAD options are already available in the software. Okay, you can use those CAD options to create a model within a software itself. Or importing options are also there. Either you can import in the form of DXF, DWG, and different solid file formats are also there. Let's say if you in your organization you have Revit or any other different CAD software. So in that case, you can model it in that CAD software, the entire solid geometry. I'm talking about the entire 3D geometry. Then import that 3D geometry into the software, then mesh it, then analyze. Okay. Now comes to the terrain. So there are some geometric highlights regarding the terrain also. So this session is mostly about the dams only. But let's say if you are analyzing a slope stability of a particular, let's say 800 by 800 by area, 800 meter by 800 meter, and there is a contour. You have the contour in the form of DXF. So in that case, what you can do, you can import these contours in the software, and you can create these type of models very easily within a 5-10 minutes. You can generate these type of model if you have both the data. If you have a contour data and if you have this stratigraphy data also, the borehole data, then both the things you can enter in the software, and both the layers, the stratigraphy layers as well as the terrain layer, will generate by the software itself, and you can use it to create a 3D model. Meshing capabilities. In this software, you have both kind of meshing, like two types of meshing in 3D, which is one is the tetrahedral meshing. You know what is the tetrahedral element? 3 noded at the bottom and 1 noded at the top. And if you create a line between these all the nodes, then that is a tetrahedral element. The another type of meshing in the software is the hybrid meshing, which combine hexahedral, tetrahedral, pyramidal, all kind of elements are there. Now comes to the very important slide of the software. What are the capabilities of this software? So user can perform user can perform static analysis in both the ways. One is linear static as well as the non-linear static. What is the difference? The difference is same, that non-linearity is of two types. One is the geometric non-linearity and the other is the material non-linearity. If both the non-linearity is not there and you are going with this non-linear analysis, then your linear analysis results and non-linear analysis result will be same. Okay. Then the slope stability analysis. Slope stability analysis you can do in 3 ways. One is LEM, which is limit equilibrium method, which is based on the force equivalency, moment equivalency, or vertical force, horizontal force. So different methods are there to in the LEM. One is Bishop method. In Bishop, you equate the vertical forces. In the Janbu, you equate the horizontal forces. So that is also very important. If you, let's say if you are working on some slope stability and you are using LEM method. So in case of earthquake, when you are applying this horizontal force, you must have to go with the Janbu method or Morgenstern-Price method, because you are considering, if you are considering Bishop method and you are considering horizontal force of the earthquake, software is not considering that. Software will not consider that horizontal force in the factor of safety calculation, and you will get more factor of safety as compared to the Janbu or the Morgenstern-Price method. So that is also important. You have to check the background also, what formula is using by Bishop, what formula is using by Janbu. So you have to check that. Then you have to choose the appropriate method according to the forces you have. So this is about the LEM. Then the second is the SRM, which is strength reduction method. What is strength reduction method? So that is the C5 reduction method. I'll tell one example based on my weight, let's say. So my weight is, for example, it's 100 kg. My weight is 100 kg and I got some disease and my weight is reducing. My weight is reducing from 100 to 90, 90 to 80, and at 50 I collapse. Okay, I'm not able to stand. So what is my factor of safety with the current weight? My factor of safety with the current weight is
100 divided by 50. So that is 2 factor of safety. Same with the slope also. You are using Moore Coulomb material model, and Moore Coulomb material model has two strength parameters. One is C and one is phi. One is cohesion and one is the friction angle. Okay, so the shear strength is C plus sigma 10 phi. And what software start doing? Software start reducing C and phi. Software start reducing C and phi, and software try to find the failure situation. At which point the software is getting the failure. Then what software will do? Software divide the initial parameter to the final parameter, which is the failure parameter, and software will generate a factor of safety based on that. It is similar. Then the third type is SAM method. It is a combination of two methods. You generally don't find these kind of method in different software. So it is based on LEM plus FEM. The stress is calculated based on the finite element formulation, while the failure plane is developed according to the LEM formulation. Okay, so that is regarding the slope stability. Now comes to the dynamic analysis. In dynamic analysis, software can perform eigenvalue analysis, which is the modal analysis, response spectrum analysis, linear time history, non-linear time history, linear time history of both the types, linear time history modal, linear time history direct. Okay, so what is eigenvalue? Let's say if you are working on some turbine foundation model, okay, and you have applied some load there, or let's say you have not applied any load. So there is a turbine foundation. You have modeled the barrel portion, distribution portion. You have modeled the entire concrete portion. Now you want to check off the time period or the frequency of that structure. So what you have to do? You have to do this eigenvalue analysis. You will find out the natural frequency. Okay, the other frequencies are automatically greater than the natural frequency because first mode is the natural frequency, and the other mode, which is the second mode, third mode, and let's say you have taken 10 mode. So 10 mode, the other mode frequency is automatically greater than the first mode frequency. So whenever you are designing the turbine foundation, so what you have to do for the free vibration motion? So free vibration, what you have to do? You have to check your natural frequency should be 20% more than the machine frequency. Because if the first mode frequency is more than the machine frequency, then in case of free motion, there is no chance of resonance. Because if my machine frequency is less and my first mode is there, automatically second mode frequency is greater than the first mode. So there is never be a chance for a resonance in case of the free vibration motion. Then you also have force vibration and different. So for the force vibration, you have to apply the loading. Okay, what the machine loading, like what sinusoidal loading on the different where the loading is acting on the by the machine. So you have to use that. You have to find out the displacement, strains, and all these things, and you have to design for the force mode. So that is eigenvalue. Then the second is response spectrum. So there are three ways our IS code suggests, or any code suggests, three ways to do the dynamic analysis, or you can say the earthquake analysis. One is the pseudostatic way, which is a simple way in which you apply one additional force or one additional acceleration, which is Z by 2, I by R, SA by G. Z is the zonal factor, I is the importance factor, reduction factor, and SA by G is the spectral acceleration. So based on that, you have to calculate the AH, and AV is 2 by 3 of AH, and you have to apply it in the system. Okay, so that is the one way. The second way, you can find it either in USAC manual or in our manual, in our code, which is response spectrum. What is response spectrum? Software will calculate the modal shape. So what is modal shape? Let's say this is a 3-floor building. So in first mode, my mode shape is like that. In second mode, my mode shape is like that. So according to the frequency, the movement in the system or movement in the building is different. So I am taking a building example. Same with the dam also. So according to the frequency, there is a different mode shape. So based on that, software first calculate the eigenvalue. Based on that frequency, software multiply the software. You have to define a response spectrum there according to IS 1890-2016. Okay, so based on that, SA by G, software multiplied with the spectral acceleration, and software will calculate the forces as well as displacement. But it is in one mode. So then in response spectrum, what you have to do? You have to choose a different method, which is CQC method, SRSS method, square root method, absolute method.
So what software will do? Software will add all these methods, okay, and give you the combination result. Okay, give you the combination result. So based on that, you are getting a forces as well as stresses and the deformation based on the response spectrum analysis. Then response spectrum does not have any sign. So you cannot directly say that this part is tension or this part is compression. Okay. So in general, what we have to do in case of designing, so we have to one time we have to add that in the static analysis, and one time we have to subtract it in the static analysis to design. Okay. So what we are assuming on a conservative side, we are assuming the one complete all the values are in tension one time, and all the second is all the values are in the compression. Then we have to design based on for the response spectrum analysis. The third is the time history analysis. Time history, you have two types. One is linear time history, direct linear time history model. So in the direct integration, generally people do the direct integration, but it will take time as compared to this model analysis. This linear time history model. So in direct integration, you apply the earthquake load from the bottom that will propagate to the base of the structure. Then it will propagate in the structure, and because of that propagation of the waves, you will find out the stresses, deformation, what are the stress at each step. So let's say it's the 20-second earthquake, and you are applying it at a time step of 0.01. So it is 2000 steps you have to analyze in the software. You will get the result for 2000 steps. Okay, so you have to consider those 2000 steps in the design. Okay, so this is about the time history analysis. Now seepage generally like, because you all are from dam sectors. Okay, so seepage is important in the earthen dam. Okay, so you in seepage there are two kind of seepage. One is the steady seepage, in which head is constant. There is a constant head. There is a constant head the upstream, and there is a downstream head, and the seepage is going on. So because of the seepage, there is a change in pore water pressure. Either you can check that pore water pressure effect on the stresses, and in seepage also there are different results like hydraulic gradient. So what is the exit gradient you can calculate? Okay, so based on that, what is the factor of safety at the downstream end? How much water is stored in the dam? How much is the seepage? How much is the inflow? How much is the outflow you are getting from the earthen dam? So these kind of thing you need to report in the you have to report in the design report. Then based on that, you have to design this earthen dam. The second is the transient seepage analysis. So let's say in earthen dam, the head is varying. So head is varying. So let's say if you are the head is varying from certain height to a certain height. Okay, certain smaller height in a very quick frame. Okay, so whenever this drawdown is very quick, so because the center portion of the earthen dam is a clay portion, so there the pore pressure will not change. So you will get the phreatic line initially is like that, but as you draw down the water in the upstream side, your phreatic line should be like that. So it is not dropping in the clay portion because clay has a very low permeability, while in the remaining portion it is dropping. So you will find out the phreatic line like that. So based on that, you need to calculate a different factor of safety. In case of seepage, steady seepage, my critical factor of safety is on the downstream side. In the static case, not static, there is a dry condition, then you have to check the factor of safety on both the sides. In transient seepage, you have or in the transient condition, you have to check the factor of safety on the upstream side. So based on that, you have different numbers of factor of safety according to the IS code. In some case, it should be 1.2. In some case, it should be 1.5. So you have to check and you have to design that earthen dam based on that. So it is about the seepage. Then consolidation, it's the embankment problem. Let's say if you are creating any embankment, and that embankment, let's say you have a clay in the ground, and you want to create some structure over there. So before that, and there is a water table also. So there are if there is a water table and the clay is there, if you applied certain loading, what water will do? Initially, water will take all the loading which is coming from most of the loading which is coming from the structure or the temporary structure which you have created for the soil improvement. Then there is a pore pressure buildup which we call the excess pore water pressure. So excess pore water pressure will build in the bottom the ground layer which have a clay. Okay,
then this excess pore pressure start dissipate slowly, and you will get a more settlement after that. So there are two types of settlement you need to check if the clay is there, which is one is the immediate settlement, the second is the long term settlement. Okay, so both the settlements are equally important. This initial settlement, which is we call the immediate settlement, and the second is the long term settlement. Then there is the other stage, which is the other type of analysis, which is the construction stage analysis. Construction stage analysis is nothing. It is the analysis in which we are doing all the things in phases, in which we are doing all the things in phases. Okay, so one is the in situ condition, then we are applying the dam, then we are applying the different loads. So and if you are let's say if you are working on some excavation project, so in excavation project, let's say deep excavation or any kind of excavation is there. So you are excavating it, because of the excavating there is a change in the stress condition of the ground. So you are excavating in the different steps. If you excavate 10 meter or 15 meter in one go, then there is a chance that you will find collapse in the model, and there is a divergence issues you will face in the model. Okay. So seismic assessment, I already told you that you can do all the things regarding the seismic analysis in this software. So one is the pseudostatic analysis, eigenvalue analysis. I already told you about that. What is pseudostatic? What is eigenvalue? What is response spectrum? I already told you. 1D ground response analysis. What is 1D ground response analysis? What is deconvolution? Okay. So like if whenever the dam like we are about to create, or when we are planning for some dam construction in any area, so because dam is a very critical structure, we have to do some site specific study before the construction, so which includes the dynamic site specific study also. So in the dynamic site specific study, either it is done by IIT Roorkee or any other dynamic agency, okay, they give you the dynamic report, they give you the time history report. Okay, so what is this ground acceleration at the surface acceleration? So they generally give you the surface acceleration. What is the meaning of this deconvolution? So you are getting surface acceleration, and you are creating one dam, and you are creating the ground also. In any software present in the market, all the ground acceleration will apply at the bottom of the model. So you are getting a ground acceleration at the top, like you are getting surface acceleration, and you are providing it or you are applying it at the bottom. So there is a chance that there is an amplification in the acceleration when it is reached to the top. So now it's incorrect, because you are getting this time history, the surface time history, and you are applying it at the bottom. Okay, now the result or the amplitude you are like, अगर मैं उसको और अच्छे से बताऊं, so आपको सरफेस टाइम हिस्ट्री मिला था एट द टॉप, ओके, डायनेमिक एजेंसी आईआईटी रुड़की ने दिया था, यू अप्लाइड दैट सरफेस टाइम हिस्ट्री एट द बॉटम. अब जब आप उसको मॉडल में रन करेंगे, यू विल गेट द एम्प्लीफिकेशन इन द मॉडल, और जब वो टॉप पर पहुंचेगा वो टाइम हिस्ट्री, यू विल फाइंड द एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट which you have get from the IIT Roorkee or any other dynamic. So which means आपका जो response है, that is completely different. आपने जो response अभी get the response you are getting from the software is not appropriate, because आपका time history गलत है, क्योंकि आपने जो time history लगाया वो bottom पे लगाया, जबकि वो surface time history. So to either in that case, what you have to do, the deconvolution thing. Generally, the deconvolution then is done by the seismologist, but you can also do in this software. Okay, so you have to deconvolute your waves, and आपको deconvolution उसको करके उसको bottom पे लेके आना पड़ेगा, और उस वाले time history को लगाना पड़ेगा, जिससे कि you will get the proper response in the structure. So that is the process of deconvolution. Then time history analysis and crack analysis, like डैम्स में क्रैक्स देखने हैं, लाइक प्लास्टिसिटी में जा रहा है डैम नॉन इन कंडीशंस में जा रहा है, तो व्हाट इज द लाइक कितना पार्ट डैमेज हो रहा है डैम का. तो फॉर द whenever you are accessing the damage, there are two important things. One is the inelastic duration,
and the second is the ratio, the design capacity ratio. So the one term is design capacity ratio. The second is, whenever you are doing the dynamic analysis, two things are important in case of concrete dam. One is design capacity ratio. The second is inelastic duration. So what is design capacity ratio? So let's say you are calculating the tensile capacity of the rock based on the Raphael formula 0.326 FCK power 3 by 4 or 2 by 3, something like that. So you have calculated the tensile strength of the concrete. Now, if you are providing the earthquake, if you are doing the earthquake analysis or dynamic analysis, you will get the result at each instance. So you will get maximum tensile stress what you are getting in at each step in the dam. Okay. So what is design capacity ratio? So that is the what the value you are getting, or let's say on the top in the numerator, it is that capacity. Okay. Design. Yes. That is so sorry. This is the tensile stress, and at the bottom, this is the capacity. So, yes, yes. This is yes. Capacity. Yes. Design capacity. So on the numerator, what the stress you are getting, and the denominator, what the capacity you have, the tensile capacity. So it is the design capacity ratio. So in we are like factor of safety. We cannot say factor of safety. It's the तो टेंसाइल लेट्स से जो सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जनरली जो हमारे लिमिट इक्विलिब्रियम वाली चीजें हैं जिसमें आप स्लाइडिंग वहां पर उस टर्म को यूज करते हैं, है तो ये एक तरीके का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, बट इसको जो कोड में टर्म दिया है वो दैट इज डिजाइन कैपेसिटी रेशियो, डीसीआर. आप ये समझिए कि सिस्टम में टेंसाइल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में आपको कितना मार्जिन है आपको, दैट इज ओनली डीसीआर. हाँ, so it is a different where you assess how much you are getting and what is your capacity. So this term is coined like this only. So, but if you want to see it through prism of factor of safety, then you have to change a little bit your thinking process. Okay. Then the second term is manual also suggests USAC that DCR is not only like DCR should be less than 1 in case of design basis earthquake, and it should be less than 2 in case of maximum credible earthquake. Okay, and there is also one term. So the USAC manual suggests that DCR is not only the enough criteria to judge either dam is failing or dam is going into the plastic region or not. There is also one term called cumulative inelastic duration. अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं तो कितनी देर तक आपका डैम इनलास्टिक जोन में रहा है. ओके, कितने टाइम तक जो आपका डैम है वो इनलास्टिक जोन में रहा है. अगर मेरा हार्ड ड्राइव होता तो मैं आपको ग्राफ अभी दिखाता हूँ, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में वो ग्राफ भी दिखाता हूँ. तो व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स से मेरा डैम जो है वो DCR रीच करता है 1.5 एटलीस्ट 10 टाइम्स. तो मेरा टाइम स्टेप है 0.01. तो विच मीन्स DCR 1.5 इज रीचिंग 10 into 0.1. So it is reaching 0.1 second 1.5 से DC. तो कितनी देर तक, मतलब जो मैनुअल है वो सजेस्ट करती है कि DCR तो ठीक है, बट यू ऑल्सो हैव टू चेक कि कितने टाइम तक ये DCR किसी एक वैल्यू से ज्यादा रहे. तो एक ग्राफ होता है लाइक देयर इज अ DCR 1 वैल्यू हियर, here it is DCR 1 and here it is DCR 2, and here on the left on the y axis it is cumulative inelastic duration. So for earthen dam it should be less than I think 0.3 or 0.2. Like in a system where you said, suppose you have 2000 steps. Yes. So you are analyzing for it 2000 steps. Now you see for how many steps it has exceed the your threshold limit. Your strength, जो कैपेसिटी है सिस्टम की, टेंसाइल स्ट्रेंथ की, उसके ऊपर कितनी स्टेप में ऊपर गया, और हर स्टेप का टाइम ड्यूरेशन आपको मालूम है, तो आप स्टेप्स को काउंट कर लो और उसको टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन आ गया. सो दैट क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन इसकी एक लिमिट प्रेस्क्राइब करी हुई है, जो ये बता रहे हैं वो ग्राफ में लिखा हुआ है 0.3 सेकंड है. और तो अगर वो उससे होता है तो आप ये समझिए कि सिस्टम की कैपेसिटी नहीं है उसको हैंडल करने की. Now this is about the software. So I have not given, मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड्स नहीं रखे सॉफ्टवेयर के बारे में.
moreover one geometry slide, analysis slide. Then I have choose this what dynamic slide because it is mostly about the dam. So the next thing is static. अब क्या क्या करेंगे हम? First is the static analysis of the dam. So in the static analysis, like the first is the concrete gravity dam. तो like concrete और masonry type के structure हैं. तो the different types of जो dam की बात करते हैं. So there are the design of these dams are very simple. और जो इसका जो important criteria है कि जो forces हैं, जो सारे forces हैं, वो weight oppose करता है. Okay, because अगर आप dam block को देखेंगे तो जो भी forces आ रहे हैं वो dam के weight की वजह से oppose हो रहे हैं. तो ये इसका है. One of example is Bhakra dam. तो इसमें अगर टाइप की लोड टाइप की बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड विच विल एक्ट ऑन द डैम. वन इज डेड लोड, रिजर्वायर लोड, uplift pressure, earthquake forces, earth and the silt pressure. If there is any ice condition, then what is the ice pressure? Wind pressure, if you want to consider it, wind pressure, wave pressure, and the thermal load. So these are the different kinds of load which will apply on the one dam block. Now the first is dead load. So it is very simple. IS 6512-1984 guideline. Dead load is unit weight multiplied by the volume of the concrete. So P equals to gamma W into H. So this is the dead load of the structure. The second is the reservoir load. So you will see the reservoir load is P into gamma W into H. तो जितना हाइट ऑफ द वाटर है उसको गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट इज अ वेरिएबल लोड. ऑन द टॉप इट इज 0 एंड एट द बॉटम ऑफ द डैम इट इज मैक्सिमम. तो द समेशन ऑफ दिस, अगर मैं इसका एरिया निकाल के कैलकुलेट करता हूँ तो इट इज वेरी सिंपल. ट्राइंगल एरिया मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द. ओके. The second is the uplift load. Uplift load on the dam is if the galleries are there. So there are, if the two heads are there, this is H and this is H dash. So or at the, so it is applied from the bottom. Okay, जो gallery जो आपका uplift load है, so it is gamma W into H. It is gamma W into H on this side, and this is gamma W into H dash on this side, on the downstream side. And because of the galleries, there is a reduction in the pressure. So it is gamma W into H dash plus 1 by 3 of gamma H minus gamma H dash. Okay. Then the earthquake forces. I already told you about the earthquake forces. So there are three kind of acceleration three kind of analysis you can do, either pseudostatic, response spectrum, or the time stream. Then earth and silt pressure. So if the silt is accumulating at the base of the dam, then what is the silt pressure? So it is 1 by 2 into Ka gamma Hs square. So it is applied in the horizontal direction. Then hydrodynamic forces. So hydrodynamic forces is horizontal force is W into alpha H. So the pressure intensity is Cy alpha H WH. So Cy formula is Cm by 2 Y by H. This is the complete formula for the hydrodynamic calculation. If there is any ice pressure, then you can apply the ice pressure also. Wave pressure, thermal load. Whenever you are designing this concrete gravity dam, then one type of analysis or you need to do is the thermal analysis to calculate the lift height of the dam. कितना एक बार में आप लिफ्ट लेंगे, बिकॉज जब आप लिफ्ट लेंगे बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट रिलीजेज होंगे तो बिकॉज ऑफ द हीट फ्लो देयर इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, देयर इज अ चांस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द कंक्रीट. तो कितना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो बिकॉज ऑफ द थर्मल कंडीशन वो भी आपको चेक करना है. वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट से ज़्यादा. ठीक है, तो आपको थर्मल एनालिसिस भी करना चाहिए. जनरली लोगों के पास एक्सेल्स होते हैं टू कैलकुलेट दिस, तो वो डायरेक्टली एक्सेल के थ्रू कर लेते हैं अगर वो थर्मल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं. Yes. Now different combinations are there according to the IS code A B C D. यहाँ पे D तक लिखे हुए हैं, and then E F G H. So this is not G G, this is H. So 8 combinations are there. The one combination is the dry condition, when the construction condition we call.
dam completed, but there is no reservoir or no tailwater. So this is the load combination A. So based on that load combination A में क्या क्या load आएंगे? Dead weight आएगा, mostly dead weight आएगा और कोई दूसरा load नहीं आएगा. और second is load combination B, which is the normal operating condition, जहाँ पर reservoir full reservoir के साथ है और एक normal dry weather tailwater है और वहाँ पर normal uplift है. और अगर आइस है और सिल्ट है तो वो प्रेशर भी आपको ऐड करने पड़ेंगे. The third is the load combination C, which is the flood discharge condition. Now जो reservoir है वो maximum pool elevation पे है, maximum elevation पे है. D is the A with earthquake. A के साथ earthquake को और लगा दीजिए. Then E is B with earthquake. B के साथ earthquake लगा दीजिए. F is E with earthquake and G is E, the combination of E with the extreme earthquake. Okay, and then load combination as is combination B with the earthquake. So these are the different MCE condition. So these are the different load combination load मैंने जो आपको बताया. इसको अगर हम अभी आगे लेके जाते हैं, दिस इज लोड कॉम्बिनेशन ए, दिस इज बी. बी में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? ए में तो खाली डेड वेट लगेगा आपका. बी में क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? फुल रिजर्वायर लगेगा, सिल्ट प्रेशर लोड लगेगा, यहाँ पर अपलिफ्ट लगेगा और नॉर्मल टेल वाटर लगेगा. तो ये आपके लोड होंगे. लोड कॉम्बिनेशन सी में आपका होगा मैक्सिमम वाटर लगेगा, सिल्ट प्रेशर लगेगा, फ्लड वाटर लगेगा और आपका नॉर्मल अपलिफ्ट लगेगा. इसके बाद डी, ए के साथ अर्थक्वेक ऐड कर दीजिए बस. देन ई में आप कॉम्बिनेशन ऑफ बी विद अर्थक्वेक बट नो आई. ओके, सी. तो ये सारे लोड कॉम्बिनेशन हैं जिसको आप एनालाइज करें. सिस्मिक के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी बता दिया है, बट और थोड़ा सा बता देता हूँ. यूडोस्टैटिक एलिवेशन इज वेरी सिंपल. आप एक अर्थक्वेक फोर्सेस लगाते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन. मोस्ट यूजफुल है प्रिलिमिनरी असेसमेंट के लिए. लिमिटेशन है कि एक्सीलरेशन टाइम स्पीड नहीं लगा पाते हैं, डैम्पिंग इग्नोर करते हैं हम. अब एक डायरेक्टली एक फोर्स लगा रहे हैं, देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड वाइब्रेशन, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, तो डैम्पिंग का इफेक्ट नहीं है, वेव प्रोपगेशन नहीं है. ओके, तो ये सारे लिमिटेशन हैं. देन कम्स टू द रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम represents the maximum response of the system for a range of natural frequencies given a specific ground motion input. तो इसका जो लिमिटेशन, मतलब जो ऑलरेडी मैंने बताया कि एक मॉडल एनालिसिस करता है, मॉडल एनालिसिस के बाद ऐड कर देता है. जो इसका लिमिटेशन है लीनियर इन नेचर. ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर नहीं है. नॉन लीनियर बिहेवियर सच एज यील्डिंग, स्लाइडिंग, क्रैकिंग, ये कैन नॉट बी कंसिडर बिकॉज द लीनियर एनालिसिस लीनियरली ऐड कर. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में काम. ओके, मास पार्टिसिपेशन. अगर मैं रॉक, और एक और लिमिटेशन है, अगर मैं रॉक को कंसीडर करता हूँ तो मास पार्टिसिपेशन बहुत कम होने लगता है बिकॉज रॉक मूव नहीं कर पाता है. ठीक है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ऐसे हो रहा है, बट रॉक का मास अगर मेरे को कंसीडर करना है तो आई विल से डिफिकल्टी. ओके, तो क्या होगा, मॉडल पार्टिसिपेशन कम होने लगता है, मुझे नंबर ऑफ मोड बढ़ाने. सिंपल ये है कि आप रॉक का मास 0 ले सकते हैं, यूनिट वेट 0 लेके आप डायरेक्टली रिस्पॉन्स सिस्टम कर सकते हैं और उसको ऐड कर. Time history is the in which we will apply the entire earthquake. Okay, तो benefit is time dependent motion है. Each step पर, हर एक स्टेप पर मोशन में आपको रिजल्ट मिलते हैं. You can analyze it, you can design it. Okay, नॉन लीनियर बिहेवियर भी आप कंसिडर कर सकते हैं, यील्डिंग, प्लास्टिक क्रैकिंग. और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, लार्ज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उनमें काफ़ी एक्यूरेट हो सकते हैं एज कम्पेयर टू द यूडोस्टैटिक और द नॉर्मल. ओके, ठीक है. ये अभी मैं तो अभी बाकी हम ये जो डायनेमिक एनालिसिस है इसमें करेंगे. सबके में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा एक दिन. अभी नहीं हुआ. 15 मिनट. आपको 15 मिनट को स्टार्ट
आपके पास है जी नहीं एसपीएन से अलग है ये लगा ठीक अच्छा तो आपके पास होगा ना 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ नहीं नहीं फाइल सेम होती है ना सर की ये तो जीटी से लिखता है सर ये लगाइए ये नहीं है ये अलग हाँ वही कर हाँ अच्छा सर हाँ तो ये कॉपी किया आपने अपने से ठीक नेक्स्ट आइस नेक्स्ट इसमें नेम दे दीजिए तो ये हो जाए मेरे को भेजा तुम
accessible pattern. Yes. आपका इंटरनेट चल रहा है हो रहा है तो अपना जीमेल भी कर लो हेलो हाँ ठीक है मैं सर एक बार मैं चेक करता हूँ आप एक बार अपना कंपनी में बताना तो मतलब क्योंकि मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया था जो भी चेक करता हूँ अच्छा अभी आप अंबर मुझसे बात कर रहे हैं मैंने किया था सर मैं बात किया था मैंने एक बार मैं चेक करता हूँ वो फिर रिजल्ट मुझे 2 मिनट दीजिए हेलो हाँ मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ अगर बात कर
वो नहीं वन प्लस होता ना वन प्लस हेलो हाँ कार्तिक गुड मॉर्निंग पहले ना एक बार थोड़ा बात कर ले जो अंदर मुझसे को कॉल आया था अभी तुरंत ज़रा उसके कारण नहीं फोन करता है अच्छा फिर एकदम मजा ही नहीं आता क्या क्या ये डालने पता है ना कहाँ पर है ये? फोन 96273738 यहाँ पर 10 मिनट का मतलब आपको फोटो इंस्टॉल हो जाए
प्राची अंडर कौन सा इस सीट के आसपास कोई कार्टन होगा प्राची तुम्ही एंटर करतो ना तुम्ही एंटर करतो
जो 7 साल की प्रॉब्लम को ना एक है। हाँ हाँ, प्राचीन स्टेटस क्या है सबका पूरा? हाँ हाँ, जल्दी 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 करवा सकते हो। नेट नहीं हो रहा है। तो एक काम करो ना, सॉफ्टवेयर में ट्राई करके देख लो कि वो पीछे बैकएंड हो सकता है, हो गया बन गया, अकाउंट बन गया, उसमें मुश्किल करो तो ट्राई करो। हाँ तो एक काम करो, अकाउंट को जो है ना लॉगिन जो होता है लॉगिन करके देखो, ईमेल और पासवर्ड डालते देखो तो तक हो जाए। हाँ, इसका नोट करिए, AR कैपिटल में आपका अरविंद खंडेल 1 2 करते हैं। नहीं, अरविंद खंडेल 1 2, इसमें AR जो है, AR कैपिटल स्टार्टिंग में चलेगा। यूजर आईडी आप इसमें लॉगिन करिए इस ईमेल पासवर्ड के साथ में, तो आपका अकाउंट खुल जाएगा, वहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन आएगा, यूजर आईडी लिखी रहेगी, उसको कॉपी करना है। वापस नहीं, वापस डालिए, वापस डालिए पूरा। वापस कर रहा हूँ।
Sure. Already, आपका में हो गया होगा। हाँ। वो क्या करता है, वो टाइम टू टाइम वो चेक करता रहता है कि यूजर कनेक्टेड है, जितना जिससे कोई यूज होता है। एनालिसिस सॉल्वर के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं, कनेक्शन चेक करता रहता है। खुलेगा ना, कुछ डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वो
नहीं, सब प्रोफाइल करवाने के लिए
Okay, start cut. So open the software first. Open the software. Okay. Now in most of laptop, I transferred one file, the zip file. Okay. This is the file. Unzip it. So it is on most of the system. I copy paste one file, which is concrete gravity dam 3D modified FEM. Unzip it. Unzip it. Okay, unzip it. Okay. So when you unzip it, you will find these files. Not this. I'm opening it. हाँ जो अभी मैंने सर आपके डेस्कटॉप पर सेव किया. So you will find these. Okay. So when you unzip it, na, you like I put some files there. One is CAD file there. So there is one CAD file. Okay. In CAD file you have two files. One is XT related. Okay. And one is let me open that. Okay. Okay. So in CAD file you have this XT file. Okay. This is parasolid file. So we will use this file to import this directly into the software. Okay. हम इस फाइल को directly import करेंगे because we don't want to waste our time in creating CAD like 2D diagram of this dam. Okay, we will directly import it from the we will directly import it in the form of CAD files. Okay, so this is the CAD file. So let me brief you a software first. Okay, before starting. बस एक बजने वाला है lunch.
Okay. So let me brief you. So in your system, the software is like that. So on the on the top, so when you click on new, software asks you which type of analysis you wants to do. If you wants to do 3D, you will choose 3D. If you wants to go for a 2D, then select 2D. So we are going with 3D. For 3D, the default gravity direction is Z, while for 2D, the default gravity direction is Y. Okay. So I am going with 3D. So on the top, there is a ribbon menu, which is in which seven options are there. The first one is geometry. So I called it as geometry. Okay. So the first one is geometry. The first one is geometry tab. In geometry tab, in the geometry tab, we have different kind of CAD options there: line, polyline, okay, circle, points. Different CAD options are there in the software itself. Then in the mesh tab, we have function related to the meshing part. So in meshing part, we have material, properties, 1D, 2D, 3D automatic mesh, okay, and different options like extruding the mesh, revolving the mesh, copy the mesh. So different option related to the mesh are there in the mesh tab. The third option is static analysis part. In the when you go to the static analysis part, you have some options related to the boundaries. So what are the static boundaries? So if I'm telling you go with this constraint option, so I'm telling you providing the boundaries there in the model. And there is the option of static load. So static load option is there. Then in dynamic analysis, you have some boundaries which are related to the dynamic analysis, and some dynamic loads are there: ground acceleration, response spectrum, dynamic nodal load, dynamic surface load, load to mass. So different dynamic load options are there. Then in the geotechnical analysis, different boundaries are there. Some boundaries are related to the seepage, some boundaries are related to the consolidation, and loads are almost same. Static, because we need to apply the static load only. So loads are almost same to the static analysis. Then after that, there is an in the top there is an option in the tab analysis tab. In the analysis tab, we will create one analysis case. Then we will get the result, and last option is tools. So different settings, okay, related to the ribbon menu, related to the top menu. So settings are there in the tool. On the left, what you are seeing, this part is a works tree. Okay, this part we called as a works tree. So if I go with the menu option, so in the menu we have geometry related options, mesh related options. In the analysis, we have a static load, boundary condition. So why we call it works tree? It's like a content of the book. Okay, it's like a content of the book. Whatever I am modeling in the middle, okay, whatever I am modeling in the window, that will automatically registered on the left side. Okay, somewhere. Okay, mesh related to the model, and loads and boundary condition related to the in the analysis. Okay, so this is about the basic overview of software. So now we are starting the model. Okay, so first you need to import the model file which I have transferred in your system. If you don't have model file, please tell me. I will copy it. My colleague will copy it. Okay, so this is the model file. Okay, this is the this is the CAD file. Okay, so this is the CAD file. So how you can import the CAD file? Go to the top three line button. So there is a three line button. Go to the FE. Go to the option which is below to the FE annex. Three lines are there. Okay. Expand it. Here is the importing option. Click on import. Click on import option. Now you need to import the CAD file because it's in a parasolid format. It is not in a DXF or DWG format. So we'll go with this import CAD file. So we'll go with this import CAD file option. Click on I'm again repeating the step. Click on three arrows, three lines button. Select the import option. Select the import option. Select the import option. Select the import option. Select import CAD file. Select import CAD file. Find the CAD file in your system where it is stored. Okay.
find the CAD file. I have copied it on the desktop. Select it and click OK. So my file is imported. My file is imported in the system. Okay. Okay. So everyone, please import the file in your system. Everyone, please import the file in the system. Okay. It is imported. Now let me tell you some functions. Whenever I tell like I command this like go to the isometric view 1. So here is the isometric view 1. So here is the isometric view 1. Here is the isometric view 2. Whenever I told you go to the isometric view 1, then you need to go for isometric view 1. Here are the different front view, back view options. So this is front view, this is back view, this is top view. Okay. So this is top view, this is side view. Okay. And these are front, and all these views are there. Okay. So let's say I am in a front view. Okay. Done. You know, like all are important, like file is important in your system. Okay. Now we need to create geometry with that. Okay. Now we need to create geometry with that. So this is a bit complex. So I am creating a simpler one for you. Okay. So delete these lines. Don't delete this line. Okay. So delete this line. Okay. Select these lines. Select these lines. Not this one. Select this lines. These lines. Not this one. Okay. Select these lines and delete this. So previously, when this tutorial is made, okay, 8 different materials are there. Okay, 8 different materials are there. 6, 7 different materials are there. So to reduce the complexity, what I will do, I will go with the 2 materials only. 2 materials. Okay, select these files. Select these lines. Select these lines. ये वाली लाइन साइड वाली कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा. Okay, select these lines. Okay, now delete them. Okay, I don't want these lines. Okay, so my model should be like that. If I hide it, okay, it should be like that. It should be like that. Okay, and delete these two also. Delete these two also. I will add only 2 materials. Oh, sorry, delete these all. Delete all these bottom also. Delete this bottom also. Delete this bottom also. Okay, delete this bottom also. Okay, delete these lines also. I am simplifying the geometry right now. Okay, previously 8 materials are 6, 1, 2, 3, 6 materials are defined. Because you are using this software first time, so I'm reducing the complexity. That in the tutorial they have defined 6 materials. Okay,
I'm not defining 6 material. I'm only defining one material for the ground and one material for the concrete. Okay. One material for the concrete. Okay. So I'm deleting it. So my geometry should be like that. Okay. My geometry should be like that. Okay. Okay. We will add two materials for it. One is for the concrete part, one is for the ground part. Okay, we will add two materials. Okay. Previously in the tutorial, if you see the tutorial, either the hard copy or the soft copy, you will see there are 6 or 8 materials are defined. So I am defining only two materials because you are using the software first time. Okay. Okay. So my geometry is ready. Okay. This geometry has to be extended also. Generally, there is a thumb rule. Okay, there is a thumb rule. The side boundaries should be at the distance of 2h of the dam. Okay, if the height of the dam is about 100 meter, then the side boundaries should be at the distance of 200 meter, while the bottom boundaries should be at the distance of 100 meter. So this is a thumb rule. Okay, this is a thumb rule. If the dam height is of 100 meter, then the side boundary should be at the 200 meter east side, and while the bottom boundary is at 100 meter. Okay, from the dam. Okay, this is smaller one because it's for practice, so I'm not changing the sides. Okay, yes, 2h from the endpoint. Okay, if the height of the dam is 100, then 200. Like you can take 180, 190 also. The only thing which you have to remember, like why these thumb rules are there, you have to understand that. So whenever I'm telling you that boundary should be at the 2h distance, or in tunnel, in case of tunnel, the boundary should be at the 3 times or 5 times of tunnel diameter. So these thumb rules are based on only one thing. Your strain should not reach the boundary. Okay, the boundary should be that part that that the strains causing because of the load are not reaching to the boundary. Should not reach to the boundary. If the strains are reaching to the boundaries, what is the meaning of that? That your boundaries are influencing the stress propagation. Okay, your boundaries are influencing the stress propagation. The result you are getting are not fully correct. Okay, so that's why the boundary should be far at the far distance from the model. But there are thumb rules, like based on the experience, engineer define some thumb rules, 2h, h, 3d, 5d. So these are based on the experience. Okay. So this is my model geometry. Okay, this is my model geometry. So let's say now we need to intersect this line first. No need to intersect it. Already intersected. It is already intersected. No need to intersect that. Okay. Now go to the isometric. Sorry, not isometric view. Go to the geometry tab. Go to the geometry tab. In geometry tab, there is a group called surface solid. There is a group surface solid. In the surface solid, there is a third option from the top, on the top, which is make face. Okay. So you need to generate a face with this line. So you need to select like that. Just see on my screen first. Click on make face. Click on make face. Select all the lines. Apply. So one face is generated. Then select the bottom lines. Generate a face for second area. Then third face. Then third area. Don't forget to select the galleries portion. If you forget to select the galleries portion, because you have not selected the closed area. Okay, you need to select the closed area. If you forget to select the galleries, then what happens? See, the gallery portion है, that will not void. Okay, so the software will generate a face on that portion also. So what you need to do? Select this. Select the galleries also. Okay, select the gallery lines also. So software will create a closed area in this area.
Okay, software will generate a closed area in this, then this, then first generate for the dam and the bottom. Okay, go to the make. So generate phase for dam part as well as the ground part also. Yeah, I'm repeating all the steps. Okay, so to create a face, first you need to click on make face option, which is in the surface solid group. In the geometry tab, in the surface solid group, there is a make face option. Select that make face option. Select all the lines, the top lines, including the galleries lines also, like that, and click apply. Okay, so this is my first face. This is my second face. This is my third face. Okay, the third face. Then this part. Then this part. You need to select all the bottom line, all the closed line to generate a face like that. Okay, the page should be like, so you need to create a complete page. Okay? Like if you want simplicity, आप इसको भी चाहें इन वाली लाइंस को भी डिलीट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि वो पेज बनाने में डिफिकल्टी हो रही है तो व्हाट यू कैन डू यू कैन डिलीट दिस लाइन for this area
Okay, done. Okay, now this part is done. Simple. Okay, so for page to create page, go to the make face option. Go to the make face option. Go to the make face option. Select the line. Select the closed area line. Select this gallery also. Then click apply. This is my first. Then select this. This is the second. Then select this area. This is third. Then select this area. Make face. Then select this area. Apply. Make face. Okay. So generate faces like that. One, two, three, four, five. Okay. Done. मैं माउस के कंट्रोल बता देता हूँ. Like if you want to rotate it, you can rotate it with the mouse ball by pressing the mouse ball. Okay. If you want to pan it, okay, you can use control option. You can pan it also. Okay, you can move it. Okay, using pan option. Pan option is also there in the ribbon menu. So this is the pan option. Okay, so this is the pan option and this is the rotating option. Here in the if you want to use ribbon menu options, so there is a pan option there. Okay, so this is pan. So if you can use that, and this is the rotating option. Okay, if you want to use it directly from the mouse, then press the mouse ball, rotate it, and if you want to pan it with the mouse ball, then control mouse, press the mouse ball, and you can pan it. Okay. Now go to the isometric view 1. Now go to the isometric view 1. Go to the isometric view 1. Go to the isometric view 1.
go to the isometric view 1. Okay. Okay. Yeah, isometric view 1. So this is the isometric view 1. Okay. Yes. No, it is perpendicular to each other. Right now, yes, 0 is there. If you see, the coordinate axis is passing from here, so the 0 is here. Okay. If you want to, here it is shown like that. So it is the origin position. It is the origin position. It can be changed. No, the axis will not change. Your model can move. Model can move. Yes, you can move model at in any direction. Okay, because it is the geometry is modeled at the origin position, so that's why it is when it is imported, it comes at the origin position. Okay. It's working. Okay. Now we will extrude this. We will create a 3D model with this. So now we will extrude this. So in the protrude group, in the same geometric, here is a protrude group. In the protrude group, there is a extrude option. In the protrude group, there is a extrude option. In the protrude group, there is a extrude option. In the protrude group, there is a extrude option. Select that extrude option. Select that extrude option. In the protrude group, I am again repeating the step. In the geometry tab, there is a protrude group. There is a protrude group. There is a protrude group. Okay. In protrude group, there is a extrude option. Okay. So extrude option is there. Select the extrude option. Okay. Select the extrude option. Select the extrude option. Okay. Then first we will see on my screen first. Okay. See on the screen first. So for extruding, three things are required. One is the target thing, which on which face, on which line you want to extrude. Okay, you want to extrude which face or which line. So one is the target object. The second thing is required in which direction you want to extrude. So second is the direction. The third is how much is the length. So length is required. Okay. So three things are required. So see, I am selecting this face, this face, this face, and this face as a target object. Except this middle one,
except this middle one, because I need to create a spillway section there. Okay. So except this middle one, what I have done, so I have selected 4 faces. This is the first phase. Please save the model also, because you are right now facing the internet issue. Then there is a high chance that your file will collapse. Okay, if the internet issues are still there. Okay, save as it in one folder. Okay, save as, first save as it. Okay, please save it also. For saving, click on click on again this 3 line button. Click on save as and save as somewhere like in the system. Save, please save as it. Okay, it's done. It's done. Now I am again repeating the step. Now I am again repeating the step. Now I am again repeating the step. Click on extrude. Click on extrude. Select the target object. So accept this middle face. Accept this face. Select all 4 other faces. I am again repeating the step. Select this. Select this bottom one, not the middle one. Then select this and select this. So select this 4 faces. Select this 4 faces except the middle one. Then you need to select the direction. See on my see on the screen first. Then to select the direction, click on select direction. Click on select direction. Select this direction. So these are the coordinate directions: x, y, and z. Okay, x, y, and z. So select this y axis. Select this y axis. Select this y axis and enter the length 16 meter. 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 Then you can preview it also. Okay. If you preview it, okay. So this is the preview. Okay. Now click on OK. So click OK. Click OK. So this geometry will create it. This is the geometry. Okay. This is the 3D geometry for the block. This is for one block. Okay. Any questions on this, on that side? I'm again repeating the step. Click on extrude. Click on extrude. Select these 4 faces. Then click on select direction. Click on select direction. Then you need to select the direction. So select this direction. Select this direction. When you click on here, it is written direction selected. Now enter the length. So the length is 16 meter. So length is 16 meter. It is written in your tutorial also. Okay. If you are following the tutorial, it is also written in the tutorial. Okay. Then click OK. So it is model. Okay. Now we need to create a middle gallery one. Okay. Gallery one. Okay. So the gallery one. Oh, sorry. Again, click on extrude. We click OK na, so it's closed. Okay. Again, click on extrude. Click on extrude. Go to the isometric view one. I am again repeating the step. It's done, sir. Again, go to the extrude option. Go to the extrude option. Select this. Select this face. Select the middle face now. Only one. Again, click on select direction. Select the same direction. Select the same direction. Y direction, which is the Y direction. Now enter the length of 4 meter.
Now enter the length of 4 meter. Enter the length of 4 meter. Then click OK. So it is modeled like that. Okay. So a pillar is there. Okay. A pillar is there. Now, okay. Now you need to copy it at a distance of 12 meter from this side, because you want to create pillar on both the sides. Right now there is only one pillar, okay, on the one side. So you need to copy it. So how you can copy it in MIDAS FENX software? So there is a translate option in the transform group, in the transform group, in the transform group, in the transform group. There is a translate option. There is a translate option. In the transform group, there is a translate option. Select, see on my screen, the process is same. Again, I need three things: target object, direction, as well as I need to copy it. So I will copy it, okay, for a particular distance. See on the screen. So first is target object. So this solid is my target. This solid is my target. Then direction. So this is my direction. This is the direction. I need to copy it. I don't want to move it. If I move it, ना ये यहाँ से move कर जाएगा आगे. So I need to copy it. So I'll go with this copy option. Enter a distance of 12 meter. So it is calculated from the end. Okay. Preview it. It is correctly placed. Okay. So I click OK. Okay. I'm again repeating the step. I'm again repeating the step. In the transform group, in the transform group, in the transform group, click on translate. Select the target object. So this is my target object. This is the direction. So select the direction. So this is the direction. I need to copy it. I need to copy it. I'm again repeating. I'm not moving it. I'm in copy. I need to copy it. So go with the copy option. Go with the copy option. The distance is 4 meter. Oh, the distance is 12 meter. Distance is 12 meter. Distance is 12 meter. And I click. When I click preview, I can see it is correctly placed. So please check preview up. Please check it with the preview option. Where it is preview option here at the bottom is preview option. Okay. When I click OK, it is model. Okay. It is model.
ठीक है, ज्योमेट्री हो गई है, तो विल हैव अ लंच ब्रेक। तब अभी हम क्या किया कि एक 3D ब्लॉक, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट वो उसका जो फॉर्मेट है वो आपको लाना पड़ेगा। ये जो आप या तो पैरासॉलिड लाइए, नहीं तो ACIS करके या IGS करके फॉर्मेट होता है। ACIS करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, कैड है वो ला। ACIS IGS ये वाले फाइल, DWG भी एक्सेप्ट नहीं होता। हाँ, सेव कर लीजिएगा मॉडल को। देखिए सुबह मॉर्निंग में इंस्टॉलेशन के कुछ प्रॉब्लम थे, अब नेट के भी प्रॉब्लम आई थिंक रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से हम सेव, हाँ नेट तक तो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ से कल का हमारे पास पूरा दिन है, आज का भी पूरा हाफ डे है, तो हम जो हमारा टास्क है वो हम डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए मॉडल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर मैं पूरा करता तो टाइम लगता, फिर एक एक पेज बनाना पड़ता, इसलिए मैंने मॉडल को सिंप्लीफाई कर दिया है। माई माई मोटिव इज टू कि आप वो लर्न कर सकें क्या सीख रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं। तो हाँ कर्व है, आपकी ज्योमेट्री मान लीजिए कोई क्लियर जोन जा रहा है, वो सारी चीजें प्रॉब्लम है, वो आप बाद में कभी भी डाल सकते हैं। तो वी हैव अ लंच, you can create it here also, there is an option, no? If you see, it is easier to create also, like same options are here also, but if you want to import it you can import it. आप बताइए। Okay, so the lunch at last, at least sorry, at least you come by 2:20 or something, 2:20, 2:25. Lunch, okay, lunch is here only, lunch is here only. Okay, so we'll start at 2:30 sharp. Okay, we'll start at 2:30 sharp.
whatever.
This meeting is being recorded. बंद भी कर दिया आप चिंता क्यों कर रहे हो?
We are starting now. Third. Okay. So now so this is the geometry, okay? This is the geometry part, okay? Now my geometry is ready. Now I need to mesh it. So before the meshing, I need to first connect these solids, okay? Maybe these some of solids are connected, but मुझे सारे solids को connect करना पड़ेगा. So that whenever I am doing the meshing part, because in the finite element, what is the meaning of finite element? You are dividing the bigger solid or the bigger area or bigger volume into the very small finer elements, okay? And software run differential equations on each node, and you are getting results on the each node of that element, okay? So that is the meaning of that is how finite element works. So जितना fine divide करते हैं, you are getting more closer to the accuracy. But अगर आप ज़्यादा भी fine, so it is a like it's a trade off kind of thing ना, कि ज़्यादा फाइन किया तो एक्यूरेसी की तरफ तो जा रहे हैं, बट कंप्यूटेशन टाइम बढ़ जा रहा है. इफ ज़्यादा कोर्स किया तो कंप्यूटेशन टाइम कम होगा, बट यू आर लाइक एक्यूरेसी से थोड़ा सा इधर आ रहे हैं. तो वेन एवर वी लाइक जब मैं हम अपने मास्टर्स कर रहे थे, तब लाइक वी नीड टू डू दिस मैश रिफाइनमेंट एनालिसिस. इन द मैश रिफाइनमेंट एनालिसिस व्हाट वी नीड टू डू, we need to decrease the mesh size, and okay, we need to decrease the mesh size, and जहाँ पर आपके रिजल्ट्स कॉमन आ रहे हैं, जहाँ पर आपके रिजल्ट डिफर नहीं कर रहे हैं बिटवीन द चेंज लाइक ड्यूरिंग द चेंजिंग ऑफ दैट मैश साइज, दैट इज योर ऑप्टिमम मैश साइज. तो वो उस तरीके से हम मैश रिफाइनमेंट एनालिसिस करते थे ना. अभी क्या करना है? सो फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट दिस मैश, कनेक्ट दिस सॉलिड, ओके? फर्स्ट वी नीड टू कनेक्ट दिस सॉलिड. तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट वी नीड टू हाइड दिस. तो वेयर द ज्योमेट्री इज रजिस्टर्ड, अगर आप ज्योमेट्री कहाँ पर रजिस्टर हुई है, ये अगर आप इसमें देखेंगे वर्क स्ट्रीम में ज्योमेट्री मॉडल ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर ज्योमेट्री ऑप्शंस होंगे. यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री को रजिस्टर्ड हुआ है. जो लाइंस आपने इंपोर्ट करी थी वो ये हैं, जो सरफेस आपने इंपोर्ट क्रिएट किए थे वो यहाँ पर हैं 5 सरफेसेस, एंड जो 6 सॉलिड्स आपने क्रिएट किए थे वो यहाँ पर है, ओके? ज्योमेट्री को एक्सपेंड करेंगे सर, देखिएगा इसमें ज्योमेट्री को एक्सपेंड करेंगे. एक्सपेंड द ज्योमेट्री. अगर आप ज्योमेट्री को एक्सपेंड करेंगे तो आपको दिखेगा. तो हाइड दिस कर्व्स एंड सर्फेसेस. अब मुझे कर्व्स और सर्फेसेस का तो कोई काम है नहीं. whatever the things I am doing that is on solids only. So what I am doing, I am hiding this curves and surfaces. तो मैंने कर्व सर्फेसेस को हाइड कर दिया.
Now my solids are there only. Okay, मैं आपको इन द वर्क मैं आपको बता देता हूँ. मॉडल ज्योमेट्री में मॉडल की ज्योमेट्री रजिस्टर कहाँ पे होती है? वो रजिस्टर यहाँ पर होती है. अगर आप वर्क स्क्रीन में मॉडल में जाएंगे, वो देखिए मॉडल में जाएंगे, ये वर्क ट्री है. जब मैं वर्क ट्री बोलता हूँ तो मैं लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ. यहाँ पर मॉडल है, यहाँ पर मॉडल में आप ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्री करके होगा, यहाँ उसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको कर्व सरफेसेस और सॉलिड दिखेंगे. कर्व सरफेसेस और सॉलिड दिखेंगे अगर आप ज्योमेट्री को एक्सपेंड करेंगे तो. इसमें ज्योमेट्री में एक्सपेंड करेंगे, ज्योमेट्री को एक्सपेंड करेंगे तो कर्व ज्योमेट्री ऑप्शन होगा. प्राचीन where the geometry is registered to. एक्सपेंड करेंगे तो इन दैट जो कर्व्स और सरफेसेस, अब इन कर्व्स और सरफेसेस को हाइड कर दीजिए, कर्व्स और सरफेसेस को हाइड कर दीजिए, तो ज्योमेट्री सॉलिड रहना चाहिए. देखिए अब मेरी स्क्रीन पर देखिए, कैसे पता लगेगा कि कोई सॉलिड्स कनेक्टेड है या नहीं. ओके, हाउ यू कैन चेक दैट? तो इन द ज्योमेट्री टैब देयर इज अ रिमूव मॉडिफाई ग्रुप. आपको देखना, खाली स्क्रीन पर पहले देखिए, बाद में करिएगा. तो जो भी ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया है ना, उसमें सब स्टेप वाइज भी लिखा हुआ है, हर एक स्टेप वाइज लिखा हुआ है. आप वो भी फॉलो करेंगे तो हो जाएगा. ओके, तो इन द रिमूव मॉडिफाई ग्रुप देयर इज अ चेक डुप्लीकेट ऑप्शन. देखिए यहाँ पर आपको शेयर्ड सर्फेसेस दिख रहे होंगे. अगर ये ऑरेंज सर्फेस आपको दिख रहा है, विच मीन्स ये वाला जो सॉलिड है, बॉटम वाला सॉलिड है, जो ये छोटा सॉलिड है, इससे कनेक्टेड है. बट ये पिलर्स कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है. पिलर्स के मतलब पिलर्स को अगर मैं देखता हूँ, ना ऊपर मेरा शेयर्ड सर्फेस है, ना नीचे मेरा कोई शेयर्ड सर्फेस है. तो शेयर्ड सर्फेसेस आर नॉट देयर. तो अगर मैं इसको भी मैश करूंगा, अगर मैं इसको अभी मैश करूंगा तो वो मैश ना कनेक्ट नहीं कर पाएगा. तो अगर वो मैश कनेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज दीज सॉलिड्स आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर. इसके लिए सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऑटोमेटेड मॉडलिंग कमांड है, ऑटो कनेक्ट बोलते हैं हम उसको. तो दिस इज ऑटो कनेक्ट. अभी आपको करना नहीं है, मैं वापस से सारा चीज रिपीट करूंगा. जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, तो हेयर इन द, अब ये लाइट बंद कर देंगे ना, ये सारे लाइट बंद कर दीजिए, स्क्रीन पर फिर दिखाई देगा. ओके, ये जो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर एक ऑटो कनेक्ट ऑप्शन है. तो द ऑटो कनेक्ट ऑप्शन इज देयर. So when I click on this auto connect, when I click on this auto connect, when I select all, जब मैं select all करके अप्लाई करता हूँ तो, और वापस से अगर आप चेक डुप्लीकेट करके कनेक्शन चेक करता हूँ, तो माई शेयर्ड सर्फेस इज देयर. पहले ये आपको ऑरेंज सर्फेस नहीं दिख रहा है पिलर के नीचे, अभी ये ऑरेंज पिलर के नीचे आपको ऑरेंज सर्फेसेस दिखेंगे. ओके, अभी ये जो पिलर के नीचे ऑरेंज सर्फेसेस दिखेंगे. ओके, तो नाउ अभी ये करना कैसे है, इसको करना कैसे है, इसको कर सकते हैं हम. मैं वापस रिपीट करता हूँ स्टेप. तो अभी आपको सॉलिड्स को कनेक्ट करना है. तो सॉलिड्स कैसे कनेक्ट करने हैं? तो इन द सरफेस सॉलिड ग्रुप, इन द सरफेस सॉलिड ग्रुप देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड ऑटो कनेक्ट. यूज दिस ऑटो कनेक्ट ऑप्शन. Click on this auto connect option. I'm again repeating the step. In the surface solid group, you will find one auto connect option. This is the auto connect option near to this bedding plane wizard. Now there is one option called select all. यहाँ पर अगर मुझे मान लीजिए सारे सॉलिड सिलेक्ट करने हैं तो इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं. या तो मैं इंडिविजुअली एक एक सॉलिड को सिलेक्ट करूँ. ओके, नहीं तो मैं क्या करूँ, ड्रैग करके, जैसे ऑटो कैड में करते हैं, मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ तो ड्रैग करके सिलेक्ट हो जाएंगे. नहीं तो अगर मुझे सारे सॉलिड सिलेक्ट करने हैं तो देयर इज वन ऑप्शन कॉल्ड सेलेक्ट ऑल है. यहाँ पे सेलेक्ट ऑल ऑप्शन है, सेलेक्ट ऑल क्लिक कर देता हूँ. सिलेक्ट ऑल, एक अनसेलेक्ट ऑल होगा, एक सिलेक्ट ऑल होगा. तो क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, तो सारे सॉलिड्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाते हैं. ओके, यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिकॉज सॉफ्टवेयर इज वर्किंग विद द सॉलिड. तो सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म द बुलियन ऑपरेशन. व्हेन आई क्लिक ओके, एक
सॉफ्टवेयर एक बुलियन ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको कनेक्ट कर देता है। इस स्टेप को आप रिपीट कर सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेप। Go to in the subset solid group, click on select all, click on auto connect option, then select all solid, then click OK. So software will perform the boolean operation and software will connect the software performs the boolean connection, auto connect option, boolean operation and connect the solid. अगर मैं अभी सॉलिड्स को देखूंगा तो ये सॉलिड्स अब कनेक्टेड है। अगर इन सॉलिड्स को ये कैसे चेक करना है, अगर आपको ये चेक करना है तो इन द रिमूव एंड मॉडिफाई ग्रुप देयर इज एन ऑप्शन चेक डुप्लीकेट। इन द रिमूव एंड मॉडिफाई ग्रुप देयर इज एन ऑप्शन चेक डुप्लीकेट, इफ आई क्लिक अप्लाई, व्हेन आई क्लिक अप्लाई यू विल सी आपको ऐसे शेयर्ड सर्फेसेस दिखाई देंगे। ओके सिलेक्ट ऑल, यहाँ पे सिलेक्ट ये ऑप्शन नहीं, साइड और साइड ऊपर। ओके यहाँ तक हो गया। हो गया सर। माई ज्योमेट्री इज रेडी। अब मेरे को ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब मेरे को ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं करना है, माई ज्योमेट्री इज रेडी। ओके मतलब सर मेरे मतलब हमको अब मेरे कनेक्ट सॉलिड्स भी कनेक्टेड है मेरे को जो, हाँ ये रिमूव एंड मॉडिफाई ग्रुप। तो नाउ वी विल ऐड मटेरियल्स। ओके तो हम दो मटेरियल चूज करते हैं, one is for rock and one is for the concrete part. Okay, one is for rock and one is for the concrete part. Okay, so now my geometry is ready. Now I am shifting to the mesh tab. मैं अगेन दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब मैं mesh tab में शिफ्ट हो रहा हूँ। पहले initially I am in a geometry tab. Now I am shifting to the mesh tab. Okay. Okay. Now I am shifting to the mesh tab. मैं ट्यूटोरियल एक ओपन कर लेता हूँ। एक सारी सारी करा दी। हाँ बस ये, हाँ वही चला दो। ओके ओके तो ये आपका देखिए, अब अगर हम ट्यूटोरियल को देखते हैं जो आपको कुछ को हार्ड कॉपीज भी है, कुछ को सॉफ्ट कॉपीज भी है। तो अगर मैं ट्यूटोरियल को देखता हूँ तो हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया, ज्योमेट्रिक पार्ट कंप्लीट कर लिया, ये ट्रांसलेशन कर लिया और ऑटो कनेक्ट कमांड कर लिया। ओके ये सारे पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ वी नीड टू ऐड मटेरियल। तो मटेरियल के लिए हमको ज्योमेट्री में आएगा, ज्योमेट्री टैब नहीं वो चेक डुप्लीकेट वो क्या है, स्क्रीन साइज छोटा होने की वजह से ना उसमें उसको छोटा कर देगा, बहुत छोटे से में दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, वो स्क्रीन अगर आप बड़ा करेंगे तो हो जाए। ओके तो नाउ लेट्स से ओके अब इसमें मटेरियल्स ऐड करते हैं। ज्योमेट्री रेडी है। ज्योमेट्री में किसी को कोई क्वेश्चन, देखिए अभी हमने बहुत सिंपल ज्योमेट्री लिया। एक प्रोसेस क्या फॉलो किया, व्हाट वी हैव फॉलो। फर्स्ट
हमने डायरेक्टली एक 2D ज्योमेट्री को इंपोर्ट किया। उसके बाद 2D ज्योमेट्री के फेसिस को बनाया, बिकॉज वी नीड टू एक्सट्रूड इट इन द थर्ड डायरेक्शन। मेरे को अगर उसी को मुझे 2D एनालिसिस करना होता है तो आई कैन डायरेक्टली यूज दैट सेक्शन ओनली, मुझे उसको फेस बनाने की जरूरत नहीं था। बट मुझे उससे 3D सेक्शन जनरेट करना था, तो मैंने उसमें फेस बनाया पहले, उसके बाद उसको एक्सट्रूड किया इन द थर्ड डायरेक्शन। बीच में मुझे क्योंकि ये OF सेक्शन था तो मुझे बीच में वॉइड चाहिए थे, तो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक पिलर 4 मीटर का एक्सट्रूड किया, देन आई हैव ट्रांसलेटेड और कॉपी इट फॉर अ 12 मीटर डिस्टेंस। तो मैंने उसको 12 मीटर डिस्टेंस पे कॉपी किया, तो 2 पिलर्स, उसलिए पिलर्स को 2 अलग अलग पिलर्स किए। उसके बाद the solids are not connected to each other, मैंने उसको चेक किया with the check duplicate option which is present in remove and modify group। उसको चेक किया तो I found out that the pillars are not connected to each other, the pillared solids are not connected to the upper solids, मतलब जो ऊपर वाले उसके ऊपर जो neighboring solids जिसको बोलेंगे, the pillared solids are not connected to the neighboring solids। so therefore I use this auto connect option। in the auto connect option is available in the surface solid option। in the surface solid group there is an option called auto connect, हमने auto connect use किया। so auto connect, what auto connects do, auto connect performs the boolean operation and connect the solids with each other। जो भी solids connect नहीं होते हैं उनको solids को connect कर देता है। ओके उसके बाद लाइक नाउ माय ज्योमेट्री इज रेडी, फिर मैंने उसको वापस से चेक किया चेक डुप्लीकेट से। सो इन द रिमूव एंड मॉडिफाई ग्रुप, so I found out that now the solids are connected to each other, all the solids are connected to each other। okay now we need to add materials, so 2 materials are required। so for adding the material we'll go to the mesh tab में जाएंगे। so in the mesh tab we will add material in the mesh tab we will add material, click on material। in the mesh tab the first option is material। in the mesh tab first you need to go to the mesh tab, this mesh tab। whenever I'm जब भी मैं mesh tab option बोलता हूँ तो मैं tabs को बोल रहा हूँ। जब भी मैं वर्क ट्री बोलता हूँ तो मैं लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ। जब मैं ग्रुप्स बोलता हूँ तो मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं इस तरीके के बोलता हूँ कि इन द mesh tab गो टू दी कंट्रोल ग्रुप, तो मैं कंट्रोल ग्रुप mesh tab के अंदर कंट्रोल ग्रुप है उसमें जाने को बोल रहा हूँ। ओके तो इन द गो टू दी mesh tab, इन द mesh tab देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड मटीरियल। तो मटीरियल सेलेक्ट करेंगे तो मटीरियल ऑप्शन इज देयर, तो क्लिक ऑन इट, तो इस तरीके का विंडो ओपन होगा विच इज ऐड मटीरियल, ऐड एंड मॉडिफाई मटीरियल। तो यहाँ पर हम मटीरियल्स ऐड करना होगा। देखिए कोई भी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस के लिए आपको मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी और एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज फाइनाइट एलिमेंट वर्क्स ऑन द एलिमेंट। ओके जो भी इक्वेशंस हैं, मान लीजिए बहुत तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, बीम एलिमेंट है, ट्रस एलिमेंट है, प्लेन स्ट्रेन एलिमेंट है, प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट है, इनकी जो वर्किंग है वो डिफाइंड है। इसलिए लेट्स से मैं अगर बीम की बात करता हूँ तो उसके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम से वहाँ पर आपकी फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म ट्रस एलिमेंट के मुकाबले अलग है। ट्रस एलिमेंट हैज अ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज द एक्सियल डिग्री ऑफ फ्रीडम ओनली। ओके तो यू विल गेट एक्सियल फोर्सेज ओनली इन द ट्रस व्हेनेवर यू आर यूजिंग ट्रस एलिमेंट। अब मैं शेल की बात करता हूँ, शेल इज सिमिलर टू द प्लेट ऑप्शन। तो प्लेट बेंडिंग भी लेगा, शेयर भी लेगा और एक्सियल फोर्सेस भी लेगा। वहीं पर मैं प्लेन स्ट्रेन की बात करता हूँ, सो इन प्लेन स्ट्रेन यू विल गेट द इन प्लेन स्ट्रेन ओनली। स्ट्रेसेस तीनों डायरेक्शन में मिलेंगे पर स्ट्रेन आपको इन प्लेन ही मिलेंगे। प्लेन स्ट्रेस की बात करता हूँ तो इन प्लेन सारे डायरेक्शन में स्ट्रेन्स मिलेंगे बट इन प्लेन स्ट्रेसेस मिलेंगे। तो इसी तरीके से हर एक एलिमेंट डिफाइन है जिस हिसाब से उसकी वर्किंग है। तो फर्स्ट उसके लिए लेकिन मटेरियल आप जो भी आपकी साइड कंडीशंस है, जैसे अब मटेरियल में भी बहुत सारे लाइक अगर मैं क्रिएट ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो मोर देन 30 मटेरियल मॉडल्स आर देयर। अकॉर्डिंग ईच मटेरियल मॉडल हैज अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन। होता क्या है, सबसे पहले काइनेमेटिक एनालिसिस टाइप का अगर मैं एक बेसिक मतलब बहुत जनरल वे में बताऊं तो एक मान लीजिए एक काइनेमेटिक एनालिसिस रन हुआ। काइनेमेटिक एनालिसिस रन होने के बाद डिस्प्लेसमेंट आए, डिस्प्लेसमेंट के बाद स्ट्रेन्स आएंगे, स्ट्रेन्स के बाद आपके कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन फॉलो करके स्ट्रेसेस आएंगे।
तो हर एक मटेरियल मॉडल का अपना कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस है, ठीक है। मोर कूलम का अपना कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन है, जनरलाइज हुक एंड ब्राउन हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग विद दिस इलास्टिक मटेरियल मॉडल फॉर द कॉन्क्रीट। For the concrete part, we will go with this elastic material model. So we are taking the concrete material as a elastic material. कैसे ले सकते हैं? I am again repeating the step. Click on material, click on material, click on create, then click on isotropic. Click on isotropic. Click on isotropic. Okay. यहाँ तक हो गया? Okay. Now देखिए, या तो आप डायरेक्टली कंक्रीट के मटेरियल का इलास्टिक मॉडुलस 5000 रूट एफ के जो भी है वो डाल सकते हैं, पॉइजन रेशियो, यूनिट वेट जो भी है वो डायरेक्टली डाल सकते हैं। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज डेटाबेस डेटा आल्सो, कि अगर मुझे डेटाबेस में से डेटा कॉल करना है तो व्हाट आई कैन डू, हियर एट द बिलो देयर इज एन ऑप्शन डीबी। यहाँ पर एक डीबी करके ऑप्शन है, डीबी करके ऑप्शन है। ये जिनके स्क्रीन रिजोल्यूशन थोड़े कम होंगे, मे बी वो शो नहीं हो रहा होगा, वो नीचे शो हो रहा होगा, ठीक है, वो आएगा नहीं। अभी जिसके मॉनिटर के रिजोल्यूशन थोड़े से वीक हैं तो वो उतना बड़ा आएगा नहीं, तो दे कैन डायरेक्टली एंटर द वैल्यू ऑल्सो। ओके, तो क्लिक ऑन डीबी। जैसे मैं कंक्रीट के साथ जाता हूँ, मुझे कोड चूज करना है, लेट्स से ISRC, तो आई कैन गो विद दिस ISRC कोड। मुझे M20 M15 जो भी चूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं M15 चूज करता हूँ फॉर द मास कंक्रीटिंग। ओके, ओके करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू द M15 जो भी मेरा इलास्टिक मॉडल्स बनता है अकॉर्डिंग टू द IS कोड, दैट इज रजिस्टर्ड, Poisson ratio is registered, as well as the unit weight is registered. Okay, these three things will take by the software automatically. So I am again repeating the step. Go to the material option, click on create, click on isotropic, click on isotropic. If you want to add material directly, you can enter the elastic modulus, unit weight, as well as the Poisson ratio. Otherwise, you can click DB option. DB option, click as ISRC, select the standard as ISRC, select the DB data as M15, select the grade as M15 and click OK. So based on that, elastic modulus, Poisson ratio and unit weight are registered. Any question? You can name it as M15. You can name it as M15. Okay. Name it as M15. You can name it as M15 and click apply. If you, what is the difference between click OK and click apply? ये समझ लीजिए, जब भी आप apply click, मतलब दोनों से मटेरियल ऐड होगा लेफ्ट साइड पर, अगर आप OK मटेरियल OK क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस विंडो को उस टाइम बंद कर देता है। फिर वापस से आपको क्लिक क्रिएट पे जाना पड़ेगा, आइसोट्रॉपिक पे जाना पड़ेगा, वापस मटेरियल क्रिएट, वापस से ये 3 स्टेप्स वापस से करने पड़ेंगे। इफ यू आर क्लिकिंग अप्लाई ऑप्शन, वो विंडो ऐड कर देता है, विंडो वहीं पर ओपन रहता है। तो अगर मुझे दूसरा मटेरियल भी वहीं की वहीं ऐड करना है तो आई कैन डायरेक्टली ऐड इट एंड क्लिक ओके और अप्लाई accordingly. Okay, so right now it is M15. I am clicking apply. So the material is added here on the left side. M15 is added on the left side. DB नहीं आ रहा होगा, एंटर दबा दो, वो रिजोल्यूशन का एंटर दबा दीजिए, बस एंटर दबाने से आ जाएगा। वो रिजोल्यूशन की वजह से हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं वो रिजोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। अगर आप एक बड़े मॉनिटर जिसके रिजोल्यूशन अच्छे हैं उस पर लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा।
Okay, so M15 is added. Now मुझे मान लीजिए सेकंड मटेरियल ऐड करना है, तो सेकंड मटेरियल इज रिलेटेड टू दी मोर कूलम. ओके, तो ये जो मेरा था ये स्ट्रक्चर पार्ट था. ओके, दिस पार्ट इज द स्ट्रक्चर पार्ट. ओके, सो मैं क्या करूंगा, इसको अनचेक कर देता हूँ स्ट्रक्चर पार्ट को. अनचेक द स्ट्रक्चर पार्ट. यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पार्ट है ना, हाँ कोई बात नहीं, बाद में डिलीट कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं. आप बस स्ट्रक्चर पार्ट, स्ट्रक्चर पार्ट नहीं नहीं, पहले select the more column, select the more column. In the model type, 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 select the more column. In the model, so I am modeling rock as a more column material model. आप इलास्टिक के साथ भी जा सकते हैं. आप कई अगर आप कंसल्टेंट देखेंगे तो इलास्टिक के साथ भी जाते हैं. हुक एंड ब्राउन के साथ चाहना चाहे तो हुक एंड ब्राउन के साथ भी जा सकते हैं. Elastic plastic. This is linear elastic, perfectly plastic. It is not a more column is not a non-linear material model. The graph of the material model is like that: elastic, then perfectly plastic. Okay, so the stiffness is not varying according to the stress. Okay, the soil, if I'm compressing the soil, the stiffness is varying according to the stress. Okay, but it is not true in case of more column, generalized hook and bound, Drucker pressure, elastic. In these material models, the elastic modulus is constant. Okay, one elastic modulus this software will take, or because it's not about the software, वो मटेरियल मॉडल ही इसी तरीके से डिफाइन है कि वो एक ही इलास्टिक मॉडल्स लेता है. सॉइल का एक ही इलास्टिक मॉडल्स मांगेगा. अनलोडिंग में जो इलास्टिक मॉडल्स होता है वो जनरली ज़्यादा होता है. अगर मैं अनलोडिंग कर रहा हूँ किसी सॉइल की, तो इलास्टिक मॉडल्स ऑफ द सॉइल इज लार्जर देन द लोडिंग. ओके, ई अनलोडिंग जनरली 2 to 3 टाइम्स होता है. ओके, ई टेंजेंट का ले लीजिए या ई सेकंड का ले लीजिए, ई सेकंड मॉडुलस ले लीजिए या ई टेंजेंट मॉडुलस ले लीजिए. जनरली इट इज ऑफ 2 to 3 टाइम्स. ओके, so now in the more column, uncheck this structure option, uncheck this structure option, uncheck this structure option, uncheck this structure option, uncheck this structure option. Name the material as, let's say मैं rock बोल देता हूँ उसको. Name the material as rock. Name the material as rock. For example, the rock stiffness is around 4,000 MPa. So 4 into 10 to the power 6, which is 4E6. I am naming it as, या either आप 6 बार 0 प्रेस कर सकते हैं, या आपका न्यूटन में ना, तो 4 into e to the power 9 आएगा. ओके, e to the power 9, 4 into e to the power. So it is 4,000 MPa. So it is 4 into e to the power 6, which is 4 into 10 to the power 6. या तो आप ये लिख सकते हैं या आप 6 बार 0 प्रेस कर सकते हैं. So it is 4 into 10 to the power 6. Okay, so I am considering 4,000 MPa is the elastic modulus. Poisson's ratio, let's say 0.25. Poisson's ratio is 0.25. Poisson's ratio is 0.25. Poisson's ratio is 0.25. Unit weight is, let's say, 26. Unit weight is 26. Unit weight is 26. Unit weight is 26. K naught value is 1. So automatically it is calculating from 1 minus sin pi. But if you want to change it, okay, you can change it by using manual option. Remove it and click 1. So the K naught value is 1. Change it to the manual. Enter the K naught value. So I am considering the horizontal stress in the rock is equals to the vertical stresses in the rock. यूनिट क्या है आपका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. कोई नहीं, आप 4 into 10 to power, अच्छा नहीं, यहाँ से चेंज कर, मैं आपको दिखा देता हूँ, पर आपको ये क्लोज करना पड़ेगा. मैं दिखा देता हूँ.
इफ अगर आप कोई हाँ नहीं नहीं कर सकते हैं इन द बॉटम, यहाँ पर आप देखिए आपको क्लोज करना पड़ेगा, अभी विंडो में है। यहाँ पर बॉटम में यूनिट्स आ रहे होंगे, किलोमीटर, मीटर, केल्विन, लाइक जूल, जो भी आपको यूनिट्स रखने हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। वो क्लोज नहीं करेंगे जब तक वो वैसे रहेगा। Okay, so I am going with the isotropic again. So I am again repeating the step, more Coulomb. Rock, I am naming it as rock. Elastic modulus is 4000, so it is 4E6, 4000 MPa. So it is 4 into 10 to the power 6 kPa. Poisson's ratio 0.25. Unit weight is 26. Huh? Kilonewton per meter square. Newton per meter square में 26,000. Okay, the manual, then change the K naught parameter. Change the K naught parameter and enter 1. Change the K naught parameters and enter K naught equals to 1. So these are the elastic properties of the, or these are the properties for the Mohr Coulomb. But there are the nonlinear properties also for the Mohr Coulomb, which is C and phi. So we need to define C and phi also. So we need to define C and phi also. पहले स्ट्रक्चर को एंटर करना पड़ेगा। ओके, हो गया यहाँ तक। Then in the nonlinear parameters, let's say my cohesion is 750 kPa. So cohesion is 750 और 500, आप कुछ भी ले 500 भी ले सकते हैं, मॉडल कन्वर्ज कर जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, in the nonlinear, go to the nonlinear option. Go to the nonlinear option of this. Go to the nonlinear option. The cohesion is 500 और 750 ले लीजिए, 750 and friction angle is, for example मैं 36 ही लेता हूँ, let's say friction angle is 36. हाँ नहीं किलोमीटर पर, नहीं रॉक में नॉन लीनियर और डिफरेंट मोर कुलम है प्राची go to the nonlinear 750 and cohesion is 750 and friction angle is 36. Now you can add this material. Okay, आप ओके कर सकते हैं क्योंकि दो ही मटेरियल रिक्वायर्ड है, वन इज फॉर रॉक एंड वन इज फॉर द कॉन्क्रीट। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, so click OK. So two materials are added. सेलेक्ट करके उसको डिलीट बटन हो जाता है। ठीक है, ओके। तो टू मटेरियल्स आर एडेड। ओके, दो मटेरियल मैंने इसीलिए जो पहले 6-7 मटेरियल थे, अगर आप ट्यूटोरियल को देखेंगे जो आपके पास हार्ड कॉपीज है, वहाँ पे 6 मटेरियल ऐड करने, तो 6 मटेरियल हम डिफाइन करते तो उसमें और ज़्यादा टाइम जाता, तो मैंने उसको टाइम को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया, इसलिए मॉडल को छोटा भी किया। ओके ओके, नाउ मटेरियल इज डन। नाउ द प्रॉपर्टी पार्ट थोड़ा सा अब मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, आप स्क्रीन की तरफ देखिएगा। फर्स्ट देखिए, in the property we have 3 kinds of properties. One is 1D, the second is 2D and third is 3D. In 1D there is one option, truss, embedded truss. Truss and embedded truss are useful जहां पर आपका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म एक्सियली होता है, जैसे रॉक बोल्ट है, एंकर्स है, सॉइल नेल्स है,
जहां पर आपका जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म है ऑन फील्ड ऑल्सो इट इज इन द एक्सियल ओनली. ओके, तो आपके एक्सियल फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं वहां पर. beam is beam element is there, beam and embedded beam element are there. So what is the meaning of that? वो कहाँ पर यूज कर सकते हैं आप? जहां पर बीमिंग एक्शन आएगा, जहां पर बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, शियर फोर्स भी आएगा. अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है? आप 2D मॉडल कर रहे हैं, 2D मॉडल का डी वॉल मॉडल कर रहे हैं, आपने प्लेन सिम एक्सकवेशन मॉडल कर रहे हैं और एक्सकवेशन में आप डी वॉल डालना चाहते हैं तो बीम यूज कर सकते हैं. आप 3D मॉडल जैसे टनल का यूज कर रहे हैं, वहां पर आप आई सेक्शन डालना चाहते हैं, आप रिब डालना चाहते हैं. जब आप रिब डालना चाहेंगे तो रिब आपका बेंडिंग भी लेगा, एक्सियल फोर्स भी लेगा और शियर फोर्स भी लेगा. ठीक है, तो वहां पर आपको बीम, जो आपको रिब मॉडल करना है वो बीम जैसा मॉडल, ट्रस जैसा मॉडल. ट्रस आप वहां पर मॉडल करेंगे जहां पर आपको लोड मैकेनिज्म एक्सियल डायरेक्शन. ठीक है, मैं इसी सॉफ्टवेयर का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर का बोल रहा हूँ. जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे तो ट्रस एक्शन उन्हीं के लेंगे जब आप, जहां पर लोड मैकेनिज्म खाली एक्सियल डायरेक्शन. तो यहाँ पर एम्बेडेड बीम, एम्बेडेड ट्रस ये है. टेंडन करके एक एलिमेंट है. टेंडन लोग कहाँ यूज करते हैं? लाइक ब्रिजेस में यूज होता है, जहाँ पर आप टेंडन देते हैं ओके, प्री स्ट्रेसिंग करने के लिए. तो टेंडन ऑप्शन इज देयर. नाउ द सेकंड इज 2D. इन द 2D डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर. प्लेन स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी बताया मैंने, प्री स्ट्रेन आप ऑलरेडी जानते ही हैं. प्लेन स्ट्रेस के बारे में जानते हैं. द थर्ड इज शेल एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया कि शेल एलिमेंट सिमिलर होता है प्लेट एलिमेंट. अब मान लीजिए मुझे 3D मॉडल बना रहा हूँ या 3D का एक्सकवेशन मॉडल बना रहा हूँ. तो 3D का जब एक्सकवेशन मॉडल बनाऊंगा तो मैं साइड्स पर डी वॉल में क्या लगाऊंगा? अब बीम नहीं लगा सकता, मुझे प्लेट लगाना पड़ेगा. अब मुझे प्लेट लगाना पड़ेगा सपोर्ट करने के लिए. सेम अगर मैं टनल का मॉडल बना रहा हूँ और टनल में मुझे शॉर्टकट लाइनिंग लगानी है या फाइनल लाइनिंग लगानी है, कॉन्क्रीट लाइनिंग लगानी है, तो मुझे उसको एज अ प्लेट एलिमेंट लगाना पड़ेगा. मैं उसको बीम एलिमेंट जैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि राइट नाउ आई एम मॉडलिंग इट एज अ 3D. ओके, सेम एक्सिसोमेट्रिक एलिमेंट क्या होता है? एक्सिसोमेट्रिक एलिमेंट वो मैंने सुबह ही बताया था कि एक्सिसोमेट्रिक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट व्हिच हैज अ सर्कुलर सिमेट्री अबाउट वन एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस. तो जो भी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सर्कुलर सिमेट्री है, तो शाफ्ट का जो प्रॉब्लम है वो आप उसमें कर सकते हैं. टनल को भी कर सकते हैं. मान लीजिए टनल का सेक्शन वाइज मुझे डिफॉर्मेशन चाहिए, पर वो थोड़ा सा टफ होता है. ठीक है, क्योंकि टनल इस तरीके से, मान लीजिए एक तो टनल सर्कुलर नहीं है, वो अगर टीबीएम को छोड़ के कोई भी टनल सर्कुलर नहीं है, आप मॉडिफाइड हॉर्सशू शेप ले रहे हैं या कोई और शेप ले रहे हैं, तो एक तो सर्कुलर नहीं है. चलिए मैं अप्रोक्सीमेशन लेके टनल को सर्कुलर कर भी लेता हूँ, तो टनल की सिमेट्री इस एक्सिस में, मुझे इस एक्सिस में, वर्टिकल एक्सिस में चाहिए. तो जब मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो मुझे अपनी ग्रेविटी लोडिंग, सारी लोडिंग चेंज करनी पड़ेगी और उससे मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, और मैं कर सकता हूँ. ठीक है, पर शाफ्ट के लिए तो एक सबसे जो अच्छा मटेरियल मॉडल, सबसे अच्छा जो एलिमेंट हो सकता है 2D में करने के लिए, वो एक्सिसमेंट है. तो दिस इज अबाउट 2D एलिमेंट. 3D एलिमेंट में क्या है? 3D एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है विच इज सॉलिड एलिमेंट. ओके, जो कि आज हम यूज करेंगे फॉर द मॉडल. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट थे जो आप फाइनाइट एलिमेंट में पढ़ते हैं. ठीक है, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट. ये इसी सॉफ्टवेयर में नहीं, आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में आज जब आप यूज कर रहे हैं तो यही तरीके के आपको एलिमेंट्स वहां पर भी मिलेंगे. हाँ, मैं वही कर जा रहा हूँ, तो बस मैं बता रहा था. तो वी नीड टू ऐड प्रॉपर्टी. तो मटेरियल के नियर बाय एक प्रॉपर्टी ऑप्शन है, तो गो टू दैट प्रॉपर्टी ऑप्शन. इन प्रॉपर्टी select click on create. In property click on create, select 3D element, select 3D element, select 3D element, select 3D element. The first property is M15, so I am naming it as M15. मैंने उसको M15 नेम दिया. द मटीरियल इज, तो अब एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, बहुत इजी है कैसे आप किसी प्रॉपर्टी को कोई मटेरियल असाइन करते हैं. देखिए, प्रॉपर्टी तो एलिमेंट की है, एलिमेंट है, उसको कोई मटेरियल भी देना पड़ेगा आपको, मतलब किस मटेरियल से वो बना हुआ है. सो हाउ यू कैन डिफाइन इट? क्लिक ऑन क्रिएट. 3D में जाता हूँ, मान लीजिए मैं इसको नेम M15 देता हूँ. तो इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू आई नीड टू सिलेक्ट M15. मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में M15 सिलेक्ट करना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा. मान लीजिए दूसरे वाले को रॉक नेम देता हूँ, तो मुझे रॉक में M15 को रॉक सिलेक्ट करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और यहाँ पर रॉक नेम देके मैं अप्लाई कर सकता हूँ या ओके क्लिक कर सकता हूँ. ओके, अगर आप अप्लाई और ओके दोनों क्लिक करते हैं तो दो प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी. ठीक है, एक को चाहे तो डिलीट कर सकते हैं बाद में. ओके,
So this is how you need to add the property. So add two properties. One is for M15 and one is for the raw. Okay. क्लोज कर दीजिए, उसको भी क्लोज कर दीजिए. तो दो प्रॉपर्टीज ऐड हो गए. सिंपल एक्सरसाइज है. So this is a very simple example. Okay. Now close कर दीजिए. तो हमने ये मटेरियल पार्ट ऐड कर लिया. अब मैं ट्यूटोरियल में भी आपको दिखा देता हूँ हम कहाँ तक पहुँच गए हैं. हमने ज्योमेट्रिक मॉडलिंग ऐड कर लिया, हमने दोनों मटेरियल्स ऐड कर लिए, हमने प्रॉपर्टीज ऐड कर लिए. ओके. अब मैशिंग करना शुरू करते हैं. ओके. यहाँ तक हो गया सबका. उस साइड हो गया सबका. प्राची एक बार उधर देखो, इधर से जाओ. ओके. ठीक है. नाउ वी नीड टू मैश इट. ओके. देखिए गैलरी पोर्शन में मुझे मान लीजिए कोई रिइंफोर्समेंट या फेस रिइंफोर्समेंट कुछ देने हैं, तो वहां पर स्ट्रेसेस भी थोड़े से हाई हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो अगर वो मेरा बहुत कंसर्न रीजन है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन प्रोवाइड अ फाइनर मैश इन दिस रीजन. उस रीजन में मैं बहुत फाइनर मैश दे दूं. मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा कि अगर वो मेरा कंसर्न रीजन है और मुझे वहां पर प्रॉपर स्ट्रेस पैटर्न चाहिए, क्या स्ट्रेसेस आ रहे हैं, मुझे हर एक 4 मीटर नहीं, हर एक 0.5 मीटर फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से चाहिए, तो मुझे मैश को वहां पर फाइन करना पड़ेगा. बाकी एरिया में मेरे को, अगर मेरा कंसर्न रीजन तो पूरा डैम ही है, पर ये डैम की हाइट करीबन शायद 150-200 मीटर है, करीबन 100 मीटर का हाइट है. ठीक है. तो 100 मीटर का हाइट है, तो अगर मैं चाहूँ तो छोटा मैश पूरे एरिया में भी दे सकता हूँ, कंप्लीट वॉल्यूम में भी दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा एनालिसिस का. और मॉडल तो कन्वर्ट करेगा ही. अगर वो 4 मीटर पे भी कर रहा है तो वो 1 मीटर पे कर. ये हम्म हम्म ओके. So in that case, you need to create geometry like that. Okay. So let's say this is my core portion and this is my face portion. Okay. So I need to create geometry like that in which two solids are there. One is for M15 concrete and the face for one M25. Okay. So आपको geometry, you need to create geometry in that way that two solids should be there. Okay. Right now there is only one solid. I can do, but it is difficult to assign it. Okay. मैं कर सकता हूँ कि मैं face पे अलग दे दूँ और core में अलग दे दूँ, but yes. Okay. So you need to define the geometry like that. Okay. So now how you can control the mesh size. Okay. If you want to control a mesh size on a particular lines, how you can control this. Okay. ये आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि मुझे किसी एरिया में आई नीड टू कंट्रोल द मैश साइज. मुझे थोड़ा और छोटा देना है, जो साइज में दे रहा हूँ मुझे और फाइन करना है. ओके. इन दैट वॉल्यूम. तो देर आर साइज कंट्रोल ऑप्शन. आपको करना नहीं है, आप बस स्क्रीन पे देखिए, मैं वापस से रिपीट करूंगा. ओके. इन द मैश, इन द कंट्रोल ग्रुप देयर इज अ साइज कंट्रोल ऑप्शन. ओके. तो साइज कंट्रोल ऑप्शन है. मुझे जिस भी लाइन पर साइज कंट्रोल डालना है, मुझे साइज कंट्रोल का मतलब क्या होता है, आई एम कंट्रोलिंग द मैश, आई एम डिस्क्रिटाइजिंग द मैश. मैं उस लाइन को डिस्क्रिटाइज कर रहा हूँ. तो वेन एवर द मैश, जब भी मैं उस वॉल्यूम में मैश क्रिएट करूंगा, ऑटोमेटिकली जितने पे मैंने डिस्क्रिटाइज किया है वहां पर नोड बनेगा ही बनेगा. तो ओके. तो द नोड मस्ट बी क्रिएटेड ऑन दोज लाइंस जहां पर मैंने वो डिस्क्रिटाइज किया है. ओके. तो मैं कैसे डिस्क्रिटाइज कर सकता हूँ? मान लीजिए मुझे गैलरी पोर्शन में फाइन मैश चाहिए, तो आई कैन सेलेक्ट लाइक दैट. तो 12 लाइंस आर सिलेक्टेड. 12 लाइंस कौन से हैं? 4 आगे के, 4 ऑन द बैक साइड एंड 4 इन द इनसाइड. ओके.
12 lines are selected here, and I'm selecting like that, and 12 lines are selected at the bottom. Okay, so these are the 24 lines. If I'm providing 0.5 meter mesh size here, so you will see that this line is discretized into 0.5 meter size. Okay, so if I mesh it, आपको बस देखना है, मैं वापस से repeat करूंगा. If I mesh the complete area with the 4 meter mesh size, okay, still I am getting a 0.5 meter mesh size here. Okay, अगर आप मैं पूरी गैलरी को देखता हूँ, अंदर इस पूरी गैलरी को देखूंगा, तो इस कंप्लीट गैलरी में आई एम गेटिंग अ 0.5 मीटर में बिकॉज ऑफ द कंट्रोलिंग. अगर मैं इसको पूरा देखता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको देखता हूँ, ठीक है, तो ये 0.5 मीटर मेश साइज का मिलता है. तो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द मेश साइज ऑफ अ पर्टिकुलर लाइंस, पर्टिकुलर एरिया. मुझे कहाँ पर कंट्रोल करना है, ये जरूरी भी है जब आप गैलरीज को डिजाइन कर रहे हैं. ओके, तो आपको वहां पर एक स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए, आपको हर एक 0.5 मीटर पर एरिया चाहिए, किस एरिया में कितना इन्फोर्समेंट देना है वो आपको फाइंड आउट करना है. ओके, मैं अंडू कर देता हूँ 1 स्टेप and 2 steps. Okay, so these are the 2 steps undo. Now go to the front face. How you can control it? Go to the front face. 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 Zoom in this area, the gallery area. Zoom in the gallery area. Okay. Now, okay, so go with this size control option. Now go to the front page. Go to the front page. Go to the front page. Select the size control. Select the size control. आपको एक एक करके सिलेक्ट नहीं करना है. इफ यू सिलेक्ट लाइक 1 by 1, वो 4 ही लाइन सिलेक्ट होंगे. मुझे सारे लाइन सिलेक्ट करने हैं, इनसाइड 4 लाइंस भी और पीछे वाले 4 लाइंस भी. तो आई कैन सिलेक्ट लाइक दैट. मैं ड्रैग करके सिलेक्ट करता हूँ इस एरिया में. तो 12 और 24 लाइंस आर सिलेक्टेड. 24 लाइंस आर. आपके में पेज नहीं है, आपने पेज बनाते टाइम अंदर गैलरी सिलेक्ट नहीं किया.
ओके नाउ सी देखिए आपके में कई लोगों ने क्या किया है, गैलरीज नहीं है वहाँ। जो भी तो जब पेज बना रहे थे ना, ड्यूरिंग पेज क्रिएशन उन्होंने क्या किया, गैलरी को अंदर सेलेक्ट नहीं किया। देखिए सॉफ्टवेयर कैसे क्लोज्ड एरिया, सॉफ्टवेयर पेज कैसे बनाता है, पहले आप ये देखिए। अगर मैंने ये लाइन सेलेक्ट की है, मान लीजिए 4 लाइन सेलेक्ट करिए, सॉफ्टवेयर सारे में पेज बना देता। ओके अगर मैंने ये मान लीजिए ये क्लोज्ड एरिया है और एक इसके अंदर क्लोज्ड एरिया है, अगर जैसे ये गैलरी वाला था, तो मैंने जब मैं पेज बना रहा था तो कई मतलब अटेंडीज ने क्या किया, खाली ये 4 लाइन सेलेक्ट किए, तो सॉफ्टवेयर ने क्या किया, इस पूरे पे पेज बना दिया। अब मैंने इस पूरे पेज को एक्सट्रूड किया तो एक सॉलिड बनेगा, जबकि मुझे करना क्या था, ये वाला और ये दोनों सिलेक्ट करने थे। जब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो इतने एरिया में पेज बनेगा। ओके जब इतने एरिया में पेज बनेगा और उसको एक्सट्रूड करूंगा तो वहां पे वॉइड दिखेगा, वो वॉइड आएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने वो वाली लाइन से एक और छोटा सॉलिड बना दिया और उसमें से उसको कट कर दिया। मतलब कैड है, कैड को आप कैसे भी चला सकते हैं। दिस इज सिंपल कैड। आपको कैड कैसे यूज करना है, अभी जिन्होंने नहीं बनाया था मैं वापस से तो रिपीट नहीं किया, मैं बस एक काम किया कि डायरेक्टली वहां से एक गैलरी बना के उसको कट करके निकाल दिया। जो मैश डिलीट करने से हाइड नहीं होती है, मैश क्रिएट करने से हाइड हो जाती है। व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग मैश, तो ज्योमेट्री सॉफ्टवेयर हाइड कर देता है। उसके बाद अगर आप उसको वापस किए तो आपको वापस कॉल करना पड़ेगा, वो अनहाइड करना। ओके नाउ वी नीड टू प्रोवाइड अ साइज कंट्रोल। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टाइम धीरे धीरे। नाउ वी नीड टू प्रोवाइड अ साइज कंट्रोल। तो साइज कंट्रोल से क्या करेंगे, गो टू द साइज कंट्रोल ऑप्शन in the control group in the mesh tab, in the mesh tab, in the control group, in the mesh tab, in the control group, in the mesh tab, in the control group, go to the size control option, select the size control option. In the mesh tab, in the mesh tab, in the control group, in the control group, in the control group, select the size control option, select the size control option, select gallery lines only, select gallery lines only like dragging। पूरा कंप्लीट करेंगे तो नीचे भी सिलेक्ट हो जाएगा, आपको ये नहीं करना है केवल इतने लाइन, यहाँ वाले लाइंस को मान लीजिए मुझे एरिया फाइन मैच करना है, तो मैंने ये लाइन सेलेक्ट किए। आई एम गोइंग विद दिस 0.5 मीटर मैच साइज फॉर एग्जाम्पल, मैं 0.5 मीटर मैच साइज पे जाता हूँ एंड क्लिक ओके। ओके आपने मैच भी किया, अच्छा मैच कर दिया आपने। हाँ दोनों कर दिया, दोनों तो 0.5 मीटर यहाँ पे लाइट। हाँ यहाँ पर लाइन हाइड कर, यहाँ पर ये लाइन और सर्फेसेस होंगे ना, इनको हाइड कर, लाइंस और सर्फेसेस होंगे वहाँ पर। ओके तो go to the size control, select this, enter 0.5 meter mesh size, then click OK, done। अब हमारा ये फाइन मैश वाला भी कंसिडरेशन हो गया, मुझे यहाँ पे फाइन मैश देना है तो मैं दे सकता हूँ। ओके नाउ अब चलते हैं आगे। ओके इसके बाद और आगे चलते हैं, इसके बाद और आगे चलते हैं। ओके नाउ माय फर्स्ट, नाउ आई नीड टू मैश इट, नाउ आई नीड टू मैश इट। तो फॉर द मैशिंग देखिए यहाँ पर 3 मैशिंग ऑप्शन है, 1D 2D एज वेल एज 3D। तो 3 मैशिंग ऑप्शन आर देयर इन द जनरेट ग्रुप। In the generate group, there are 3 meshing options, 1D, 2D and 3D. In the generate group, there is 3 options. अगर मुझे 1D मैच जनरेट करनी है तो मैं 1D चूज करूंगा, मुझे 2D मैच जनरेट करनी है तो मैं 2D मैच चूज करूंगा, मुझे 3D जनरेट करनी है तो 3D मैच। तो राइट नाउ 3D मुझे मैच करनी है, मैं 3D चूज करूँ।
मैं 3D चूज करता हूँ. ओके, लेट्स से मैं मेश साइज 4 मीटर, मतलब अगर जल्दी एनालाइज करना है तो 4 मीटर दे देते हैं. जल्दी एनालाइज करना है हमको, थोड़ा सा चीज़ें जल्दी करनी है. तो व्हाट आई कैन डू नाउ, आई नीड टू, अब मुझे देखिए मैश करने के लिए मुझे किस एरिया या किस वॉल्यूम को मैश करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो आई नीड टू सिलेक्ट दिस pillars as well as this dam part. So I am selecting this complete dam part. I am selecting this complete dam part. Okay. और अगर आपको इस हाँ, ये बाद में चेंज करूंगा इसको प्रॉपर्टीज. ओके, पहले ये वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो आई एम सिलेक्टिंग दिस कंप्लीट डैम पार्ट. सिलेक्ट दिस कंप्लीट डैम पार्ट. एंटर द साइज 4 मीटर. 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 देखिए मैं 4 मीटर बड़ा ले रहा हूँ, आप चाहें तो 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर के साथ भी जा सकते हैं. मैं अभी, मुझे एनालिसिस जल्दी खत्म करना है, तो आई एम टेकिंग इट एज अ 4 मीटर. देयर आर टू काइंड ऑफ मैशिंग आर देयर. वन इज टेट्राहेड्रल मैश, वन इज हाइब्रिड मैश. अब मैंने आपको मॉर्निंग में बताया कि टेट्राहेड्रल मैश कंसिस्ट ऑफ टेट्राहेड्रल एलिमेंट्स ओनली, while the hybrid mesh consists of all types of elements, which includes tetrahedral, hexahedral, pyramidal, all these kind of elements. No, triangular is the 3-noded. अगर मैं 3 वो 2D के लिए यूज होता है, 3D में वो नहीं हो पाएगा. ठीक है, triangular is the 3-noded element, that is for 2D. ठीक है, अगर मैं 2D मैच करूंगा तो वहां पर दोनों ऑप्शन है, triangular as well as quadrilateral. But for 3D you have hybrid as well as tetrahedral. देखिए मैं रिकमेंड करूंगा आपको, इफ यू आर गोइंग विद दिस टेट्राहेड्रल, गो विद टेट्राहेड्रल ओनली. अगर आप एक वॉल्यूम को टेट्राहेड्रल के साथ मैच करते हैं तो आप सारे को टेट्रा से ही मैच करिए. अगर आप एक को हाइब्रिड से मैच करते हैं तो सारे को हाइब्रिड से मैच करिए. ये मैं रिकमेंड करूंगा. आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं, बट ओनली वन वे मिक्सिंग इज अलाउड, विच इज, अगर मैंने पहले टेट्राहेड्रल यूज किया है तो आई कैन यूज हाइब्रिड लेटर, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. I am again repeating the steps. I am again repeating my statement that if you are using tetrahedral, आप सारे में tetrahedral कर रहे हैं तो ठीक है, वो भी ठीक है. आप सारे में hybrid कर रहे हैं, वो भी ठीक है. But if you start with the tetrahedral element और आप hybrid कर रहे हैं तो ठीक है. बट अगर आपने पहले hybrid किया और बाद में tetra करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो true नहीं, वो फिर कनेक्ट नहीं करेगा. इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है कि tetra के पास बाकी एलिमेंट्स नहीं है. Tetra element does not have hexahedral elements and these kind of elements, while hybrid element consists of tetrahedral element also. तो अगर मैंने टेट्रा कहीं पर बनाया है तो अगर उसको कनेक्शन बनाना होगा तो वहां पर टेट्रा से शुरू करके फिर अपना हाइब्रिड की तरफ, बाकी एलिमेंट्स की तरफ आएगा. बट अगर मैंने पहले कहीं हाइब्रिड कर रखे हैं तो आप उसको टेट्रा को कनेक्शन बनाना इट्स डिफिकल्ट. तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू कि टेट्रा करने के बाद हाइब्रिड किया जा सकता है, बट हाइब्रिड करने के बाद टेट्रा नहीं किया जा सकता. ओके, बट इसमें आप जाइए ही मत कभी. स्टार्ट विद टेट्राहेड्रल, फिनिश विद टेट्राहेड्रल ओनली. स्टार्ट विद हाइब्रिड, फिनिश विद हाइब्रिड ओनली. ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा. ठीक है, तो लेट्स से मैं हाइब्रिड के साथ या हाइब्रिड के साथ ही जाता हूँ. हाइब्रिड के साथ जाता हूँ. आई एम गोइंग विद द हाइब्रिड एलिमेंट. आई एम गोइंग विद द हाइब्रिड एलिमेंट एंड selecting property as M15. Selecting property as M15. अगर आपका सर ब्लॉक टाइप ज्योमेट्री है, बॉक्स टाइप ज्योमेट्री है, ब्लॉक टाइप, तो आप हाइब्रिड के साथ जा सकते हैं. अगर आपकी बहुत इरेगुलर ज्योमेट्री है और शार्प कॉर्नर्स है आपकी ज्योमेट्री में, तो गो विद द टेट्राहेड्रल एलिमेंट्स, बिकॉज उसके पास वो शार्प कॉर्नर्स हैं और वो अच्छे से वहां पर कनेक्ट, मतलब मैश फॉर्म कर सकता है. और कई बार आपको, अगर आपके शार्प कॉर्नर ज्योमेट्री है, अनड्यूलेटिंग ज्योमेट्री है, तो देयर इज अ चांस कि हाइब्रिड आपको एरर दे देगा, नॉट एबल टू मैच द वॉल्यूम. ओके, और एक और चीज है कि हाइब्रिड एलिमेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम बनते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर क्यूब को मैच करना चाहता हूँ. अगर मैं 1 मीटर मैश साइज दे रहा हूँ और 1 मीटर मैश साइज का या 0.1 मैश साइज दे रहा हूँ, तो वो हेक्साहेड्रल एलिमेंट का वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल. तो अगेन मैं वही कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी ब्लॉक टाइप ज्योमेट्री पे आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो उसमें आप हाइब्रिड देके निकल सकते हैं और आपका एनालिसिस टाइम भी बहुत कम हो जाएगा. बट अगर बहुत बेकार ज्योमेट्री है, जिसको हम कहते हैं कि शार्प कॉर्नर्स हैं, अनड्यूलेटिंग है,
अनइवन है, तो गो विद दी टेट्राहेड्रल मैश, वो ज़्यादा अडॉप्टेबल है। और इनिशियली सारे सॉफ्टवेयर में पहले टेट्राहेड्रल ही होता था, हाइब्रिड एलिमेंट्स नहीं होते थे, देयर इज अ टेट्राहेड्रल एलिमेंट्स ओनली। पहले आप देखेंगे तो मोस्टली टेट्राहेड्रल एलिमेंट्स ही थे। ओके, तो आई विल गो विद, लेट्स से मैं इसको डैम नेम दे देता हूँ। ओके, आई नेम इट। अब जैसे इसमें अगर आप चाहें तो पिलर का ग्रेड अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, या यूनियन बीम का ग्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, किसी और डैम पोर्शन का ग्रेड अगर आपको चेंज करना है, इफ यू वांट टू चेंज द ग्रेड ऑफ द डैम, आपको उसकी ज्योमेट्री मॉडल करनी है, कनेक्ट करना है, और उसको आप पर्टिकुलर अलग अलग, अभी तो हमने सबको एक साथ सिलेक्ट करके वी प्रोवाइड M15 ओनली। लेट्स से मेरा यूनियन बीम का ग्रेड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए पिलर से भी लोड आ रहा है, दोनों सब तरफ से लोड आ रहा है, तो इन दैट केस आई कैन असाइन अ डिफरेंट ग्रेड टू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। ओके, तो मैं डैम सेलेक्ट करता हूँ एंड अप्लाई क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो बंद हो जाएगा। तो अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से 4 ऑब्जेक्ट्स में ये मैशिंग हो जाएगा। तो इस तरीके का मैशिंग हो, ओके। ये मैंने अभी काफी बड़ा मैच किया है, यू नीड टू गो फॉर 1 मीटर। लैम्डा बाई, कहीं आप रूल्स देखेंगे तो लैम्डा बाई 10 समथिंग रूल्स होते हैं, लैम्डा बाई 8, लैम्डा बाई 10। तो जो आपका मैक्सिमम मैच साइज होना चाहिए वो लैम्डा बाई 10 के आसपास होना चाहिए, कि लैम्डा बाई 10 से बड़ा, मतलब अगर मैं लेंथ ऑफ द डैम की बात करता हूँ, हाइट ऑफ द डैम अगर 108 मीटर है, तो मुझे 8-10 मीटर से ज़्यादा मतलब मैच नहीं जाना चाहिए मेरा साइज ना। लैम्डा बाई 10 और लैम्डा बाई 20 शायद रूल होता है, तो वो 20 होता है, आई थिंक 20 होता है। 5 मीटर से मेरा शायद मैच साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो आपको रूल्स मिल जाएंगे, कई मैनुअल्स में मिल जाएंगे, नहीं तो रिसर्च पेपर में मिल जाएंगे कि आपको मैक्सिमम मैच साइज कितना रखना है। मिनिमम तो आप कितना भी रख सकते हैं, कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसको सिलेक्ट करके वापस से मैच कर दीजिए, हाँ, बस खाली सिलेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, वहीं से सिलेक्ट करके अप्लाई कर दीजिए। ओके, ठीक है, आपने ये सारा मैच कर दिया। ओके, नाउ देखिए, ये डैम के लिए मैंने ना एक नीचे एक पर्टिकुलर एरिया वाइड कर रखा है, ये ज़्यादा है, 23 मीटर तो नहीं जाता मैं, ठीक है। मैंने ये इसलिए कर रखा है कि मान लीजिए कल मैंने ये जब ट्यूटोरियल बनाया था तो इसलिए बनाया था कि कोई प्रॉपर्टी ऑफ एरिया मान लीजिए खराब है, तो मतलब सिखाने के लिए बनाया था कि मान लीजिए मुझे कुछ एरिया ग्राउट करना है, या कुछ पर्टिकुलर एरिया में कॉन्क्रीटिंग फिल करनी है एक्टिवेट करके, तो उसके लिए ये ट्यूटोरियल जब बनाया था तो इस तरीके से बनाया था कि ये वाला पॉइंट भी सिखा सके कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर एरिया की पॉइंट प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, या उस एरिया में मुझे कंक्रीट फिल करना है तो कैसे फिल कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसको रॉक के साथ मैच करते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी कंक्रीट में चेंज कर देंगे अगर चाहें तो। वैसे तो ग्राउटिंग कर सकते थे, पर अभी कंक्रीट में चेंज कर देंगे। ओके, नाउ दिस एरिया एंड दिस एरिया, सेलेक्ट दिस एरिया एंड दिस एरिया। ट्यूटोरियल में हमने ये वाला पार्ट भी खत्म कर लिया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट। हाइब्रिड मत, हाइब्रिड अगर आपने पहले दिया है तो हाइब्रिड सेलेक्ट करना नहीं भूलिएगा। ओके, लेट्स से गो विद दी 5 मीटर मैच साइज, मैं 5 मीटर के साथ जाता हूँ। अब तो मॉडल हाइट मैंने बहुत छोटा कर दिया है, 5 मीटर के साथ जा सकता हूँ। ओके, थ्री डी जनरेट में 3D में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, हाइब्रिड जरूर कर दीजिएगा अगर हाइब्रिड पहले किया था, अगर पहले हाइब्रिड लिया था। ओके, select the mesh size of 5 meter, select the property as rock, select the property as rock and enter the name it as rock। आप rock name दे सकते हैं, आप rock name दे सकते हैं, name it as rock, name it as rock। okay, name it as rock, name it as rock and click OK। ओके करेंगे तो विंडो क्लोज हो जाएगी और दोनों मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैच होंगे। अगर आप मैच देखना चाहते हैं कहाँ रजिस्टर हुए हैं, जैसे ज्योमेट्री आपकी रजिस्टर हुई थी ना, वहीं पर मैच भी रजिस्टर होगी। इसी मॉडल में जाएंगे,
प्राची यहाँ पर ये आपकी मैच रजिस्टर हुई है। अंडू किया मैच मैच वहाँ पे ज्योमेट्री हाइड हो गया होगा, ज्योमेट्री वन हाइड अनहाइड कर दो। ओके, ये आपका ब्लॉक, ये आपके ब्लॉक्स हैं। ओके, देखिए ये एक ब्लॉक की ज्योमेट्री है। ओके, इसमें भी आप और भी देखिए, आप अपना हर कंसल्टेंट अपना अलग तरीके से करता है। some consultant model the equal size the rock boundary as the equal size of dam block। जितना मैंने डैम ब्लॉक बनाया उसका रॉक बनाते हैं। कुछ कंसल्टेंट को देखेंगे तो वो डैम जो रॉक का एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं, उसके ऊपर एक ब्लॉक है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी मतलब आपके इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्शन पे जाता है कि आपको किस तरीके से मॉडल करना है। ओके, इसमें क्या होगा, आपकी ये वाली जो साइड बाउंड्रीज हैं ये अफेक्ट करेंगी। इसमें जब लोड ट्रांसफर होएगा तो ये लोड ट्रांसफर को रोकेंगे, पर वहां पर क्या होगा, लोड ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वहां पर ओवरलैपिंग होती है ब्लॉक्स की, वो चीज़ हम साइमुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लीजिए 2-3 ब्लॉक्स हैं, उनकी स्ट्रेस को ओवरलैपिंग भी होती है नीचे ब्लॉक में। ठीक है, तो वो हम साइमुलेट नहीं कर सकते एक ब्लॉक के साथ अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो मैं इस विड्थ की बात कर रहा हूँ। दिस विड्थ, ये जो विड्थ है ये या तो आप ब्लॉक के बराबर रखिए या ब्लॉक से टू डी टाइम्स इधर चले जाइए, डी टाइम्स इधर चले जाइए एटलीस्ट। या उधर तो लोड ज़्यादा जाने भी नहीं है। ठीक है, उधर लोड ज़्यादा जाने भी नहीं है, तो डी टाइम्स उधर चले जाइए या 2D टाइम्स ही चले जाइए, तो आपका नीचे बड़ा भी कर सकते हैं मॉडल। ओके, ये आपका मॉडल है जिसकी मैशिंग हो गई है। हाँ हाँ, बड़े वाले का भी कर दीजिए, रॉक से कर दीजिए, हाइब्रिड कर दीजिए। ओके, यहाँ तक ठीक है। देखिए एफईएम का वर्कफ्लो क्या कहता है, एफईएम का वर्कफ्लो कहता है पहले आपको ज्योमेट्री बनानी है, देन आपको मैश करना है, देन आपको लोड एंड बाउंड्री कंडीशन, देन आपको लोड एंड बाउंड्री कंडीशन। तो पहले हम बाउंड्री कंडीशन डाल लेते हैं, फिर हम लोड, या पहले लोड डाल, पहले हम लोड एप्लीकेशन करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लास्ट में करते हैं। बाउंड्री कोई नहीं, बाउंड्री कंडीशन वाला स्टेप डाल। ओके, देखिए हमने यहाँ ये वाले मॉडल को थोड़ा छोटा करके हमने यहाँ तक कर लिया, ये चीज यहाँ तक हो गई है। ठीक है, हमने इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ तक कर लिया। नाउ अब मेरा जो पार्ट है वो है कि अब बाउंड्री कंडीशन लगानी है और अब मुझे लोड लगा, अब मुझे लोड लगा, पहले लोड से शुरू कर। अब थोड़ा सा डेफिनेशंस आएंगे, थोड़े मतलब चीजें टफ होंगी, पर आप अगर स्क्रीन पे अच्छे से देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ओके, मैश हो गया, मैश तक इजी था। मैशिंग इज द इजीएस्ट पार्ट इन दिस सॉफ्टवेयर, मे बी इट इज डिफिकल्ट इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर, बट यहाँ पर मैशिंग करना सबसे आसान काम है। मेरे को ऑटो कनेक्ट करना है, उसके बाद मैशिंग होती है। ठीक है, और कनेक्टेड भी होगा, अगर मुझे कनेक्शन भी चेक करना है ना कल को, तो मैं वो भी चेक, अभी वो मैं सारी चीज़ें तो कवर नहीं कर सकता एक दिन में। अगर मुझे मान लीजिए कल को ये भी चेक करना है कि मेरे मैश कनेक्टेड हैं या नहीं है, तो आई कैन चेक नंबर ऑफ फ्री फेसेस आर 0, मतलब मेरे सारे मैश एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, वो सारे चेक भी मैं कर सकता हूँ। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ, नाउ मेरा लोडिंग का द फर्स्ट लोड इज सेल्फ वेट। तो अगर मैं सेल्फ वेट देखूंगा तो दैट इज ऑलरेडी अप्लाइड इन द मॉडल, अगर नहीं है तो मैं वापस से शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए कहाँ अभी तक हम कोई क्वेश्चन है वहां पर उस साइड, कोई क्वेश्चन? देखिए अब एक बार मेरी स्क्रीन पर अच्छे से देखिएगा क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 4-5 तरीके के लोड डेफिनेशन हम करेंगे, एक दो करेंगे उससे सारे सीख जाएंगे आपको कैसे करने हैं, बाकी लोड कैसे करने हैं। एक तो ग्रेविटी लोड करना है, एक हमको करना होगा, मान लीजिए मैं FRL लोड लगा रहा हूँ, कोई रिजर्वायर लोड लगा रहा हूँ जो लेफ्ट अपस्ट्रीम साइड पर लगेगा, वो लगाना है। तीसरा लोड लगाना होगा मुझे
मान लीजिए मैं कोई हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगा रहा हूँ, वो लगाना है। मान लीजिए चौथा लोड लगा रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम अपलिफ्ट या अपलिफ्ट लगानी है, वो लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे कुछ लोड हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ लोड हैं। मुझे मान लीजिए ये लोड लगा। इस सॉफ्टवेयर की एक अच्छी बात है कि आप लोड ज्योमेट्री पे भी लगा सकते हैं और मेश पे भी लगा सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, you can apply load either on geometry or mesh. That will, if you are providing that, if you are applying that load on the geometry, that will automatically transfer to the mesh mode. ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात इसकी है कि आप ज्योमेट्री पे भी लोड लगा सकते हैं और मेश पे भी लोड लगा। फायदा क्या है, देखिए ज्योमेट्री पे लोड लगा, मान लीजिए मुझे प्रेशर, आप बस स्क्रीन पे देखिए, अभी कुछ करना नहीं। मान लीजिए मुझे एक प्रेशर लोड लगाना है, अपस्ट्रीम फेस पर लगाना है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट, एक एक फेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास और भी ऑप्शन है। मान लीजिए मैं इस तरीके से भी जाता हूँ, तो मुझे इस तरीके से मान लीजिए पॉलीगन विंडो बना के इस तरीके से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। मुझे इस तरीके से सिलेक्शन करनी पड़ेगी, सिलेक्ट करनी। ओके, तो मेरे को एक एक एलिमेंट पकड़ के सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मेरे को एक एक एलिमेंट पकड़ के सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर मान लीजिए मैं ज्योमेट्री ओपन कर लेता हूँ। जो ज्योमेट्री मैशिंग करते, एक सॉफ्टवेयर में एक डिफॉल्ट सेटिंग है कि जब भी आप मैशिंग करते हैं किसी एरिया की, एक वॉल्यूम की, सॉरी, वो सॉफ्टवेयर उस वॉल्यूम को हाइड कर देता है। ज्योमेट्री में रहता है वो, बट वो हाइड कर देता है। अगर आपको उसको वापस कॉल करना है तो आप अनहाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये ज्योमेट्री है मेरी। अब ज्योमेट्री के अंदर मैश भी है। ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर मैश भी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो तीन ऑप्शन थे मेरे पास। मान लीजिए मुझे इस पर वापस से प्रेशर लोड लगाना, तो मैं यहाँ फेस सेलेक्ट करके ये फेस सिलेक्ट कर लूंगा। जो भी जो जिस पर भी मुझे लोडिंग लगानी है, मैं ये फेस सिलेक्ट करके, अब ये मेरे लिए कितना आसान हुआ। मुझे बस 6 जगह क्लिक कर, जो भी फेसेस बन रहे थे वहां पर क्लिक करना था और ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, या तो आप इधर कर सकते हैं या आप इधर कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली सारे जो भी नोड्स हैं, देखिए दो तीन ऑप्शन है। जब मैं पेस में जाता हूँ यहाँ से, तो मैं ये फेसेस सिलेक्ट करता हूँ, जो छह फेसेस सिलेक्ट करे। मैं डायरेक्टली इस पर मान लीजिए कल को 100 किलोमीटर मीटर स्क्वायर का एक लोड लगा रहा हूँ, तो ये लोड लग गया और ये लोड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा मेश पर। ये लोड ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा मेश पर। ठीक है, तो मैं ज्योमेट्री पे लोड लगा सकता हूँ या मैं मेश पे भी लोड लगा सकता हूँ। तो दोनों तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है। बिकॉज यू आर यूजिंग सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम, तो मैं ज्योमेट्री पे लगाऊंगा, क्योंकि दैट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी अगर मैं मेश पे लगा रहा हूँ। ओके, तो मैं ज्योमेट्री पे लोड लगा, तो आप पहला लोड हम ज्योमेट्री पे लगा, तो ज्योमेट्री आप एक्टिवेट कर लीजिए अपनी। ये जो ये है सॉलिड्स हैं, इनको एक्टिवेट कर लीजिए, सॉलिड्स को अनहाइड कर लीजिए, जो कि ड्यूरिंग द मैचिंग हाइड होगा। अभी वो मैं बताऊंगा सर, अभी तो बस सॉलिड हाइड, सॉलिड सॉलिड। इसको एक बार क्लिक करके वापस वो सारे हाइड हैं, तो एक बार क्लिक करके वापस आना है। ओके, आप इस तरीके से सॉलिड्स को अपने अनहाइड कर लीजिए, अनहाइड द सॉलिड।
ओके ओके अभी क्या करना है, माई मैशिंग, मैंने आपको बताया कि इस सॉफ्टवेयर में जो सबसे अच्छी बात है कि यू कैन अप्लाई लोडिंग ऑन बोथ मैश एज वेल एज दी सॉलिड। तो मतलब काम को इजी बनाने के लिए अभी के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आप पहली बार सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपको सिलेक्शन में बहुत दिक्कत आए, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉलिड पे लोड लगाएंगे, वो ऑटोमेटिकली मैश पर ट्रांसफर हो जाए। ओके, तो द फर्स्ट लोड इज FRL। मान लीजिए मैं एक FRL लोड लगा, तो द फर्स्ट लोड इज FRL, first load is FRL. So in the static load group, go to the static analysis tab, 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 then static load group, in the static load group, in the static load group, in the static load group, select the pressure option, select the pressure option, second line third option होगा वहीं स्टैटिक लोड ग्रुप, थोड़ा साइड में जाएंगे, हाँ यही वाला। तो दिस इज द ऑप्शन फॉर द प्रेशर, दिस इज ऑप्शन फॉर प्रेशर। ओके, select the pressure, select the pressure option, select the pressure option। ओके, कोई दिक्कत? सिंपल, नहीं नहीं सिंपल प्रेशर, वाटर प्रेशर तो वो जब मैं वाटर टेबल डिफाइन करता हूँ वहां पे लेंगे, प्रेशर सिंपल, ये ऊपर यहाँ पे होगा सेकंड ऑप्शन है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो जियो टेक्निकल एनालिसिस में दिख जाएगा, वहां पर जो प्रेशर ऑप्शन है जियो टेक्निकल वाले में वो दिख जाएगा। ओके ओके सर, अप्लाई करने अभी मैश बनाया और ज्योमेट्री बनाया, अब नाउ वी नीड टू अप्लाई द लोडिंग। तो लोडिंग के लिए मुझे पहले टाइप ऑफ द एनालिसिस में जाना पड़ेगा। मान लीजिए मैं स्टैटिक एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, तो इन द स्टैटिक, गो टू द स्टैटिक एनालिसिस टैब, इन द स्टैटिक एनालिसिस टैब देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड स्टैटिक लोड, एक ग्रुप होगा स्टैटिक लोड का, ठीक है, ग्रुप होगा स्टैटिक लोड का, उसमें सेकंड लाइन में जो सेकंड ऑप्शन होगा वो प्रेशर का होगा, सेकंड या थर्ड जो भी आपके स्क्रीन के साइज के हिसाब से आ रहा होगा वो प्रेशर ऑप्शन होगा, ठीक है, वो प्रेशर ऑप्शन होगा। ओके, सिलेक्ट द प्रेशर ऑप्शन, नाउ यू नीड टू अप्लाई द लोडिंग ऑन द फेस। ओके, अब मुझे फेस पे अप्लाई, देखिए यहाँ पर टाइप लिखे हुए हैं, कभी 2D पे अप्लाई करना होगा तो आई विल गो विद दिस 2D एलिमेंट, मुझे 3D एलिमेंट फेस पे अप्लाई करना होगा तो 3D एलिमेंट, जब मैं मेश पे अप्लाई करना चाहूँगा, मुझे ज्योमेट्री के फेस पे अप्लाई करना है, तो ज्योमेट्री के फेस पे अप्लाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई विल गो विद दिस फेस ऑप्शन, आई विल गो विद दिस फेस ऑप्शन, मैं फेस ऑप्शन के साथ जाता हूँ, गो विद दिस फेस ऑप्शन, इन जिन फेसेस पे लगाना है वो फेसेस सिलेक्ट कर लीजिए, जिन फेसेस पे लगाना है वो फेसेस सिलेक्ट कर लीजिए, जिन फेसेस पे लगाना है वो फेसेस सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाले फेसेस पे लगाना है सारे, ये अंदर भी लगाते हैं लोग, क्योंकि अब उसमें भी देखिए ओएस ब्लॉक में बहुत कंडीशन होती हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। ओएफ में गेट क्लोज्ड होगा तो लोडिंग अलग होगी, गेट ओपन होगा तो लोडिंग अलग होगी, उन सारी केसेस में हम नहीं जा रहे हैं, हम मोस्ट एक नॉर्मल लोडिंग में जा रहे हैं। मेरा काम आपको ये बताना है कि कैसे काम, क्या क्या चीजें लेनी होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, गेट क्लोज्ड होगा तो लोडिंग अलग हो जाए, ठीक है, गेट ओपन होगा तो लोडिंग अलग हो जाए, ठीक है, फिर जो आपका स्पिलवे सेक्शन है वहां पर भी लोडिंग है, ठीक है, गेट के किस लेवल तक लोडिंग आएगी, किस लेवल तक पानी भरा होगा, उसके हिसाब से लोडिंग आपको अंदर भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, अंदर भी आपको वो लोडिंग लगानी पड़ेगी। तो अभी हम वो सब में नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली एक लोड लगा रहे हैं जो कि फेस पे FRL अपस्ट्रीम साइड पे जो एरिया है, मैं मान रहा हूँ कि खाली बाहर है सारा पानी और उस पर मैं लोड लगा रहा हूँ, ठीक, ओके। ना देखिए अभी ये जो आपका FRL लोड है, जो आपने लोड लगाना है, ये जो
रिजर्वायर लोड है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो मैं कांस्टेंट प्रेशर नहीं दे सकता। आई कैन नॉट डिफाइन कांस्टेंट प्रेशर इन इट। ओके, हाइट ऑफ द डैम क्या है? अगर मैं फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ द डैम पकड़ता हूँ, तो हाइट ऑफ द डैम क्या है? ये करीबन 109 मीटर है। मेरा ओरिजिन यहाँ पर है। ओके, मेरा ओरिजिन यहाँ पर है, जो ओरिजिन 23.34 मीटर ऊपर है, मतलब ये वाला पेज। अब आपको दो तीन अब आपको समझना है कि मैं एफआरएल कैलकुलेट कैसे करता हूँ, वो मैं वापस बताता हूँ। ये आप ये समझिए कि मैं एफआरएल लोड लगाऊंगा कैसे इस मॉडल में। एफआरएल लोड इज वेरिएबल लोड। एफआरएल लोड जो वाटर का लोड है वो वेरिएबल लोड है, और वो वेरी करेगा अलोंग द डेप्थ। वो वेरी करेगा अलोंग द डेप्थ। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो ऊपर से नीचे वेरी करे। अगर आप अपने ट्यूटोरियल को देखते हैं तो वहां पर दो वैल्यूज आपको दिखेंगे। अगर मैं यहीं से डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ, तो दिस इज द वैल्यू, द फंक्शन at 128 meter. At 128 meter the value is 0, and at 23.35 meter the value is 1026.6. तो ये कैलकुलेट कैसे हुआ है? ओरिजिन से 128 मीटर की जो हाइट है वहां पर मान लीजिए ये डैम अगर एफआरएल लो, ये रिजर्वायर लो, हाँ लीनियर, हाँ हाँ, बस उसमें एक चीज आपको नोट करना है कि ये जो लोड है ये ओरिजिन के हिसाब से लग रहा है। ठीक है, ये जो लोड है ये ओरिजिन के हिसाब से लग रहे हैं। तो मेरा जो, अगर आप मैं इसकी नोड पोजीशन दिखाऊं, तो ये तो ओरिजिन का यहाँ पर है, और इसका जो हाइट है वो करीबन इसका हाइट जो है वो 132 मीटर है, मतलब 132 मीटर जो लोकेशन है। तो कैलकुलेट कैसे हुआ है? मान लीजिए मैं 2-4 मीटर का कोई फ्री बोर्ड मान लेता हूँ, 5-6 मीटर का फ्री बोर्ड, जो भी मेरा फ्री बोर्ड बनता है उसके हिसाब से मैं यहाँ से इसकी हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ कि क्या मेरी हाइट है यहाँ पे। ये मेरी हाइट है मान लीजिए 108 मीटर। मान लीजिए 3 मीटर का या 8 मीटर का फ्री बोर्ड भी है, तो करीबन 100 इंटू 10 अगर मैं पकड़ लेता हूँ तो हो गया 1000। तो 1000 मीटर मुझे 1000 kPa का प्रेशर मुझे बॉटम पे लगाना पड़ेगा, और 100 मीटर जो हाइट है वहां पे जो प्रेशर लगाना पड़ेगा वो 0 लगाना। पर उस 100 के लिए मुझे उसका, ये तो 100 पे मान रहा हूँ, मतलब मुझे ये जो हाइट है वो 109 है, मुझे 100 मीटर पर क्या उसका कोऑर्डिनेट है वो पता होना। हमारी बात समझ रहे हैं? जो भी कैलकुलेशंस हो रही हैं वो ओरिजिन के हिसाब से हो रही है। जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ओरिजिन के हिसाब से कर रहे हैं। जो मैं फंक्शन डिफाइन करूंगा, मान लीजिए मैं अगर फंक्शन डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, हमने कुछ ऐसा बनाया है, ये डैम है और मेरा ओरिजिन यहाँ पर, यहाँ पर, और ये करीबन 108 मीटर हाइट है। यहाँ से 108 मीटर हाइट, इस पोजीशन से यहाँ पे 108 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 108 मीटर हाइट है, और ये मेरा करीबन है 20 मीटर अंदर है। ये मेरा 20 मीटर अंदर है। मैं चाहता तो ओरिजिन यहाँ पर रख सकता था सिंपल कैलकुलेशन के लिए। अगर आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो आप क्या करिए, इस मॉडल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए। सिर्फ मैं इनिशियल में ही अभी भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो मॉडल को थोड़ा शिफ्ट कर सकता हूँ 20 मीटर नीचे, और मैं अपने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो मेरे लिए सारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जहां पर 0 है उसका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, और यहाँ का कोऑर्डिनेट पता। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तो मेरे को पता है 23.35 है, और मान लीजिए मैं यहाँ पर इतना हाइट ऑफ दी वाटर है, तो इसका इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? h प्लस 23.35। ओके, अगर आप इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, जेड एक्सिस जेड कोऑर्डिनेट, तो ये तो 23.35 है। ओके, और ये h है, तो h प्लस 23.35। इस पर प्रेशर क्या लगेगा? यहाँ पर तो 0 लगेगा, और यहाँ पे लगेगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा यहाँ पे लगेगा गामा डब्ल्यू इंटू एच। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। मान लीजिए ये जो 23.110 तो करीबन 105 मीटर के आसपास माना है।
105 मीटर हाइट और बाकी फ्री बोर्ड 3-4 मीटर का फ्री बोर्ड जो है वो मान, ठीक है। तो मैं यही लोड डायरेक्टली लगा देता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पे एफआरएन कैसे कैलकुलेट होगा? मैं अगेन एक बार और रिपीट करूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सबके लिए। देखिए, ये जो लोड है, वाटर लोड है, ये वेरिएबल लोड, तो मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे सॉफ्टवेयर को एक फंक्शन देना पड़ेगा कि इतने से इतने तक ये वैल्यू लगानी, टॉप पे ये वैल्यू लगानी है, बॉटम पे ये वैल्यू लगानी है, ठीक है। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैं मेरा ओरिजिन जो है, अगर आप देखेंगे ये जहां पर ये साइन बना है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करता हूँ ऊपर, तो ये करीबन 23.35, ये डिस्टेंस है 23.35, विच मीन्स ये हाइट मेरी 23.35। तो मेरा जो वैल्यू होना चाहिए वो गामा डब्ल्यू इंटू एच होना चाहिए 20 एट द 23.35। और मान लीजिए मैं 105 मीटर मान रहा हूँ वहां से, तो 105, मान लीजिए 103 मान रहा हूँ या 105 100 मान रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर ऊपर, तो 100 प्लस 23.35 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 123.35 पर वैल्यू होनी चाहिए 0। सिंपल, वही करते हैं। प्रेशर में जाना है तो गो टू द प्रेशर ऑप्शन, select the pressure option, select the pressure option, select the pressure option, change the type as space, 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 ऑब्जेक्ट में जहां पे टाइप लिखा हुआ है, change the type as space, change the type as space, okay, change the type as space, ओके। आप 2 मिनट ब्रेक, 5 मिनट ब्रेक।
Okay. 2 मिनट ब्रेक. स्टार्ट. ओके नाउ अब थोड़ा सा पेस लेते हैं क्योंकि हमको ये खत्म भी करना है. एटलीस्ट आज आज पूरा नहीं हो पाएगा. मतलब टारगेट तो मेरा यही था कि स्टैटिक एनालिसिस एटलीस्ट आज हो जाता, पर आई थिंक हमारा ऑलरेडी 4:30 हो गया. 4:30 अगर मैं 5:30 पकड़ूँ तो 1 घंटा है. 1 घंटे में 4 लोड लग जाने चाहिए, तो देखते हैं. ओके प्रेशर में जाएंगे. ओके तो प्रेशर सेलेक्ट द टाइप एज स्पेस. सेलेक्ट द टाइप एज स्पेस. सेलेक्ट द टाइप एज स्पेस. मतलब मैं कंप्यूटर की तरह नहीं बोलता, खाली बोलता चला जाऊंगा, समझाने में टाइम चला जाता. ठीक है. सेलेक्ट द टाइप एज स्पेस. ये जो सारे स्पेसेस हैं ये सेलेक्ट कर लेंगे. सेलेक्ट दी स्पेसेस. सेलेक्ट दी स्पेसेस. सेलेक्ट दी स्पेसेस. सेलेक्ट दी स्पेसेस. नाउ यू नीड टू डिफाइन सर्टेन फंक्शन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 10 kPa या 20 kPa डाल दूंगा, कोई भी वैल्यू डाल दूंगा, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो एक कांस्टेंट प्रेशर इस पूरे इन सारे फेजेस पे अप्लाई कर देगा. बट मुझे कांस्टेंट प्रेशर तो नहीं देना है. आई नीड टू अप्लाई द वेरिएबल प्रेशर. तो टू अप्लाई द वेरिएबल प्रेशर इन द मॉडल यू नीड अ बेस फंक्शन. तो क्लिक ऑन दिस बेस फंक्शन ऑप्शन. ये जो ग्राफ ऑप्शन है ना बेस फंक्शन के बगल में, ग्राफ जो दिख रहा है, select on this graph. Select on this graph. Click on this graph. Click on this graph. ओके जो फंक्शन जैसा ऑप्शन दिख रहा है. ओके नाउ सी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब मुझे वेरिएशन किस में देना है, मुझे वेरिएशन z में देना है. मुझे वेरिएशन z में देना है बिकॉज माई ग्रेविटी इज इन दी z एक्सिस. तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू z. आई विल चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू z. राइट में देखेंगे जो अभी नई विंडो ओपन हुई है उसके राइट में होगा, यहाँ पर ये वाले में यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू z. इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज z. ओके बिकॉज इनिशियली द इनिशियल सेटिंग में x था, मतलब वेरिएशन x में नहीं देना है, वेरिएशन z में देना है. लेट मी नेम इट एज FRL. मैं FRL नेम दे देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल FRL नेम दे देता हूँ. FRL नेम दे देता हूँ. ओके FRL नेम दे देता हूँ. ओके नाउ
z इक्वल्स टू, अगर मैं अब डायरेक्टली वैल्यूज भी डालता हूं तो z इक्वल्स टू 23.35, 23.35, द वैल्यू इज 1026। लेट्स से मैं 1000 ही डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1000, वैल्यू क्या है 1000 है। 1000 मीन्स क्या है 10 into 100, मतलब 23.35 लेवल पे फ्रॉम द ओरिजिन द वैल्यू इज 100। ओके, मतलब उसके ऊपर 100 मीटर का पानी है और मैं पानी का 9.81 नहीं ले रहा हूँ, आई एम डायरेक्टली टेकिंग इट एज अ 10। ओके, आप उसके हिसाब से भी डाल सकते हैं जो आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइडेड है, पर मैं तो डायरेक्टली अभी नॉर्मल वैल्यूज पे जा रहा हूँ। एंड 23.35 था, सॉरी वो 23.35, ओके। एंड 123.35 पर क्या है, 123.35 द वैल्यू इज 0। 123.35 वैल्यू क्या हो गई, 23.35 से 100 मीटर और ऊपर जहां पर पानी का लेवल है, जहां से पानी स्टार्ट हो रहा है, तो द वैल्यू इज 0, तो द वैल्यू इज 0, तो द वैल्यू इज 0, ओके, द वैल्यू इज 0, ओके। नेम दिस फंक्शन एज FRL, नेम इसको FRL जरूर कर दीजिए, नेम कर दीजिए FRL फंक्शन। ओके, हो गया ये डिफाइन किसका? हाँ, ये वाला अगर अभी नहीं ले रहे हैं, अगर आप चाहें तो नीचे भी, मतलब मान लीजिए अगर आप 20 मीटर नीचे भी जा रहे हैं उसके, तो आप चाहें तो उसमें फिर, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये वाला सिलेक्ट किया ना आपने इस तरीके से, मतलब अभी तो सारा सिलेक्ट किया ना। हाँ, वो ठीक, मतलब वो तो जो जहां पर भी लोडिंग अप्लाई हो रही है, मान लीजिए पानी यहाँ तक जा रहा है अंदर, मान लीजिए अंदर जा रहा है, तो पूरा आपको वाटर प्रेशर, क्योंकि पास्कल लॉ के हिसाब से पानी जहां भी जा रहा है, पास्कल लॉ क्या कहता है, एक स्ट्रॉ, एक केवल सीप होके भी पानी कहीं जा रहा है ना, और मान लीजिए 100 मीटर उसके ऊपर रिजर्वायर है और वो नीचे जा रहा है, वो मान लीजिए मैं एक पतला सा स्ट्रॉ डाल दूं 50 मीटर नीचे और उस स्ट्रॉ से उस पर वहां पर प्रेशर लगाऊं, तो सेम एक 100 + 50, 150 kPa का प्रेशर लगाएगा वो उतने पे। ठीक है, तो वो पानी भले ही पूरे रिजर्वायर जैसा हो या बिल्कुल पतले से स्टीप होके कहीं से प्रेशर लगाएगा, वो उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना वो वाटर उस बस ऊपर वाले लेवल से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर वो वाटर उस वाले ऊपर वाले लेवल से कनेक्टेड है जो आपने रिजर्वायर बना रखा है, वो ऑटोमेटिकली 150 किलोमीटर 150 मीटर हाइट का लोड ही लगाएगा। ठीक है, पास्कल लॉ के हिसाब से। और पास्कल लॉ के हिसाब से लोड किसी भी डायरेक्शन में हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब कोई भी कैसी भी सरफेस हो। ठीक है, अभी क्या है, अगर डैम ऐसे होता तो लोड ऐसे लगता, अभी डैम ऐसे है तो लोड ऐसे लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मान लीजिए अभी डैम ऐसे है तो लोड ऐसे लगेगा, तो पानी का लोड हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ही लगेगा। ठीक है, तो जो पास्कल लॉ बोलता है तो वो हमेशा उसी तरीके से लगेगा, शेप के हिसाब से अपने आप परपेंडिकुलर वो जज करेगा। ठीक है, तो क्लिक ऑन ओके, तो मान FRL फंक्शन डिफाइन कर दिया मैंने, ओके किया, वो बंद हो गया। वो अभी वो केवल वैल्यूज है, अगर आपको यूनिट चेंज करना है ना तो यहाँ से आप यूनिट चेंज कर लीजिए। हाँ, अभी मुझे जो आप देना पड़ेगा वो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूटन हो जाएगा, मतलब अगर 1 करूंगा तो केपी, जो भी यूनिट होंगी ना, अब आगे यूनिट देने पड़ेंगे। हाँ, अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा ना, अभी तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। ओके, नाउ मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है, मतलब कॉल मतलब वो जहां पे भी डिफाइंड हुआ है
उसको मुझे कॉल भी करना है कि वो यूज होगा। तो इन द बेस फंक्शन जहां पर ये नन लिखा आ रहा है, I can select this FRL load, I can select FRL load, I can select FRL load, okay, I can select FRL load, okay। अगर आपको ध्यान हो तो हमने जो फंक्शन में डिफाइन किया तो Z तो मीटर्स में था, बट देर इज अ वैल्यू देयर, ओके, वहां पर कोई यूनिट्स नहीं थे, देर इज नो यूनिट्स इन इट, ओके, बस खाली Z था, Z में यूनिट थे मीटर का और वैल्यू। अगर मैं वापस से आपको उसको दिखाऊं तो यहाँ पर मान लीजिए इंडिपेंडेंट ऐसे था वो, तो यहाँ पर तो यूनिट्स थे बट यहाँ पर वैल्यू था ओनली। तो आई नीड टू प्रोवाइड सर्टेन यूनिट। मान लीजिए मैं उस फंक्शन को एज अ फोर्स यूज कर रहा हूँ तो किलोन्यूटन की यूनिट्स आएंगी, उस फंक्शन को प्रेशर की तरह यूज करना हो तो केपीए की यूनिट्स आएंगी, और उस फंक्शन को किसी और तरीके से यूज कर रहा हूँ तो उसके यूनिट्स आएंगी। तो राइट नाउ आई एम यूजिंग इट एज यूजिंग दैट फंक्शन एज अ प्रेशर। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद दी 1। अगर आपने केपी किलोन्यूटन में यूनिट है तो 1 से मल्टीप्लाई करिए, न्यूटन में यूनिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई, ओके। ओके, ठीक है। लेट्स से आई नेम इट एज FRL। मैं इसको नेम दे देता हूँ, लोड सेट को नीचे आपने नेम दे दिया FRL, लोड सेट को नीचे नेम दे दिया FRL और ओके कर दिया। तो इस तरीके का लोड अगर मैं फ्रंट व्यू से देखता हूँ तो इस तरीके का लोड मुझे दिखेगा, दैट इज अ वेरिएबल लोड, दैट इज अ वेरिएबल लोड विच इज वेरिंग फ्रॉम हाइट 123.35, ओके, 123.35 से वो वेरी करता है और 23.35 तक आता है, ओके। कोई कोई क्वेश्चन? दिस इज फर्स्ट लोड। इसके हाँ, मैं अनडू करता हूँ। प्रेशर लोड लगाया मैंने, इन प्रेशर आई सिलेक्ट पेस, मैंने पेस सिलेक्ट किए, ओके। मैंने उसको नॉर्मल डायरेक्शन में रखा है, आई सिलेक्ट टाइप एज अ नॉर्मल। तो व्हाट सॉफ्टवेयर इज डूइंग राइट नाउ, कोई भी शेप होगी उसके नॉर्मल लगा देगा। देन आई डिफाइन द फंक्शन, फंक्शन क्या डिफाइन किया मैंने, एट 23.35 इट इज 1000 एंड एट 123.35 इट इज 0, ओके। तो वो फंक्शन मैंने कॉल किया, बट उस फंक्शन में देर आर ओनली वैल्यूज, ओके, देर आर नो यूनिट्स। जहां पे मैंने वैल्यू डिफाइन किया था वहाँ वैल्यू था, वहां पर कोई यूनिट्स नहीं था। तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द यूनिट। तो अगर मैं प्रेशर की तरह यूज कर रहा हूँ उसको तो प्रेशर का यूनिट आएगा, अगर मैं कल को उसको फोर्स की तरह यूज करूंगा तो फोर्स का यूनिट आ जाएगा, ओके। आई एम नेमिंग इट एज FRL, लेट्स से आई एम नेमिंग इट एज FRL, फुल रिजर्वायर लोड, ओके। और मैं ओके क्लिक करता हूँ तो इस तरीके, भाई सर रिपीट कर रहा हूँ,
ओके, FRL लोड लग गया। अगर आप अब ये सीख गए हैं तो आप ज़्यादा डिफिकल्टी बची नहीं है। हाइड्रोडायनेमिक लोड भी इसके जैसा ही है। हाइड्रोडायनेमिक की थोड़ी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। देखिए, एक्सेल एक मैंने आपको इनपुट दिया, जो आपको वो दिया था ना, उसमें एक एक्सेल भी था। अगर आप जो फाइल देखेंगे, ये एक्सेल मैंने बनाया है इसलिए, ठीक है, उसमें एक एक्सेल भी है। उसका लोड इंटेंसिटी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। आई नो ऑलरेडी आप सब जानते ही हैं, बट एक बार मेरा काम है वो बताना, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जो आईएस कोड के हिसाब से है, दैट इज पी वाई सी वाई अल्फा डब्ल्यू एच। ओके, सी वाई का जो सी वाई की जो कैलकुलेशन है वो CM/2 Y/H 2 - Y/H, ये इसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कल को मेरे डैम की हाइट मान लीजिए, अभी तो हम डायरेक्टली ये यूज कर लेंगे, ये गलत है पर हम यूज कर लेंगे। पर मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट कैसे होगा। इसमें मेरे को पहले तो CM चाहिए। CM इज 0.735 θ/90। ओके, CM इज 0.735 θ/90। तो लेट्स से मेरा डैम का जो एंगल है अगर वो 80 डिग्री है, तो दैट इज 0.735 80/90। ओके, पर मैक्सिमम केस में मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं θ/90 1 ले लेता हूँ, सो दैट इज अ क्रिटिकल केस। इट इज अ क्रिटिकल केस। So what I am doing, I am considering CM equals to 0.735, which is the maximum value of this. Okay, so CM is 0.735. तो CM कैलकुलेट हो गया, एक्सेल होगा वो। CM is 0.735। डैम का हाइट मान लीजिए 160 मीटर, कुछ 160 मीटर है फॉर एग्जांपल। इसमें ये जो एक्सेल है जो मैंने आपको दिया है, इसमें सारे कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। इसमें सारे कैलकुलेशंस दिए हुए हैं। मान लीजिए FRL के हिसाब से कर रहा हूँ, मान लीजिए FRL के हिसाब से कर रहा हूँ। तो मान लीजिए जो उसका कोऑर्डिनेट है वो 180 मीटर पे है। अभी आपका कितने पे है? 123.35 पे है ना। वो मान लीजिए कल को आपका 180, मतलब अगर मैं इसको चेंज भी करूं तो दैट इज, मैं इसका क्या करता हूँ, एक मिनट तक प्रॉपर शीट बना लेता हूं। ओके, ओके, तो ये, तो इट इज 123.35 या 123 पकड़ लेता हूँ एक अप्रोक्सीमेशन के लिए। ओके, तो 123। और यहाँ पे मैं आऊंगा, मान लीजिए मैं हर एक 2 मीटर का उसमें, हर एक 2 मीटर पे उसका वेरिएबिलिटी देता हूँ। तो ये हो गया 121, ये हो गया 119। ओके, और मुझे जाना है 23.3 तक। ओके, तो मैं यहाँ से गया, ठीक है, 2 मीटर थोड़ा कम हो गया, 4 मीटर, 5 मीटर कर देता हूँ, वरना बहुत देर 118। ठीक है, ये है। ओके, ये मेरा है 123 से शुरू हुआ और इट इज रीचेस टू 120। ओके, 23 ये क्या है, GTS-NX में, ओ या FE-NX में, सॉरी, सॉफ्टवेयर में कोऑर्डिनेट है। सॉफ्टवेयर में कोऑर्डिनेट है। हाइट क्या है इसकी, 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है। ठीक है, और ये 80 से लेके आपकी हाइट बैठती है आपकी, सॉरी, 100 मीटर हाइट आपकी बैठती है। हाँ, अभी टॉप से 0 दिया, y इज 0 नाउ फ्रॉम द टॉप। पर लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहा है वो जीटीएस, वो एफी सॉफ्टवेयर का कोऑर्डिनेट है। सॉफ्टवेयर का कोऑर्डिनेट है, मतलब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हो रही है, वाई की कैलकुलेशन ऊपर से, जो जो फॉर्मूले में यूज होता है वो ऊपर से यूज होता है, वाटर का डेप्थ, वो वाटर का डेप्थ है। अब यहां से मैंने मान लीजिए Y/H निकाल लिया। ठीक है, Y/H, डेप्थ ऑफ वाटर,
ओके सॉरी, एच इज टोटल हाइट, तो लेट से मैं इसमें 100 कर लेता हूँ। तो अगर आप उसका एक्सेल का कैलकुलेशन देखेंगे, उसमें अगर आप एक्सेल का कैलकुलेशन देखेंगे तो y बाई एच इज टोटल, h is the total height, so h is the 100, h is 100, then I calculate 2 minus y by h, then I calculate this y minus y by h, और तो मैंने इस कंप्लीट फॉर्मूले को इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो आई टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया इसका, तो ये वाला यहाँ पे हो गया। नाउ मैंने इसका cm वैल्यू, cm लेट से मैं मानता हूँ कि cm इज द मैक्सिमम वैल्यू विच इज 0.735। ओके, cm is maximum value which is 0.735। ओके, और मैं ये यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो cy इसका क्या होगा, cy हो गया ये, cy हो गया ये। ओके, cy आपका ये हो गया। देन इसमें एक और टर्म है, तो cy कैलकुलेट हो गया मेरा, ये cy था। देन नेक्स्ट टर्म इज अल्फा, अल्फा कह लीजिए, ए कह लीजिए, विच इज एक्सेलरेशन कोफिशिएंट विच इज अल्फा एच। तो मान लीजिए मैंने उसको मान लिया है 0.18, मैंने उसको 0.18 मान लिया है। तो ये जो प्रेशर कैलकुलेशन है दैट इज, अगर मैं इसका कैलकुलेशन देखूं तो इट इज ए एफ 9.81 इंटू ये जो 80 है, तो इसको मुझे 100 करना है। ओके, इसको मुझे 100 करना है। नहीं, हाँ ये तो या एक और तरीका है सॉफ्टवेयर के अंदर, देखिए अभी मैं उसको एज अ स्टैटिक लोड लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मैं इसको एज अ स्टैटिक लोड लगा रहा हूँ। कल को अगर आपको एक अलग टाइप इसको रिजर्वायर मॉडल करके करना, तो एक और चीज है, ये प्रेशर जनरेट कब होता है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जनरेट कब होता है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर जनरेट होता है जब नीचे से वेव्स आएंगी। ओके, वेव्स वेव्स उसके हिसाब से मूव करेंगे, उसके हिसाब से प्रेशर लगेगा उसको, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होने वाला फोर्स है जो कि सिस्टम के अंदर आएगा। या तो आप इसको मैनुअली कैलकुलेट करके वैल्यू डालिए, ठीक है, प्रेशर के फॉर्म में डालिए, नहीं तो एक और रिसेंटली हमने एक ऑप्शन ऐड किया है, वो हम इस वाले में तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन है। उसमें क्या करा है, हम स्लॉशिंग फ्लूइड करके एक मटेरियल है, स्लॉशिंग फ्लूइड करके इज द मटेरियल। इन केस ऑफ स्लॉशिंग फ्लूइड आप क्या कर सकते हैं, स्लॉशिंग फ्लूइड मॉडल कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे पास होगा, बैक एंड में, हाँ, हम्म, नहीं नहीं, इसकी देखिए वो अर्थक्वेक, वो फिर सिंपल इसमें नहीं चलेगा, आपको डायनेमिक एनालिसिस करना पड़ेगा। डायनेमिक, जब मैं रिजर्वायर डिफाइन कर दूंगा, तो रिजर्वायर डिफाइन करके नीचे से मैं डायनेमिक लोड, तो रिजर्वायर क्या करेगा, जब जब भी पानी इधर उधर होगा, जब पानी इधर जाएगा तो उसको मतलब लोड लगाएगा, जब इधर जाएगा तो उसको रोकेगा। मतलब पानी जब 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 आपका वॉल इस तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा तभी तो लोड लगेगा, रिजर्वायर की तरफ आएगा तब लोड लगेगा, अपोजिट जाएगा तो लोड नहीं लगेगा। तो उस केस में मतलब आप नहीं लगाएंगे, सॉफ्टवेयर तो लगाएगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको खींचेगा, सक्शन क्रिएट करेगा, प्रेशर कम करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ये हाइड्रोडायनेमिक कैलकुलेशन खुद नहीं करना, आपको खुद करके देखिए, एक केस है कि मैं खुद कैलकुलेशन करके लोड लगा रहा हूँ, एक है कि सॉफ्टवेयर में मैंने वाटर मॉडल कर दिया है, रिजर्वायर मॉडल कर दिया है और नीचे से अर्थक्वेक लगाया, वो अपने आप कर दिया। वो हो सकता वो हो सकता है, अगर आप देख, एक मिनट, मैं आपको ये तो हम, हाँ मतलब ये तो सिंपल हम अल्फा एच के हिसाब से कर रहे हैं, एक अल्फा के हिसाब से जो कोड बोलता है, जैसे कोड बोलता है ना अल्फा कैलकुलेट, जैसे हाइड्रोडायनेमिक कैलकुलेशन करने के लिए। नहीं तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो है, जैसे एक हमने बना रखा है, ठीक है, इसमें है मेरा, जैसे अभी ये अभी एक्सपेक्ट हो जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप पूरा रिजर्वायर मॉडल करेंगे। प्रेशर तो आपको वाटर का फिर भी लगाना पड़ेगा जो इसका एफआरएल लोड है, पर ये हाइड्रोडायनेमिक कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हाइड्रोडायनेमिक कैलकुलेशन में क्या होगा, जैसे जैसे अर्थक्वेक आएगा
वो ऑटोमेटिकली उस इंस्टेंसेस के लिए लोड को कम ज़्यादा करता रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है, उस पर आपको वो लेता है क्लॉसिंग फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पर अगर आपको याद हो, अगर हमने 3D में जब देख रहे थे 3D प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर 3D प्रॉपर्टी में एक क्लॉसिंग फ्लूइड करके आता है, वो हमने यूज नहीं। ये यूज तभी होगा जब हम डायनेमिक एनालिसिस, ठीक है, अगर हमको डायनेमिक एनालिसिस करना है तभी हम यूज कर सकते हैं। स्टैटिक केस में वो यूज नहीं, क्योंकि ये डायनेमिक लोड के लिए भी जनरेट होता है। FRL है, अपलिफ्ट है। हाँ हाँ हाँ, चाहता हूँ। हाँ ये सर, नहीं नहीं सर, इसमें क्या होता है ना, हर कोई अभी इंडिया में सारे लोग क्लॉसिंग फ्लूइड नहीं लगाते। कोई भी अभी आप देखेंगे इंडिया में अभी एक भी केस नहीं मिलेगा आपको इसमें किया होगा तो किया होगा। लोग रिजर्वायर मॉडल नहीं करते, लोग अभी भी इसी कैलकुलेशन को करके डायरेक्टली वहाँ से हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जो मैनुअल कैलकुलेट करके ही लगाते हैं। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन। हाँ, वो लोग अभी वही यूज करते हैं। अभी लोग क्लॉसिंग फ्लूइड मॉडल नहीं करते, तो पूरा फ्लूइड मॉडल कर दिया। पानी जब अपने आप वॉल इधर उधर हो रहा है, जब डैम इधर उधर हो रहा है, तब क्या लोड जनरेट कर रहा है, वो अभी लोग इतना नहीं करते। पर ये इस सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटीज हैं, वो आप कर सकते हैं। डायनेमिक एनालिसिस में आपको हाई डायनेमिक प्रेशर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप। ठीक है, अभी तो हम डायरेक्टली बोलेगा। तो ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा था कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको पता ही है, बट मेरा काम है बताना, तो मैं उसको बता रहा था कि आपको कैसे वो लगाना है। ठीक है, ये आपका जीरो से लेकर ये इसकी कैलकुलेट, मैंने इसलिए आपको शीट भी दे दिया कि आप अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें आप चेंजेस करके अभी अभी तो आप जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं वो कॉपी पेस्ट करके लगा दीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे मुझे हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगाना है, तो आई विल गो टू द प्रेशर ऑप्शन अगेन। कैलकुलेशन समझ गए हैं? हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर की सिंपल है, एक्सेल में भी दी हुई है पूरी, मे बी आप हर एक। हाँ दी है। करप्ट हो गई, मैं दे दूंगा वापस से अगर आप अभी अभी वापस ले लीजिएगा। अगर वो नहीं हो रही है तो फिर अभी इस लोड को, ठीक है, इस लोड को अभी रहने देते हैं, कल इसको लोड मैं वापस से कल फाइल डाल दूंगा, कल लगा ये मैं एक्सेल फाइल दे दूंगा आज। ठीक है, वो करप्ट मैंने डाली तो थी सकती है, वो भी करप्ट हो गई। ठीक है, ये हो गया ना। अब हाइड्रोडायनेमिक कैसे कैलकुलेट करते हैं, लगाने का तरीका देखिए, मैं आपको फिर भी अभी बता देता हूँ, उसको लगाना नहीं। ठीक है, कल भी वापस से रिपीट करूंगा। तो देखिए वही है, पेज सेलेक्ट किया, ये करूंगा, आपको अभी करना नहीं है, बस जस्ट देखना है। मान लीजिए मुझे फंक्शन डिफाइन करना होगा, तो इन केस ऑफ फंक्शन मैं जेड में जाऊंगा, हाइड्रोडायनेमिक करूंगा। ओके, यहाँ से डायरेक्टली ये सारे एक तो मुझे दो सेल चाहिए, एक ये चाहिए कंट्रोल C, इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और एक मुझे ये वाला सेल चाहिए। ठीक है, एक ये वाला सेल चाहिए। ठीक है, ये वाला सेल चाहिए, उसको यहाँ से कॉपी करूंगा डायरेक्टली, और सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो दिस इज कॉपी पेस्ट, तो दिस इज पैराबोलिक फंक्शन, जो पैराबोलिक फंक्शन आता है इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक को कॉल करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा, नेम हाइड्रोडायनेमिक दूंगा। ओके, नेम हाइड्रोडायनेमिक दूंगा और अप्लाई कर, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये अगर आप देखेंगे ये हाइड्रोडायनेमिक का है, पैराबोलिक तो ऐसे नहीं दिखेगा वो। ठीक है, वो ये हाइड्रोडायनेमिक का है और ये FRL। ओके, तो इस तरीके से आपके दो लोड। ठीक है, अभी ये छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट लोड पे जाते हैं। मान लीजिए मुझे अपलिफ्ट हो रहा है, वो तो और आपको और स्मूथ चाहिए कर्व, तो 1 मीटर ले लीजिए। ठीक है, वो तो अपने साथ से लो। आपको कर्व और स्मूथ चाहिए तो 1 मीटर, 1.5 मीटर, आधा मीटर, ये कुछ भी ले सकते। ये तो मैंने, मुझे ज्यादा एक्चुअल नीचे तक नहीं ले जाना था, तो मैं 4-5 मीटर ले लिया। ठीक है, ओके, नाउ द
इसमें मतलब इसमें बस स्मूथनेस की बात है, अगर आपको और स्मूथ चाहिए होगा तो उसके हिसाब से पर देखिए उसमें होगा क्या, सॉफ्टवेयर लगता नोड पे ही है। अगर मैं 1 मीटर ले भी लूँ लगेगा वो 4 और 8 पे ही। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैश मैंने कितना मीटर का बनाया, 4 मीटर का। ठीक है, तो मैं अगर 1 मीटर ले भी लूंगा, मान लीजिए मैंने 123 पे, मान लीजिए मैंने 123 पे 122 भी ले लिया, 122 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो 123 पकड़ेगा और वो 118 पकड़ेगा, क्योंकि नोड कहाँ किस लोकेशन पर पोजिशन में। तो अगर मेरा जिस हिसाब का फाइनल मैच होगा उस हिसाब से ले लूँ तो मेरे लिए और बेटर है वही वैल्यू। फाइनल ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वैल्यू मिलती है वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, वो खुद ही एडजस्ट करता है। वो नोड पोजीशन अगर उन दोनों के बीच में भी नहीं होगा ना, तो उन दोनों के बीच में जो इंटरपोलेशन वैल्यू बनेगी वो लेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज अपलिफ्ट लगाना। सिल्ट प्रेशर आप ऑलरेडी समझ गए, मान लीजिए मैं सिल्ट यहीं तक लगाना चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ तक ही सिल्ट अलाउड है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ, के गामा इंटू एच, के गामा इंटू एच। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन याद है, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन याद है तो उसमें फॉर्मुलेशन दिया हुआ था ये। तो इट इज वन, इट इज ये तो टोटल प्रेशर है, आपको डायरेक्टली लगाना है के इंटू गामा, गामा ऑफ द सॉइल इंटू के एक्टिव करके आप लगा सकते हैं। ओके, एक्टिव अर्थ प्रेशर करते हैं, विच इज इस तरफ लग रहा है। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं, अभी लगा नहीं रहा, बस सब बता रहा हूँ। हाँ सर। ओके, नाउ सेकंड लोड लगाते हैं, थर्ड लोड, मतलब सल्फेट तो ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ स्टार्टिंग। ओके, अब देखिए अगर ये आपको फाउंडेशन यहाँ पर कुछ इम्प्रूवमेंट या कंक्रीट बनना है तो लोडिंग अलग, तो आपकी देखिए अब दो दो तरीके की चीजें होंगी। अगर मेरा डैम यहीं से स्टार्ट है, मान लीजिए मेरी कंक्रीटिंग यहीं से है, तो इसके नीचे से जो पानी सीप करेगा वो प्रेशर लोड लगाएगा। बट अगर मैंने ये यहाँ तक माना है तो मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मेरा पानी नीचे से सीप होगा, मेरे को जो प्रेशर की वैल्यू है वो बढ़ानी पड़ेगी, वो 123.35 के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो दैट इज 123.35 मल्टीप्लाई बाय
10 अगर मैं करता भी हूँ तो 1233 का नीचे प्रेशर देना पड़ेगा। इस देखिए नीचे वाले इस पर लगेगा, नहीं यहाँ पर अगर मैं यहाँ तक कंक्रीट भर रहा हूँ, अगर मैं यहीं तक कंक्रीट भर रहा हूँ तो यहाँ तक लगेगा, हाँ वहाँ पे लगेगा, ठीक है वहाँ पे लगेगा। तो दोनों केस में से आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो ये मान सकते हैं या ये, चलिए ऊपर ही मान लेते हैं, ये मानते हैं कि ऊपर ही है, नीचे वाला रॉक ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर हम वो कर ही नहीं रहे, हम नीचे वाला रॉक ही मानते हैं। ओके, तो उसके लिए पहले आप अपने मैश हाइड कर लीजिए, ये मैश हाइड कर लीजिए, पर ये फिर दिक्कत करेगा। ठीक है कोई नहीं, मैं कर लूँगा, कैलकुलेशन मैं बता दूंगा। ट्यूटोरियल में क्या है, नीचे लगाया हुआ है, अगर आप ट्यूटोरियल में देखेंगे तो वो नीचे लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है नीचे लगाया हुआ है। हाँ ठीक है, तो अभी वो हम नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, मटेरियल अभी रॉक का ही है नीचे, अभी रॉक का नीचे जब मैश किया था हमने तब मटेरियल जो लिया था वो रॉक का ही लिया था। अगर आप उसको चेंज करना है, मेरा जो आइडिया था, मतलब जब ये ट्यूटोरियल थोड़ा पहले बनाया था, तो इस ट्यूटोरियल में क्या था कि मैं रॉक के प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कंक्रीट में चेंज कर रहा था। ठीक है कि मैं कंक्रीट नीचे फिल करूंगा, 10-20 मीटर नीचे कंक्रीट फिल करूंगा, और उसको मतलब नीचे मैं मान रहा था कि मुझे नीचे जाना है, मुझे साइड से लॉकिंग भी चाहिए डैम का। ठीक है, तो ये इस तरीके से बना दिया था। मान लीजिए मुझे ये एरिया ग्राउट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एरिया ग्राउट करना है, तो ये ग्राउटिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कल को आपका प्रॉपर्टीज ये वाले वीक हैं, ये वाले प्रॉपर्टीज वीक हैं, और ड्यूरिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजिंग आप क्या कर रहे हैं, इस वाले एरिया को ग्राउट कर रहे हैं किसी और प्रॉपर्टीज से, किसी और प्रॉपर्टीज में, हाँ फाउंडेशन, हाँ ग्राउट करके, तो कोई जिस जिस जितने भी एरिया में डाल रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आप, ठीक है वहां पर कोई दिक्कत, मॉडल हो रहा है ना, ताकि उस तरफ ठीक है। तो आपके देखिए दोनों चॉइस हैं। अगर आप देखिए, अब आपको डिपेंड करता है आप मॉडल कैसे कर रहे हैं। अगर आप नीचे तक कंक्रीट मान रहे हैं तो आपको कंक्रीट के डॉट फेस पे लगाना पड़ेगा, जहाँ पे भी रॉक कंक्रीट का इंटरफेस है वहां पर आपको वो सीपेज प्रेशर लगाना पड़ेगा और उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, आप हाँ हम्म, हम्म। हाँ ये भी कर सकते हैं। अच्छा नहीं, आप कह रहे हैं यहाँ से पूरा, अब तो पूरा मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, और तो बेस से मॉडल, हाँ तो बेस से लगाइए हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक तो फिर इसमें कम यहाँ पे लगेगा ही नहीं, आएंगे ना पूरा वो इतने एरिया में आएगा। तो अगर आप डैम को यहाँ से मॉडल करें, हाँ तो वो डैम को अगर मैं यहाँ से मॉडल करूँ फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा, इसकी ज्योमेट्री ऐसे करूँ, अब ज्योमेट्री को यहीं से बनाना। हाँ अभी ज्योमेट्री नहीं बना है, अगर मुझे मुझे अगर ज्योमेट्री अगर वैसे बनाना है तो मुझे ज्योमेट्री को फिर यहाँ पे बनाना है, कॉम्प्लिकेट नहीं होगा ना। अब टोटल हाइट हो गया, बेस्ट फाउंडेशन हाइट हो गया, हाँ वहाँ से टोटल वाटर हो जाएगा, अकॉर्डिंगली लोड आएगा। हाँ तो अभी नीचे से लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी जो मतलब ये मॉडल वैसे रहता है तो ज्यादा इजी होगा। नहीं अपलिफ्ट प्रेशर हम नीचे, मान लीजिए मैं ऐसा मान लेता हूँ बॉटम से लगाएंगे, हाँ अपलिफ्ट में यहाँ से लगा देता हूँ, तो बॉटम पे लगा देता हूँ, फिर मेरे को, पर ये डैम का फिर बेस बढ़ाना पड़ता है। मैंने अभी डैम का बेस, फिर ये ज्योमेट्री, हाँ वो जो ये तो लर्निंग पर्पज है, मैंने ज्योमेट्री, अगर मान लीजिए मुझे इसको वैसे करना है तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया मान लीजिए मैं ये इतना बड़ा तो नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ से इस तरीके से, हाँ मान लीजिए इस एंगल को मैं यहाँ तक इस तरीके से ले जाऊँ, और इस एंगल को यहाँ से ऊपर, ठीक है वो ठीक है, वो मैं कभी, हाँ वो पर बॉटम पे प्रेशर लगाएंगे और यहाँ पे हाँ वो तो कर सकते, वो मैं कर, ठीक है हाँ नहीं वो तो ये इस ट्यूटोरियल के हिसाब से गए इसलिए ऐसा था। अगर देखिए मुझे अगर करना होता तो ये ऐसे ही होता कि यहाँ से
अगर रियल कमांड में एक ऑप्शन है ना कि यू हैव टू चेंज द कंक्रीट। हाँ कॉन्क्रीट नहीं, तब भी थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज ये फिर कटिंग जैसा हो जाएगा। मान लीजिए ये वाला पार्ट इनिशियली तो रॉक का था, इनिशियली जो वाला पार्ट था वो रॉक का वो तो लगा दो, लेकिन मॉडिफाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आप हाँ हाँ ये नहीं, ये तो क्रिटिकल ना, नहीं आप सारे ब्लॉक को जोड़ेंगे तो फिर आपको कंप्लीट मॉडल बना, उसमें आप क्या करते हैं, 2-3 ब्लॉक मतलब फिर 2-4 ब्लॉक की एनालिसिस करते हैं, एक क्रिटिकल ब्लॉक एक हाँ हाँ उनको अगर आपको वैसे करना होगा तो फिर अगर आपको पूरा डैम मॉडल करना है वो तो अलग से होगा, सारे ब्लॉक मॉडल करना है। अगर आपको एक एक ब्लॉक मॉडल करना है तो एक एक ब्लॉक में आप क्या करेंगे, क्रिटिकल ब्लॉक लेंगे, एक में डीपेस्ट ब्लॉक ले लेंगे, एक में शैलोएस्ट ब्लॉक ले लेंगे, एक में मिडिल ब्लॉक ले लेंगे, तो आपको सारे ब्लॉक का आइडिया हो जाएगा। हाँ तो ठीक है, एक एक लो अपलिफ्ट लोड लगा लेते हैं, इससे बॉटम पे ही लगा लेते हैं, ठीक है, नीचे यहीं पे लगा लेते हैं। देखिए मेरा जो आपको बताना है वो ये बताना है कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पर लगाना है, ठीक है, लोड कैसे लगाना है, दो चीजें मुझे आपको बतानी है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं और कहाँ पर लोड कैसे लोड लगाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। अब आपकी ज्योमेट्री शेप बदल जाए, ज्योमेट्री शेप के हिसाब से वो चीज चेंज होती जाएगी। अभी मैंने ऐसा लिया है, ये ज्योमेट्री शेप ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अगर मुझे ब्लॉक को नीचे लेके जाना है तो ब्लॉक को ऐसा लेना है। मैंने ये आई थिंक मुझे ये याद है, सीडब्ल्यूसी में हमने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की थी, तब सीडब्ल्यूसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तो सीडब्ल्यूसी ने ये ब्लॉक हमको दिया था, तो उनको ट्रेन होना था, उनके इंजीनियर को हमको ट्रेन करना था, तब उसके रिगार्डिंग। हाँ वही, तो उसमें जब पहली बार जब ट्रेनिंग हुई थी ना, तब तब ये मतलब एक उन्होंने सैंपल ब्लॉक दिया था, उसके हिसाब से हमने एनालिसिस करा था। उन्होंने ग्राउट करवाया था नीचे वाले एरिया को ना, कि ये वाला एरिया पूरा ग्राउट करेंगे और इसको 10 मीटर और 20 मीटर नीचे जाएंगे। तो फिर मैंने उसको, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो मैं वो मॉडल आपको डे 1 पे नहीं करा सकता कि ग्राउट भी कर दूं, उसके बाद उसमें कॉन्क्रीट भी नीचे डाल दूं, तो हाँ तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा, डे 1 पे कराना वो एक्सरसाइज मुश्किल है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मैंने उस वाले से ही सिंपल एक ट्यूटोरियल बनाया, वो प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप, क्योंकि पहले आप डे 1 पे यूज करें, डे 1 सॉफ्टवेयर चलाना ही मुश्किल है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं ये, ओके। अब मान लीजिए मुझे अपलिफ्ट लोड लगाना है, एटलीस्ट दो दो लोड और लगा लेते हैं, उसके बाद आज का डे वाला करते हैं। कल हमारा फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि हमको डायनेमिक भी करना है। डायनेमिक करने में, अब मॉडलिंग में डायनेमिक में कुछ नहीं करना है, डायनेमिक में अब मुझे ज्योमेट्री वोमेट्री नहीं बनना, डायरेक्टली मुझे चीज़ें आपको बताते जाना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है, तो उसमें टाइम नहीं जाएगा कल हमारा। तो द सेकेंड इज, अब मान लीजिए मुझे इस पर अपलिफ्ट लोड लगाना है और मैं यहीं से लोड लगाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे पे ही लगा रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड द मैश, फर्स्ट हाइड द मैश, फर्स्ट हाइड द मैश, फर्स्ट हाइड द मैश, मैश हाइड कर देता हूँ जिससे कि आपको इजी हो जाए। Okay, hide the mesh, then select this block, select this bottom solid, right click on it and hide it. I am again repeating the step, hide the mesh, hide the mesh,
select bottom, select bottom solid, right click on it and hide. Select the bottom solid, right click on it and hide. ओके, हाइड दिस। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका ब्लॉक, क्योंकि मुझे यहाँ पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, इस बॉटम पे लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, मान लीजिए इस बॉटम पे लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा है ये पोर्शन, इसको थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। मान लीजिए इस पोर्शन पे लगा रहा हूँ। ओके, हो गया यहाँ तक? ठीक है, राइट क्लिक करके हाइड करना। अगर आप देखेंगे, इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक कीजिए, हाइड करिए। नाउ वी नीड टू डिफाइन प्रेशर अगेन। तो एक प्रेशर डेफिनेशन है, अगेन फेस सिलेक्ट करते हैं, इसको रोटेट करके देख, इसका बॉटम वाले फेसेस सिलेक्ट कर लेंगे, रोटेट करेंगे, इसके बॉटम वाले फेसेस सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर आपको लोड लगाना है। सिलेक्ट द बॉटम फेसेस, select the bottom faces. Okay, select the bottom faces. हाँ, प्रेशर में select the bottom faces. टाइप एज फेस नहीं करेंगे तो वो लेगा नहीं, तो select the type as face, select the type as face. Select the type as face. Then now you need to define the base function. Okay, कोई क्वेश्चन बाकी? Now you need to define a base function. Okay, तो बेस फंक्शन देखिए, अब यहाँ पर मुझे एक बेस फंक्शन बनाना है जो कि एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल होगा। जो मेरा अपलिफ्ट है वो एक्स डायरेक्शन में वेरिएबल लोड है। ओके, अगर मैं उसकी वैल्यूज देखूं जो हमने ट्यूटोरियल में आपको प्रोवाइड कर रखी है, नॉर्मल अपलिफ्ट, अगर नॉर्मल अपलिफ्ट को देखूं तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, द एट एक्स इक्वल्स टू जीरो द वैल्यू इज सेम, लेट्स से 1000। एक्स इक्वल्स टू जीरो द वैल्यू इज 1000। अभी मैं वही प्रोवाइड कर रहा हूं, पर आपको समझना पड़ेगा वो चेंज होगी, उसको 20 मीटर के लिए चेंज होना चाहिए, 1200 आना चाहिए एटलीस्ट वैल्यू, 1230 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे 1230 के आसपास वैल्यू आना चाहिए। अभी मैं वही ले रहा हूँ, पर आपको समझना है कि क्योंकि मैं डैम में नीचे आ गया हूँ, मेरे अपलिफ्ट की वैल्यू जो स्टीप होके पानी नीचे जाएगा वो उतना ही प्रेशर लगाएगा इस एंड, ठीक है? तो वो आपको उतनी ही वैल्यू लगानी है। तो दैट इज वो आपको एक मतलब ये होनी चाहिए आपकी 1235 के आसपास। ओके, क्योंकि 123.35 था, तो 1235 एटलीस्ट आना चाहिए। ओके, पर अभी हम वही ले रहे हैं। देन द नेक्स्ट वैल्यू इज 70। मान लीजिए मैं मेरा जो डैम का विड्थ है वो 194 मीटर का है, तो 194 मीटर, 194 पॉइंट कुछ है शायद, मान लीजिए 194.6 है, 194.6 है, तो 194.6 मान लीजिए वो 10 मीटर हाइट है, वहाँ पे 10 या 5 मीटर हाइट है, ठीक है? वहाँ पे 5 मीटर या 10 मीटर, जो भी 5 मीटर हाइट है, तो 5 टू द 10, तो इट इज 100। ओके, 100 आएगा, 50, 10, 5 मीटर हाइट है तो 50 आएगा, तो 5 मीटर हाइट है तो 50 आएगा। नाउ एक मुझे मिडिल वैल्यू भी देना है, जो गैलरीज की लोकेशन है, तो वहां पर मान लीजिए
गैलरीज की लोकेशन अगर मैं यहाँ से नाप मेजर करूंगा तो इट इज अराउंड 70 मीटर आप पाएंगे, ठीक है। तो 70 मीटर पे जो वैल्यूज है वो मान लीजिए मुझे देनी है, तो दैट इज 50 प्लस, अगर आपको इक्वेशन याद है तो वो ये है, तो दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच डैश इधर वाला प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू एच माइनस गामा डब्ल्यू, तो 1000 माइनस 50 divided by 3 plus 50. So it is around 366. Okay. So it is around 366. So the value is around 366. Okay. So at x equals to 17, the value is 366. तो इस तरीके से आपका ये वैरी होगा, तो इस तरीके से आपका वैरी हो जाएगा। समझ, इसमें कोई एक एक्सट्रीम हाइट, एक अपस्ट्रीम का हाइट है, एक डाउनस्ट्रीम का हाइट है। अपस्ट्रीम का हो गया गामा डब्ल्यू इंटू एच, तो दैट इज 10 इंटू 100 मान लिया मैंने, जबकि 1235 होना चाहिए। ओके, 1235 होना चाहिए। देन डाउनस्ट्रीम का मैंने माना कि 5 मीटर का हाइट है, तो दैट इज 5 इंटू 10, तो इट इज 50। और जो 70 मीटर, जो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से मेजर करूँ ओरिजिन लेवल पे, तो 70 मीटर के आसपास आती है गैलरी। तो 70 मीटर पे मैंने माना दैट इज गामा डब्ल्यू इंटू एच वन प्लस 1/3 ऑफ गामा डब्ल्यू इंटू एच थ्री एच माइनस एच डब्ल्यू। ओके, तो 1000 माइनस 50, 950 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 50। ओके, तो इट इज 366। इसको मैं मान लीजिए अपलिफ्ट नेम दे देता हूँ। और जो वेरिएबल है वो एक्स का है, जो वेरिएबल है वो एक्स में है। ओके, जो वेरिएबल है वो एक्स में है, मैं ओके कर देता हूँ। सिंपल अब वही करना है, उसको कॉल करना है यहाँ पर, उसको यहाँ पर बेस फंक्शन में उसको कॉल करना है। वो फंक्शन डिफाइन है, कॉल नहीं। okay? और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, अपलिफ्ट को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, और आप इसको अपलिफ्ट नेम दे सकते हैं, आप इसको अपलिफ्ट नेम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अगर मैं फ्रंट व्यू में देखूंगा तो यहाँ से इस तरीके से वैरी करता हुआ है। मतलब आप ज्यादा नहीं है, वो ट्यूटोरियल के हिसाब से।
इसमें कोई डाउट? देखिए अब हमारे पास हो गया, हाइड्रोडायनामिक हम लगा नहीं रहे, FRL हो गया, एक स्यूडो स्टैटिक बचता है बस। मान लीजिए पर स्यूडो स्टैटिक हम अर्थक्वेक तो लगा ही नहीं रहे, हम स्यूडो स्टैटिक। तो एक और एडिशनल लोड हो सकता है, वो होता है टिल्ट। मान लीजिए मेरे को कल टिल्ट का प्रेशर लगाना है, तो कुछ नहीं करना है, के गामा ऑफ द सॉइल इनटू एच, जितने हाइट तक टिल्ट है और जहां तक वो टिल्ट है उतने तक सिलेक्ट करके वो करता है, ठीक, जहां पर उतने तक वही लोड है। तो लोड का भी हो गया, बस एक टिल्ट प्रेशर बचा, वो हमने छोड़ दिया अभी, ठीक है, वो अभी हम नहीं, ठीक है। तो ये मेरे टोटल, अब बाकी लोड और भी हो सकते हैं थोड़े, मान लीजिए कोई सरचार्ज यूडीएल है, मान लीजिए किसी ब्लॉक के टॉप पर कोई बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, या आप कोई रोड पे चल, मान लीजिए उसके ऊपर कोई मशीन चलती है, उसका लोड है, तो वो गैंट्री वगैरह का लोड है, तो वो जो भी आपको लोड, क्रेन लोड है, गैंट्री लोड है, वो आपको जो भी एडिशनल लोड लगानी है वो आप लगा सकते हैं, मतलब जो ऑन द साइड आ रहे हैं। ऐसा कहीं पर अभी कोड में तो नहीं लिखा है कितना लोड लगाना है। सरचार्ज के लिए तो चलो लिखा भी है कि 1.2 के हिसाब से लगा सकते हैं, मीटर के हिसाब से उसमें लगता है, उसमें लोड लगता है, उसमें वो हम लगा नहीं रहे हैं। उसमें दो कंडीशंस बनते हैं। देखिए स्पिलवे के अंदर भी एक लोड लगता है। ओएफ ब्लॉक एनओएफ ब्लॉक में यही फर्क है। एनओएफ ब्लॉक में क्या है, लोड बाहर ही बाहर है, मान लीजिए इस कॉन्क्रीट फेस पर ही है। जब ओएफ ब्लॉक की एनालिसिस कर रहा हूं तो पानी का लोड दो कंडीशन में डिफाइन होगा। एक बार गेट जब क्लोज्ड है, तो गेट क्लोज्ड है तो कितने कितने ट्रिब्यूटरी एरिया में वो लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। और एक गेट जब ओपन है तो कितना हाइट ऑफ दी वाटर उसके ऊपर से गुजरता है, ठीक है, मान लीजिए कितने हाइट के उस पर पानी से गुजरता है, तो वो एक एडिशनल लोड आपका स्पिलवे सेक्शन में लगेगा। तो ये दो, जब ओएफ ब्लॉक की एनालिसिस कर रहे हैं तो दो लोड एनओएफ के हिसाब अलग हो जाते हैं। और उसमें भी गेट क्लोज में भी आपको पता होना चाहिए कि पानी कितना भरता है, किस एरिया में भर जाता है, तो उतने ही एरिया ऑफ दी एलिमेंट में आपको लोड लगना है, ठीक है। ये दो आपके लोड थे। एक बाउंड्री कंडीशन और लगा रहे थे, उसके बाद कॉल उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको आपको कैलकुलेट करके एज अ प्रेशर या एज अ पॉइंट लोड करके लगाना पड़ेगा। पॉइंट लोड, अगर देखिए गेट अभी जो, जब गेट खुला है तब तो ठीक है, पानी सीधा जा रहा है, ठीक है, गेट खुला है सीधा पानी जा रहा है। जब गेट बंद है, तो गेट बंद है तो एक तो पानी भर रहा है, देखिए एक पानी जो भर रहा है, गेट ऐसे बंद है मान लीजिए, तो एक तो पानी यहाँ पर जहाँ इकट्ठा है वहां नीचे लोड लगा रहा है, साइड वाले वॉल्स पे लोड लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, इधर भी लगा रहा है, और इस गेट पे कांस्टेंट लोड लगा रहा है। गेट तो हमने मॉडल नहीं किया है, तो गेट तो हमें मॉडल नहीं किया है, तो उस केस में आपको गेट का वेट प्लस जो एडिशनल जो ये लोड आएगा, वो जो गेट जहां पे हुक है, जहां हुक्ड है वहां पर आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर लगा सकते हैं, मान लीजिए पूरे में प्रेशर के फॉर्म में लगा सकते हैं, या अगर वो किसी तरीके से हुक्ड है तो वहां पर पॉइंट लोड के फॉर्म में लगा सकते हैं। तो जब पॉइंट लोड के फॉर्म में लगाएंगे तो वहां पर स्ट्रेस थोड़े कंसेंट्रेटेड होंगे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या ग्रेड और थोड़ा बहुत कुछ अलग से प्रोटेक्शन देना है या नहीं देना। तो ये दो कंडीशन आपकी ओएफ ब्लॉक्स में बढ़ जाती है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जब गेट खुला है तो एक पानी जो स्पिलवे से पास कर रहा है वो कितनी हाइट पे होगा, कितना हाइट होगा वो लोड लगाना पड़ेगा पूरे स्पिलवे सेक्शन पे, स्पिलवे पे भी लगेगा, साइड वाले वॉल्स पे भी लगेगा। और जब गेट बंद है तो पानी बंद होने की वजह से कितना भरा हुआ है वो नीचे लगाएगा, इधर लोड लगाएगा और गेट पे लगाएगा। गेट का खुद का वेट और गेट पे लगने वाले लोड का आपको कैलकुलेशन करके, मैनुअल कैलकुलेशन करके वो वहां पर एज अ पॉइंट लोड या एज अ यूडीएल लोड और एज अ प्रेशर लोड, जैसे भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे आपका गेट है उसके हिसाब से आपको लगाना। तो ये आपके कुछ एडिशनल लोड्स हैं। अब इसी में कॉम्बिनेशन बनते हैं बहुत सारे, वो उसमें हम नहीं जा रहे। अकॉर्डिंग टू द कोड इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन है कि जेड लोड का 1.3 लेना है, कोई कॉम्बिनेशन मतलब किसी भी आईएस कोड के हिसाब से जा रहे हैं, तो अर्थक्वेक के हिसाब से जब लोड का, तो ऐसे 20-30 लोड कॉम्बिनेशन है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, उतना डिजाइनिंग में नहीं जा रहे हैं हम। मैं आपको केवल लोड्स बता रहा हूँ किस तरीके के क्या क्या लोड हो सकते हैं, ठीक है। कोई गैंट्री ऊपर से जा रही है, क्रेन लोड है, कोई बिल्डिंग है, कोई छोटा सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है,
कोई मान लीजिए कोई व्हीकलर मूवमेंट की वजह से एक स्टैटिक लोड आपको लगाना है, तो जो व्हीकल मूव करते हैं उनकी वजह से क्या स्टैटिक लोड होगा, वो आप यूनियन पे। हाँ। जी। हाँ, वो सारा है, वो सारे लोड आपको एज अ पॉइंट लोड आपको पता होने चाहिए। ये हम जो मैंने बताया है, ये कोड जिस हिसाब से बताता है 5 से 2 लोड जनरल लोड है, उसके हिसाब से मैंने वो लोड लगाया। ठीक है। अब इसमें एक चीज और बचती है, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन तो और लगा बता देता हूँ, उसके बाद डे कॉल कर। नाउ बाउंड्री कंडीशंस के लिए वी हैव अप्लाइड 3 स्टैटिक लोड, FRL, uplift, and well as the self load. We have not applied tilt pressure. We have not applied any crane load and all. Okay. So now the boundary condition. So boundary condition is constraint in the boundary group. In the boundary group, go to the constraint option. Go to the constraint option. Go to the constraint option. In the boundary group, go to the constraint option. देखिए ऑटो में अब दो चीजें, डिजाइनर दो तरीके से एनालिसिस करते हैं इसकी। आइदर वो इस पूरे ब्लॉक को कैंटिलीवर ब्लॉक मान लेते हैं, जो डैम ब्लॉक है वो कैंटिलीवर ब्लॉक है, मतलब उसकी मूवमेंट ऐसे भी हो रही है और ऐसे भी हो रही है। या आप साइड से रिस्ट्रेंट कर सकते हैं कि ब्लॉक की मूवमेंट ऐसे तो अलाउड है, ऐसे अलाउड नहीं। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। आइदर आप माने कि ये ब्लॉक इस तरफ मूव नहीं करेगा, मतलब ये ब्लॉक ऐसे मूव नहीं करेगा और ऐसे ऐसे मूवमेंट रहेगा। हाँ, इन द वाटर फ्लो फ्लो डायरेक्शन में मूव करेगा। तो एक तो ये है। कई डिजाइनर और क्रिटिकल जाते हैं, तो व्हाट दे डू, दे प्रोवाइड दे टेक दिस सेक्शन एज अ कैंटिलीवर सेक्शन, कि अब ये ब्लॉक कहीं पर भी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है बिकॉज ऑफ द लोडिंग। तो देखिए दोनों चीजें पॉसिबल है। तो अब बहुत इजी है बाउंड्री लगाना। अगर मैं कंस्टेंट में ऑटो में जाके डायरेक्टली अप्लाई कर देता हूँ, आप स्क्रीन पर देखिएगा, डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ तो सॉफ्टवेयर क्या करता है। अब आपको बस ये बाउंड्री समझा देता हूँ, उसके बाद हम, ठीक है। सॉफ्टवेयर की एक ऑटोमेटिक सेट, जब सॉफ्टवेयर में ऑटो बाउंड्री, देखिए यहाँ पर बाउंड्रीज लगाने के बहुत तरीके हैं। बेसिक में जाना है मुझे, फिक्स, रोलर, पिन, जहाँ पे भी लगाना है मैं नोट सेलेक्ट करके पिन लगा। सेकेंड, एडवांस बाउंड्री कंडीशन। एडवांस बाउंड्री कंडीशन में क्या है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को अलग से बाइफिकेट कर दिया। तो मुझे मान लीजिए इधर TX रिस्ट्रेन करना है, इधर TX रिस्ट्रेन करना है, तो मैंने TX सेलेक्ट कर लिया। इधर बॉटम में TX, तो TX सेलेक्ट कर लिया। मुझे बॉटम में TX, TY, TZ तीनों देना है, तो TX, TY, TZ दोनों दे दिया। तो इस हिसाब से जाएगा। एक ऑटो बाउंड्री कंडीशन। ऑटो बाउंड्री कंडीशन में सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने हिसाब से एक्स डायरेक्शन में रिस्ट्रेन कर, जो भी वॉल एक्स डायरेक्शन में उनको एक्स डायरेक्शन में रिस्ट्रेन कर देता है, जो वॉल वाई डायरेक्शन में उनको वाई डायरेक्शन में रिस्ट्रेन कर देता है। और एक मॉडल को फिक्सिटी देने के लिए बॉटम पे एक्स वाई जेड तीनों में रिस्ट्रेन। ओके, तो दिस इज द कंडीशन। तो software provide x direction restraint, software provide y direction restraint, and software also provide x, y, z restraint at the bottom to provide a fixity in the model. Okay. अब इसमें एक कंडीशन है, अभी मैंने क्योंकि डैम ब्लॉक और ये वाला जो बॉटम का ग्राउंड ब्लॉक है ये एक ही विड्थ के बनाए हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन रिस्ट्रेंट, वाई डायरेक्शन रिस्ट्रेंट लगा, मतलब अभी ऐसे मूवमेंट अलाउड है, ऐसे अलाउड नहीं। पर कल को अगर आपको ये नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली यूज करना चाहते हैं, बट फिर भी आप इस डैम को फ्री करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मैं अंडू करता हूँ एक स्टेप, कंट्रोल Z दबाता हूँ, ये कंसीडर ऑल मैच सेट ऑप्शन हटा के आप ये वाला मैच सेट और ये मैच सेट सिलेक्ट कर लीजिए। आप सॉफ्टवेयर इसी पे लगाएगा और ऊपर नहीं लगाएगा। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। हमें एक्स डायरेक्शन की वॉल, अब देखिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जा सकता है, सॉइल ब्लॉक है, रॉक ब्लॉक है, ऐसे वैसे ऊपर नीचे जा सकता है। बट ये वाले ब्लॉक को इधर जाना अलाउड नहीं है मॉडल में, ना इधर जाना अलाउड है, क्योंकि रिस्ट्रेंट भी तो करना है ना, वरना अगर कल को अभी तो ये रॉक है तो खड़ा हो, मतलब ये रह भी सकता है, स्टैंड रह भी सकता है। कल को अगर ये सॉइल होता
और मैं इधर से इसको इधर रिस्टेंड नहीं करता तो ये सॉइल ऐसे गिर जाता, मॉडल कोलैप्स कर जाता। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से रिस्टेंड कर दिया। तो सॉइल को ऐसे नहीं हो सकता सॉइल, और सॉइल ऐसे ऐसे मूव करता। सेम वाई डायरेक्शन में क्या किया, सॉइल को इधर से रिस्टेंड किया, इधर से इस तरफ से। तो सॉइल ऐसे ऐसे नहीं हो सकता और सॉइल ऊपर नीचे हो सकता। बट इस मॉडल को एक फिक्सिटी भी तो देनी है, नहीं तो किलोमीटर भी भाग जाएगा। अगर मैं इस मॉडल को फिक्सिटी भी तो देनी है, एक जगह रुका तो रहे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बॉटम को टी एक्स टी वाई टी जेड डिस्टेंस कर दिया। मतलब बॉटम अब कहीं नहीं हिलेगा, बॉटम वही है, सबसे सबसे नीचे। ठीक है, हाँ ये मान लीजिए बिल्कुल फिक्स कर दिया है ये, क्योंकि वो ग्राउंड नीचे कनेक्टेड है ना, वो ग्राउंड तो कंटिन्यूस ग्राउंड है। मैं हाँ मैं मान लीजिए, मैं आप वो समझिए कि मैं ग्राउंड का 100 मीटर का हिस्सा ही मॉडल कर रहा हूँ। 100 मीटर फ्री थोड़ी ना है, 100 मीटर नीचे वाले ग्राउंड से कनेक्टेड है, 100 मीटर नीचे वाले ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मुझे इस मॉडल को फिक्सिटी तो देना ही है। तो मैंने क्या किया, नीचे टी एक्स टी वाई टी जेड तीनों रिस्टेंड कर दिया। वहीं पर साइड्स में एक्स डायरेक्शन में रिस्टेंड किया एक्स को, और वाई डायरेक्शन में रिस्टेंड किया वाई को। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कर लेता है अगर मैं ऑटो ऑप्शन। ठीक, मैं आप रिपीट करता हूँ, कंस्ट्रेंट तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। डिजाइनर का इसमें डिस्क्रिप्शन है, उसको कैंटिलीवर जैसा एक्ट कराना है ऊपर वाले ब्लॉक को, या उसको एक्स डायरेक्शन से रिस्टेंड करके रखना है, वो उसका कॉल है। ठीक है, तो चलिए मैं कैंटिलीवर छोड़ देता हूँ और क्रिटिकल चला जाता हूँ। ट्यूटोरियल में तो पूरा रिस्टेंड किया हुआ है, अगर मुझे कैंटिलीवर छोड़ना है तो कंस्ट्रेंट में जाऊंगा, go to the constraint option in the boundary, go to the auto option, go to the auto option, uncheck this consider all mesh set option, uncheck this consider all mesh set option। इसका मतलब क्या है, आपने जितने भी मैशेज बनाए हैं सॉफ्टवेयर उसको कंसिडर करके खुद ही बाउंड्री लगा, पर अब मैं सॉफ्टवेयर के उस रोल को नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मैश सेलेक्ट करूँ सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से बाउंड्री लगा। ओके, तो आई अनचेक दिस कंसिडर ऑल मैश सेट ऑप्शन एंड आई सेलेक्ट दीज टू मैश सेट, द ग्राउंड मैश सेट ओनली। कंसिडर ऑल मैच सेट ऑप्शन बता दें, अनचेक है। मैच ऑन कर, ठीक है। नेम इट एज ग्राउंड बाउंड्री, नेम इट एज ग्राउंड बाउंड्री, नेम इट एज ग्राउंड बाउंड्री एंड क्लिक ओके। तो इस तरीके से रिस्ट्रेंट लगा, आप बाउंड्री समझ गए। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर आप ग्राउंड ले रहे हैं और ग्राउंड ऊपर ही है, चलो केवल एक टनल में ऐसा होता है, जब टनल डीप होता है तो मैं इसी केस में मैंने आपको देखा है। ठीक है, अदरवाइज मैं ऊपर हूँ, ग्राउंड पे हूँ, इधर मैं मेरे को देख सॉफ्टवेयर, एक और चीज यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6 होती है, सॉलिड की डिग्री, सॉलिड एलिमेंट रोटेशन जो आएगा, तो अगर मैं करूँ या ना चाहे तो पिक्चर नहीं, अरे का हमारी ऑब्जेक्ट पिक्चर में आएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ इसको अप्लाई कर दीजिए, ग्राउंड बाउंड्री लिख दीजिए। अब हमारा ज्यादा काम नहीं बचा, देखिए अब मुझे इसका एक
कंसिस्टेंट स्टेज अगर करना हो तो कंसिस्टेंट स्टेज एनालिसिस करना, जो रॉक वाला करना है तो रॉक वाला। दूसरा चीज होता है, उसके बाद डायनेमिक में मेरे को ज़्यादा टाइम क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताऊँ। मुझे ज्योमेट्री नहीं बनानी, मुझे कोई भी मॉडल नहीं, मुझे केवल मैं खाली एनालिसिस करनी, ठीक है। तो मेरा उतना टाइम नहीं जाएगा। 2 एनालिसिस हमको करने पड़ेंगे, 3 एनालिसिस करने पड़ेंगे जब हम डायनेमिक करें। फर्स्ट इज आइगन वैल्यू एनालिसिस। आइगन वैल्यू एनालिसिस क्यों करना पड़ेगा, मुझे इसका फ्रीक्वेंसी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे कल कवर करूंगा। इन डायनेमिक एनालिसिस जब मैं फोर्स इक्वेशन की बात करूं तो फोर्स इक्वेशन का 3 f equals to mx double dot plus kx dot plus tx, oh sorry, tx dot plus kx. K is a stiffness metric, m is a mass metric, और p is a depth metric. Okay, तो सॉफ्टवेयर में डैम्पिंग मतलब एफईएम में डैम्पिंग इतनी इजीली कैलकुलेट, तो एक्सटर्नल डैम्पिंग देनी पड़ती है। तो एक्सटर्नल डैम्पिंग 2-3 मेथड होते हैं। मैक्सवेल डैम्पिंग आप एक टुकड़ा पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैक्सवेल डैम्पिंग के बारे में लिखा होगा, रेले डैम्पिंग के बारे में। द मोस्ट फेमस डैम्पिंग इज रेले डैम्पिंग। तो रेले डैम्पिंग मुझे देनी पड़ेगी, अदरवाइज सिस्टम ऑपरेट करता रहेगा, वो जैसे जैसे मतलब डैम्प नहीं होगा, डैम्पिंग देनी पड़ेगी। तो रेले डैम्पिंग देगा, तो रेले डैम्पिंग में मुझे आइगन वैल्यू एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो एक आइगन वैल्यू एनालिसिस करूंगा कल, एक रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करूंगा और एक डायनेमिक एनालिसिस। 3 एनालिसिस डायनेमिक में होगी और एक स्टैटिक। और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं, इनको करना है और रिजल्ट है तो सारे मॉडल बनाना, मॉडल ज्योमेट्री जनरेशन, ये सब करना है। डायरेक्टली इतना लोड लगाते जाना है, और वो लोड लगाना भी बहुत आसान होता है। आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, लगाना है डायरेक्ट, कुछ सिलेक्ट नहीं करना, रिस्पांस स्पेक्ट्रम लगाना है डायरेक्ट, वो अपने आप करता है मॉडल। फ्लूइड डायनेमिक्स में लगाना पड़ता है। फ्लूइड डायनेमिक्स को कौन करता है, डैम में फ्लूइड का करता है। एक तो 5 मिनट लगता है। फ्लूइड डायनेमिक्स फ्लूइड का करता है। फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, केवल प्रिलिमिनरी स्टडी एक काम बोल